फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की। जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से। रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on India, let's win this. फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कब होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की। जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से। रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद।
कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on India, let's win this. फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की। जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से। रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि में तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on India, let's win this. फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी
सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on इंडिया, let's win this। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी, हॉकी, जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की। जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on इंडिया, let's win this। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये
सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, कम ऑन इंडिया, लेट्स विन दिस। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। Good morning, hello, and a very warm welcome to everyone who is joining us for the live broadcast here on day number 5 of this 15th edition of the Hockey India Sub-Junior Men National Championship, live all the way from the Mayor Radhakrishnan Stadium here in the city of Chennai in Tamil Nadu. And before the match starts, it's the national anthem. And it imbibes so much of patriotic feeling, isn't it? Hearing the national anthem early morning, not even 6 o'clock, and it's early morning, probably jitters from both the teams, and two very good teams now competing today in this very first match here on day number 5. It's Hockey Bengal who are locking horns versus Chhattisgarh Hockey. Some very good stats now backing both these teams. On your picture is the team from Bengal here in the source of South. Hockey Bengal, they opened their account with a 2-0 win versus Hockey Arunachal. And then the last match they played, they won 4-2 versus Goans Hockey. So they're playing the third match today. And for Chhattisgarh Hockey, very fresh from a win yesterday, 4-0. Very good victory match. Exactly 6 o'clock by the watch on day number 5. And it's a pushback. So it happened from Hockey Bengal here.
So sit back, relax, and enjoy. And because we'll be having some eight fascinating contests coming your way. Behind the mic, I am Mayur Barua, and I'll be bringing all the action along with my colleague. And in Hindi, that will be Vikas Kumar, who will be joining in the second quarter. And then along the way, it will be Mr. Shami Malam and Mr. Arbaz Khan also. So that's the commentary panel for you for today. This team has really produced some scintillating hockey, some fascination. And what a day yesterday. Started off with two draws. Rajasthan led Puducherry, Uttarakhand and Bihar. Some very close wins. Resounding wins from Hockey Mizoram 15-0 versus Tripura. The only team which is really underneath, not being able to come to terms with 61 goals being conceded by Hockey Tripura. So they are really relegating and suffocating themselves at the bottom of the table. The moment some good gameplay happening from Hockey Bengal, Dutch Chhattisgarh Hockey giving a very good counter attack, getting the sticks, getting the ball little rebounded with the sticks almost into the striking circle. That's what the umpire has been showing onto the footies. I've been seeing so much of that foot replays yesterday, isn't it? And some leading up to the penalty corners also. Some very great conversions that we have seen yesterday. To expect nothing different. It has already started off with a very good fierce battle. This first match just produced goal in the very first few minutes. Chhattisgarh Hockey trying to steal the show here. Reverse and into the goal post. I did say a few seconds before, don't be surprised if it's the opening of the account from Chhattisgarh. All smiles at this very morning. Just 2 minutes into day number 5, where we have already started off with a goal from Chhattisgarh Hockey, making it 1 for them and none for Hockey Bengal. What a smooth clinical finish, reverse tomahawk, and there we go into the goal post, right at the corner of the goal post. It's piercing everyone. Wonderful to see the force behind that also. It will just waken you up, all the muscles of your body as the ball just gets swatted. So very good gameplay, very good start to this morning. On day number 5 of this 15th Hockey India Sub Junior Man National Championship 2025. So already they have now, this is the 11th goal that they have scored for themselves. Chhattisgarh Hockey. So very much pressure on Hockey Bengal now with this goal coming against the name. So they will be thrilled a bit for sure. Some goals which really speeds up the show. We would really love to just keep that momentum going into the 11th minute, with 11 minutes remaining. It's putting up the show just onto the center of the action. Chhattisgarh Hockey again moving along. The player losing his stick, but the way they have rotated and going along with their business, not allowing Hockey Bengal. I'm sure probably this is the first time that Hockey Bengal has been put under some kind of pressure. There's nothing to take away from their way they have played. This is Bengal also to win that one. They were behind, remember, and that was a very good comeback. Hockey Bengal had the slightest of the advantage, and the first penalty corner of the day, and Hockey Bengal might just be favoring this in their own advantage.
You can see immediately the claps coming in, and probably the much needed boost which they needed. We have seen some great penalty conversions, penalty corner conversions. There have been very few penalty strokes, and yesterday, I exactly don't remember which of the match, but on the match we went to the television umpire. It was a penalty corner, got converted into penalty stroke. But this is the penalty corner advantage for Hockey Bengal, trailing by 1 goal. Insertion, and is stepping up to use a long handle, but the penalty corner remains. Get it redone, boys. Uh, they still do see a chance here. Hockey Bengal. Insertion will be doing the drag. It was grooming up to be a very strong one into the pads of hockey of the goalkeeper, and gets rebounded to one of the player of Chhattisgarh. Immediately falls down lying flat. And it heads the Hockey Chhattisgarh's dugout. Just be feeling that okay. Immediately stands out, and it's not easy. Sometimes you get the stick ball also. It's good to see him standing up. Hockey Bengal now inside the striking circle again. Back-to-back penalty corners for Hockey Bengal. They'll be just be praying that can we get that. That's the dugout of Hockey Bengal early morning, and must be just be thinking, and can we get it this for the second time? The first time there were 2 chances, but now it has again come. Now within 30 seconds of the previous one, they are already shaping up the position, lying very low. That will give the trust. The insertion and the stop and the drag, and there we go, making it 1-1. This time they get it really up to the rim. Bengal has been able to equalize the score, and what a nice aerial there. No one patrolling the area. It was only that he had to get it beneath the goalkeeper and right between his legs, and across for the first goal right behind it. So this 6 minutes has produced some great hockey, isn't it? If not the field goals, what about the penalty corners? Wonderful. This is what Hockey Bengal needed, the push for themselves, and in the form of the penalty corners doing the trick for themselves. First the field goal for Chhattisgarh, now the penalty corner for Hockey Bengal. Great from the left flank, now flying. Good counter attack hockey. This is from Chhattisgarh. Putting really middle up. And it's a good gameplay coming into the center of the action now. Pressure on both of them. If Chhattisgarh and for the team which opened up the action. This stick really right on the bottom of the footing. Immediately just sketching on the area. It's not an easy area. Immediately one of them sits up. Will be drafted in probably to replace. He'll be probably asking on the substitutes, looking at the clock and looking at by his watch also, trying to inflict what is required from him.
probably he might just come as a substitute, never know, because he was the one handpicked by the coach warming the benches. So he must be saying that your honeymoon period it was for just a brief while. It's ready to get in action. Superb gameplay early morning, and never easy to trust your action and to be pulled up. Just small bit of halt of play because of the injury. The score remains at 1-1 with 8 minutes and 5 seconds to go in the first quarter. This action coming in from this wonderful AstroTurf venue here in Chennai on this Mayor Radhakrishnan Stadium. The sun is not out at the moment, but we did see as the sun kept on in most part of the time at this venue yesterday. It was a very good gameplay, but again, at this part of India, it becomes very hot and humid. But thankfully, it was not blazing. At one point, it was playing hide and seek. Again, by the time it was not pressing too hard for any questions with the natural factor. All the players will just be hoping that it remains the same, but shouldn't be any short of any battle, any intriguing battle of the sort of excitement and the drama that we saw yesterday. Hopefully, it remain intact. Hopefully, we see more results in draws, but all the three matches, especially the first two, Rajasthan, Puducherry, Uttarakhand, and Bihar, they reproduced some great billing till the very last second of some fascinating battle. And post the injury, the match just starts off with a blow of the whistle. 8 minutes at the clock. To just go and start off very quickly. It's a very nice aerial, nice cover control, well stopped by Chhattisgarh. Some magnificent fashion in the way they have started off with this goal under their kitty. Now they have 12 goals under them. Pass to the right, wonderful from the left, reverse, and whoa, bullet arms, and the result is also a bullet striding into the goalpost. The smiles will tell you the story. Probably it is the practice that is being articulated here. Look at that goalkeeper diving and still no chance from the left. One line, that's the line which belong to the player. Never easy. I don't know how many of the goalkeepers in different categories. This is the sub-junior, even in junior, or probably the men's category in the senior also. It might have been very difficult to stop the ball, especially when it becomes reverse, which especially with that kind of power being raised behind the stick, it becomes never really easy. So again, Hockey Bengal finding themselves a slight bit of on a back foot with one goal behind. But already in this 9.5 minutes of action, 3 goals in this first quarter with 3 quarters and 6 minutes remaining. This has really been magnificent to start off this day number 5 on this 15th Hockey India Sub-Junior Men's National Championship 2025. Some great guns. Chhattisgarh, one goal all ready, just let surge of energy via this reverse. That one was to thwart the goal. Little bit aerial, but again yesterday we saw one goal which was right in the center of the striking circle, right between the crossbar and between the goalie.
just lifted himself up, and right between them it went. And you need the slightest bit of that luck, you need the slightest bit of that burrow for the ball to get in. And sometimes you look at the circumference of the ball, the dimensions of the ball, make that ball go with your stick right into that zone to get a goal is talent. It's a serious talent, skill, and magnificent goal play. And to just give it a pass, Chhattisgarh hockey, only to find the wrong stick of the. As soon as you announce, the hooter comes in to signal the end of the first quarter, but it was not short of any action, as gulping of energy will come in immediately, helped by the coach of hockey Bengal. At the end of the first quarter is that Chhattisgarh hockey has been able to draft in 2 goals versus 1 goal for a Hindi commentator. And stick by. इस वक्त इस वक्त इस वक्त नीली जर्सी में है, ब्लू जर्सी में नीली जर्सी में है, ब्लू जर्सी में जो राइट सेलेक्ट अटैक कर रही है और वहीं पे देखें समय अब छत्तीसगढ़ के पास वो खेल होता हुआ जैसे नंबर 10 इस समय और शानदार तरीके से इस बीच लगातार अटैक बना रही थी छत्तीसगढ़ की टीम। छत्तीसगढ़ ने टॉप वेरिएशन शानदार तरीके से और कमाल का गोल, लाजवाब फिनिश किया, बहुत क्लिनिकल कमाल की गोल है छत्तीसगढ़ के लिए। आज आदर्श राज का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लाजवाब तरीके से ये टीम बंगाल के खिलाफ छत्तीसगढ़ अद्भुत खेल दिखाती हुई 3-1 की छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी के स्टिक से टकराकर राइट बाहर गई थी। एक बार फिर से बंगाल के पास मुकाबला स्ट्राइकिंग सर्कल के नजदीक पहुंचने की शुभम पात्रा टीम के कैप्टन पहले भी गोल कर चुके हैं। शुभम दास मेरे साथ मयूर बरुआ जी और पूरी प्रोडक्शन टीम शानदार कवरेज लगातार देखने को मिल रहा है और ओवरऑल अगर देखें मैच नंबर 24 ये 24वां मुकाबला है पूल ए का मैच और जहां हम चेन्नई से लाइव है आप तक के शानदार हॉकी इंडिया के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं ये कवरेज। फिलहाल जर्सी नंबर 2 बॉल के साथ यहाँ पे प्रयास किया है इस समय खूबसूरती के साथ। जर्सी नंबर 3 कमाल की यहाँ पे इंटरसेप्शन, तारीफ़ काबिल शायन मंडल बंगाल के लिए बॉल को अपने नियंत्रण में लिया था लेकिन वापस बॉल कंट्रोल किया इस समय खूबसूरती के साथ। जर्सी नंबर 3 कमाल की यहाँ पे इंटरसेप्शन, तारीफ़ काबिल शायन मंडल बंगाल के लिए बॉल को अपने नियंत्रण में लिया था लेकिन वापस बॉल कंट्रोल किया इस समय। पीयूष कुमार साहू टीम के कैप्टन ने इस बीच छत्तीसगढ़ अटैक पे आदर्श राज सिंह जर्सी नंबर 2 इन पे निगाहें में किएगा लगातार फॉरवर्ड लाइन में लेकिन बहुत वीक आकर के डिफेंस ने एंगल ब्लॉक किया और खतरे को टाला, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर दाखिल हुए थे। कमाल की हॉकी 3-1 की बढ़त और तीनों ही गोल आदर्श राज सिंह जर्सी नंबर 2 ने छत्तीसगढ़ के लिए किया है। ऐतिहासिक भूमिका अदा करते हुए अब इस दूसरे क्वार्टर में 7 मिनट के आसपास का खेल शेष। बहुत ही शानदार तरीके से इस समय हमारा पूरा कमेंट्री पैनल में विकास हमारे साथ है, मयूर जी, शमीम आलम जी और फिलहाल पीछे देखना होगा शानदार तरीके से पुश किया था जर्सी नंबर 17 लगातार इस समय मनीष भट्टी, ये भी तेज तरार खिलाड़ी है, निगाहें रखी है 17 नंबर की जर्सी पे और उनके साथ मौजूद है इस समय रेहान खान। फिलहाल देखना होगा राइट फ्लैंक से कोशिश यहाँ पे साथी खिलाड़ी को अपने नियंत्रण में लिया, बॉल खूबसूरती के साथ यहाँ पे रोमांच बढ़ता हुआ। इस बार एरियल बॉल कोशिश यहाँ पे बंगाल के खिलाड़ी ने, एरियल बॉल में कई बार बॉल पोजीशन गंवाने की भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बॉल पोजीशन गंवाया। देखना होगा इस बीच
3-1 की बढ़त। शानदार ये मुकाबला इस समय नजर डाले। बेहतरीन तरीके से यह मैच अभी तक घटित होता हुआ दोनों टीमों के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रहेगा यह मुकाबला, क्योंकि ये मैच दोनों टीमें जीतेगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इस मैच के रिजल्ट से नजर आने वाला है। गोवा छत्तीसगढ़ बात करें इस पुल में, अगर देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पुल है यकीनन तौर पे, और बेहतरीन तरीके ये है बेंच इस समय जहाँ पे मौजूद हैं बंगाल की टीम, उनका डगआउट, उनके कोच और मैनेजर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे आने वाले लम्हे तय करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से देखना होगा रणनीति किस तरीके से, एक बार फिर से आगे बढ़ने का प्रयास, स्ट्राइकिंग सर्कल के नजदीक जाने की कोशिश बंगाल, लगातार अच्छा लिंकअप प्ले, बेहतरीन कॉम्बिनेशन, ओवरलोड डिफेंस का इस समय और क्विक इस समय काउंटर अटैक पे, ये ताकत है छत्तीसगढ़ की। बहुत शानदार तरीके से इस समय काउंटर अटैक बनाती है टीम और राइट फ्लैंक से जाने की कोशिश। ये मुकाबला इस समय इस पर लगातार आप तक की ये एक्शन पहुंच रहा है इस मैच का। 3-1 की बढ़त छत्तीसगढ़ हॉकी के पास, और जबरदस्त तरीके से खेल दिखाती हुई दोनों ही टीमें। छत्तीसगढ़ जरूर इस समय लीड में है। आपको बताते चले पूल ए में गुजरात टॉप पे है, 3 में से 3 मुकाबले जीत करके 9 पॉइंट्स के साथ। दूसरे पारी पे है छत्तीसगढ़, 3 में से 2 जीत और 1 हार, इनके नाम 6 पॉइंट्स। हॉकी बंगाल है तीसरे पे, 2 में से 2 मुकाबले जीती है। यह मुकाबला इनके लिए बहुत अहम रहेगा। गोवा और अरुणाचल दोनों ही टीमें चौथे और 5वें पे हैं। फिलहाल देखना होगा इस बीच रणनीति क्या रहती है। दूसरे क्वार्टर का खेल जारी इस बीच, कमाल का ये मुकाबला, दिलचस्प इस समय रोमांच के बीच। आपको बताते चले एक तरफ रेहान खान इस टीम के लिए अहम भूमिका, आदर्श राज सिंह ने 3 गोल किए हैं तीसरे, 8वें और 20वें मिनट में। कमाल की अगर बात करें खिलाड़ी हैं इस समय छत्तीसगढ़ के लिए। बंगाल अब धीरे धीरे अपने बेसिक्स पे काम कर रही है। अच्छे बॉल नियंत्रण की थी, बॉल कंट्रोल बहुत ज़रूरी, शॉर्ट पासेस के साथ देखिए बॉल कंट्रोल किया खूबसूरती से, एक लंबा हिट लिया डिफ्लेक्शन की उम्मीद में। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर खिलाड़ी है बंगाल का, लेकिन खतरे को टालते हुए दोनों ही अंपायर और हॉकी के तमाम ऑफिशियल्स की भी तारीफ करनी होगी जिस तरीके से इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं। शानदार तरीके से ये मुकाबला। अंपायर इस मैच के श्री विष्णु एम, साथ ही साथ उमेश भिने हैं दूसरे अंपायर। रिजर्व अंपायर है ठाकुर विकास कुमार, वीडियो अंपायर की भूमिका में राहुल वर्मन, स्कोरिंग जज की भूमिका में दिनेश मैलेकर, परशी हैं टाइमिंग जज, और कविलन एम टेक्निकल ऑफिशियल। ये हैं बात करें इस समय हॉकी इंडिया के सभी ऑफिशियल्स, हरजिंदर सिंह जो कि टेक्निकल डेलीगेट इस मैच के, और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मैं विकास, अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ, पूरी हमारी ऑडियंस का हम बहुत है दिल से हॉकी के चाहने वालों का अभिनंदन। एक बार फिर से देखना होगा बंगाल की टीम अटैक पे, कोशिश उनके द्वारा की जाती हुई लगातार। यहाँ पे 3-1 की बढ़त, तीनों गोल आदर्श ने किए हैं, और आदर्श क्या आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपनी टीम के लिए नाम के अनुरूप। फिलहाल इस समय स्ट्राइकिंग सर्कल पे बॉल मौका बना सकती है यहाँ पे बंगाल की टीम, वापसी की किरदार अदा कर सकती है। बहुत अहम हो सकता है यह मुकाबला इस समय दूसरे क्वार्टर में। अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ, बंगाल अटैक पे एक शॉट लिया, लेकिन देखना होगा क्या पेनल्टी कॉर्नर दी जाएगी, क्या फुट में बॉल टकराई है। संभावनाएं बढ़ सकती है यहाँ पे। बंगाल की कप्तान शिवम पात्रा, जी हाँ इसकी स्थिति, जी हाँ अब चले गए हैं इस वक्त वीडियो रेफरल के लिए।
जी हाँ, इस समय वेलकम बैक टू सीजन का हम इंतजार कर रहे थे और सीजन इस समय आने की उम्मीद है। और यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर बंगाल के लिए मिल गया है। जो ये नीले जर्सी में बंगाल, नीले और सफ़ेद कलर की जर्सी में टीम है। शानदार तरीके से अब पेनल्टी कॉर्नर की तैयारी की जा रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ के लिए। डिफेंस लाइन में यहाँ पे से गोल पोस्ट की रक्षा करने के लिए, और देखा होगा रणनीति क्या रहती है यहाँ पे। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये मुकाबला, दिलचस्प रोमांच के बीच ये मैच। और लीजिए अब बंगाल के पास मौका है वापसी करने का, पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए। इस समय बंगाल की टीम ने इंजेक्ट किया, स्टॉप मिस हुआ इस समय और खतरा चलता हुआ कुछ पलों के लिए। ये सुनहरा मौका जैसे नंबर 8 अभिषेक शॉ, क्योंकि ये गोल कर चुके हैं अभिषेक शॉ, लेकिन ऐसे क्रुशियल मौके पे मौका दोनों ने तब्दील नहीं कर पाए गोल के रूप में। और बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला 3-1 की बढ़त इस समय छत्तीसगढ़ के पास। छत्तीसगढ़ टीम इस मुकाबले में पूरी ताकत लगा रही है, स्ट्रेंथ, और जिस अंदाज में कप्तान पीयूष कुमार साहू होल्ड करते मिडफील्ड से रेहान शेख हैं, प्रीतम खजूर हैं, और इस टीम के लिए जो सबसे अहम भूमिका आदर्श राज सिंह, टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी। और देख सकते हैं क्विक यहाँ पे बंगाल की टीम अच्छी भूमिका अदा कर रही है इस समय। सरदार डीप मौजूद है इस समय 23 मीटर कड़े का स्ट्राइकिंग सर्कल में गए, सुनहरा मौका, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बंगाल लगातार प्रेशर बनाई हुई है, दोनों फ्लैंक का यूज करके शानदार तरीके से यहाँ पे बहुत बढ़िया कार्य डिफेंस पे लगातार इस समय दबाव बंगाल की टीम बढ़िया तरीके से स्कील नजर आता है। मिडफील्ड से अच्छी बॉल सप्लाई फॉरवर्ड लाइन तक। और बंगाल के लिए इस भूमिका में जो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, सरदार डीप चाहे मुन्ना कुमार सिंह हो, जितेंद्र रचक हो, अभिषेक शॉ एक अहम खिलाड़ी, और सबसे बेहतरीन तरीके से फिलहाल यहाँ पे एक और मौका मिल सकता है यकीनन तौर पे। क्या पेनल्टी कॉर्नर कंफर्म होगा? वीडियो रेफरल के लिए गए हैं, बहुत अहम रहेगा इस समय। जुड़े रहिए, मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग इस बीच नजर आ रहा है, दोनों टीमों के बीच कमाल की हॉकी नजर आती हुई। खेल कुछ पलों के लिए रुका हुआ। जो इस समय डिसीजन बदला गया है यहाँ पे, और जो एक सुनहरा मौका हो सकता था बंगाल के लिए, वो कुछ पलों के लिए खतरा चलता हुआ इस बीच। बहुत ही शानदार हॉकी की झलक लगातार यहाँ पे देखने को मिल रही है। बेहतरीन रोमांच के बीच राइट फ्लैंक से यहाँ पे कोशिश एक बार फिर से। इस वक्त छत्तीसगढ़ की टीम अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा अर्जित करना चाहेगी। पिछले 5-7 मिनट में बंगाल की टीम का डोमिनेशन नजर आया है, दोनों फ्लैंक का अच्छा यूज करके बेहतरीन तरीके से जहाँ पे ये कमाल की कोशिश है और अच्छे अटैक्स बिल्ड किए हैं और गोल की गुंजाइश और चांसेस बढ़ाया। एक पेनल्टी कॉर्नर पे मिला इस समय। दूसरा क्वार्टर अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ अग्रसर होता हुआ, सेकेंड क्वार्टर अब समाप्ति की तरफ। बहुत ही शानदार से लगातार, जी हाँ, ऊंचे की आवाज इस बात के संकेत इस समय दूसरे क्वार्टर की समाप्ति हुई है। सब क्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत अहम रहने वाला है मुकाबला। कॉन्ट्री बॉक्स में विकास कुमार मेरे साथ हैं, मयूर बरुआ जी, मयूर जी जुड़ेंगे इंग्लिश कमेंट्री के साथ आपके साथ जब जैसे ही तीसरे क्वार्टर की शुरुआत होगी। बने रहिए हमारे साथ, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ।
Welcome back, everyone, for the next half time of this first match of this day in number 5. What a gorgeous setting! Look at the sun coming right from behind and creating the shadows on the ground. It's almost looking like a painting, isn't it? But we're getting the live pictures from this Mayor Radhakrishnan Stadium here from this wonderful capital city of Chennai here in the state of Tamil Nadu on the way here in southern part of India. And it is the Chhattisgarh hockey which is locking horns, trying to get how we can now rip it all across. Because now they are 2 goals behind Chhattisgarh. They are 2 goals behind Chhattisgarh and of hockey that they have played. Again, that's what will happen as more and more matches will come up. We will play versus more stronger opposition. You will be tested, and that will only bring out the best of the gameplay for you. It only helps your own cause. Sometimes leagues and the relegation also plays a part. That will only help Hockey Bengal. This time trying to get some attack going. We've already seen penalty corners being converted. And Hockey Bengal, the second penalty corner that they got for the day, they were able to convert. That was the only single goal they were able to score. And it was also towards the left of your picture. Now they are defending in that region. Going very well across. Now just getting a very good some passes which are very important. It will not be an easy one to face off. Chhattisgarh just losing one and playing their 4th match of this championship. Now they have 16 goals, which they have taken just 2 goals which have been scored against their name, including this. So they are much more very strong in their approach. One to look out as you go towards the knockouts of this championship. We'll be finishing this championship on the 8th of August. And also today, the Women's National Championship have started at Kakinada in Andhra Pradesh. This is going inside the striking circle. It could be one of the easiest of his career. And he has drafted his name, saying these are the ones that we keep doing every day. Night and day. Goalkeeper. Nowhere. Hit it everywhere. Get all the time. Probably just run through it. And from the corner, from the right, Hockey Bengal gets it. So now they're just a goal away from equalizing Chhattisgarh. The score 3 for Chhattisgarh, 2 for Hockey Bengal. On the players from Bengal, just got a little bit of the injury, courtesy the stick. Some portion of his leg. Most of the times it's all about the legs. And he says, I'm okay. Thank you so much for the support, for making me stand up on my feet. Immediately raises his hands, acknowledging the fact that he's fine and raring to go. It's a good sign for any player. Less than 10 minutes remaining here in this 3rd quarter. That lovely goal to keep the pace of this hockey going on. Now having the complete billing of a very good encounter. Yesterday it was Hockey Uttarakhand and the Hockey Association of Bihar
which was able to be a very fierce competition. And in the end, the scoreline 3-3 was very indication that neither team deserved to win or lose. If there had been a penalty shootout, it would have been so interesting that which team would have gone on to win the match. Oh no! Oh no! This was hurtful. This was done in a very, very bad fashion, and immediately the umpire raises the yellow card. So the first booking at the very first match itself. So not a good sign at all. Not a good sign. It seemed because of the sunlight. I think that is the green card which is probably has come up to go warm up the benches. So now Chhattisgarh hockey is playing with just 10 players, including 9 on the field, with one more in the benches. From the sideline, that is one infringement that you cannot do. Says the umpire sees the felt it was very deliberate, so immediately raised up the card. It's a very wrong pass from Chhattisgarh, which allowed Hockey Bengal to come in terms and in command of the ball. Well received and good counter-attack from Chhattisgarh. Now moving ahead, the defenders circling right behind. Chhattisgarh moving across inside the striking line. But couldn't do much about the ball. Probably got rebounded from the base of the goal post. I don't feel there was a goalkeeper anywhere standing near. It's in 8 minutes. Passes going on. Just striving through. And that's what the monsoons will do. It's been gloomy here in North India. There in south, it's complete sunshine. Good to see it coming up. It's a well scoop. It has a chance. Chhattisgarh, as he was trying to lift his stick, the ball already gained an extra momentum, which was an advantage of Hockey Bengal. So much inside the striking circle, right from the center line. Now for Chhattisgarh hockey, I think it was a good thinking from the player not to provide a long pass, and then in the diagonal, oh, this was a good receive inside the striking circle, but again the pace of the ball allowed to go to out of bounds. Less than 7 minutes to go by. We're mapping up to be such a wonderful battle here. Chhattisgarh moving along. No. Very dramatic again, as both the pairs will come very, very close. And more of the ball position now on Chhattisgarh hockey. Not because they have got 3 goals, but that is very early signs that that you generally get from a team which is right on top of the other. But they have to very hardly just garden their steps, and especially the goalkeeper, because it's just 1 goal behind is Hockey Bengal. Right to the picture, that's where they're going to attack, and so they don't want that attack. They don't change the name. Chhattisgarh hockey inside the striking circle. The ball just goes up, apply for a foul play somewhere. The umpire is not interested. Raises along, so much into the center line there, trying to mitigate. And with the sticks coming in the wrong direction,
whistles also come through, but you can already feel it is getting a little intensified as, as both of them now know with the time quickly going by in the third quarter. So just quickly get it restored onto the stick. Half of the center line, they're going very much ahead, but not the area where Chhattisgarh hockey will be scoring. And Mayu Parva will be assisting with Vikas, and very slowly will be having the voice of our own magnificent commentator, Mr. Shami Malam. This will be followed by Mr. Harwas Khan very soon. At the moment, this is what we have for you. I hope you have loved not only the on-field hockey, but also the camera production, the quality, the hard work, which has already made this a very brilliant gameplay to see. And so a huge shout out to everyone getting involved. We'll also like to thank the Sports Ministry, the Youth Affairs and Sports for their great support, and the Sports Authority of India, and also other stakeholders for the smooth support. And penalty corner, I believe, as I was talking about some smooth support, what about the smooth signal for the penalty corner? I think that's inside the striking circle. That's where the infringement has happened. A call from Bengal. It was well acknowledged by the umpire. And this will be a huge moment in the game. I am sure what will be drafted into the minds. How do you do the insertion? He was the one who inserted previously, remember? And then it's very important what will happen here. Hockey Bengal needs it. Insertion. And the drag. But right in to the footing of the goalkeeper. The helmets will go off. Chhattisgarh hockey gets a reprieve. Well received and a fierceful drag. Couldn't do much in there for Chhattisgarh. And that was the captain himself, Shubham Patra, who made the drag. It was well received. And some names which really is the one who also has 3 goals to his name, Shubham Patra. And the keeper is Aditya Shaw. In some crucial encounters, it's so important that your goalkeeper is so much attuned to the conditions, to the gameplay, what is going on. And it will only keep you in a very good stead, I believe, because it's all about the goals and it's all about bringing your statistics to the minimum as a goalkeeper as much as possible. And of course, for the save, it will give you huge brownie points. But focus back on the man which matters the most, apart from the goalkeeper, the one who will have to just make the ball. They'll have the pressure double for their opposition, Hockey Bengal. The insertion has been done along the surface. The drag, it's still there. The ball is still surviving right on the right corner. How close this was from getting into the jaws of the goal post. As the time now trickles by, less than half of a minute now remaining here. But none of them yet opening their account. This was heavily close. And there we go. The hooter comes in
to make the players relax, revive. तेज तरार खिलाड़ी उनके साथ मौजूद है प्रीतम कुजूर। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन, बैक पास किया खूबसूरती से। जर्सी नंबर 9 बॉल के साथ हैं कप्तान इस समय पीयूष कुमार साहू। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक ये मुकाबला पीयूष से शांत, संदीप और दिवेश जैसे खिलाड़ी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ हॉकी 3-2 की बढ़त पे ज़्यादा बड़ी लीड नहीं है। बंगाल की टीम ने भी बहुत अच्छा खेल दिखाया। बंगाल इस बीच वापसी करने की कोशिश, राइट फ्लैंक से आगे बढ़ रहे हैं खूबसूरती के साथ। बंगाल के लिए मौका इस समय, जर्सी नंबर 12 हितेन रजक स्ट्राइकिंग सर्कल में बॉल लेकर गए राइट फ्लैंक से। प्रयास उनका बहुत बढ़िया था हितेन रजक का। कोशिश जिस तरीके से उन्होंने की इस मैच के बात करें, इनिशियल मिनट से छत्तीसगढ़ ने ज़्यादा डोमिनेंस किया, लेकिन बंगाल ने जहाँ भी उनको स्पेस और मौके मिलते हैं ये टीम पूरी कोशिश करती है उसे मौके को भुनाने का, गोल के रूप में कन्वर्ट करने का, और 2 गोल इस बात के प्रमाण भी है। फिलहाल एक बार फिर से निगाहें रखिएगा, शानदार ये मुकाबला इस समय 4th क्वार्टर और सबसे इंटरेस्टिंग क्वार्टर इस समय इस मैच के नज़रिए से। तो मुकाबला बी डिवीज़न का मैच 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप। एक बार फिर से स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए, बहुत सुनहरा मौका, टॉमाहॉक रोस्टिक से क्या शानदार तरीके से क्वीक जाकर के मौका बनाया था। बेहतरीन तरीके से देखने लायक ये प्रयास इस बीच नजर डालेंगे वापस ज़रूर। इससे पहले ये देखते हैं गोल नज़दीक पहुंचने की कोशिश, स्ट्राइकिंग सर्कल के नज़दीक यहाँ पे बिल्कुल। इसके बात करें बॉक्स के मुहाने पे, एज पे छत्तीसगढ़ के लिए कोशिश इस समय दाखिल होने की, बहुत बढ़िया प्रयास इस समय स्ट्राइकिंग सर्कल में, मौका टॉमाहॉक लगा करके शानदार गोल, स्पेस दिया था इस खिलाड़ी को। और ये कहाँ चूकने वाले हैं, नाम है आदर्श प्रताप सिंह। ये खिलाड़ी जर्सी नंबर 2 अद्भुत खिलाड़ी है। देखिए यहाँ पे मौका मिला उन्हें और क्या लाजवाब गोल किया। इस एंगल से आसान नहीं होता, लेकिन बेहतरीन गोल यहाँ पे काबिल तारीफ, शानदार तरीके से गोल करके इस मुकाबले में नजर डाले। 4-2 की बढ़त अब दिला दी है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ की टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में गजब की कमबैक करती हुई नजर आ रही है और अब लीड को और बड़ी करती हुई। अगर बात करें बंगाल की तरफ से हितेन रजक और गोल जो आया था अभिषेक शॉ के स्ट्रीक से, तो वहीं यहाँ पे आदर्श जो लगातार 3 गोल कर चुके हैं, और अमन वर्मा एक और बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने पिछले गोल के रूप में तब्दील किया था। मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग, 4-2 की बढ़त इस समय छत्तीसगढ़ के पास। छत्तीसगढ़ ने सबको चौंका दिया है। अमूमन छत्तीसगढ़ हॉकी में इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन बंगाल जैसी टीम के खिलाफ अद्भुत प्रदर्शन। एक बार फिर से स्ट्राइकिंग सर्कल के नजदीक कोशिश है इस समय बंगाल काउंटर अटैक पे, बहुत महत्वपूर्ण इस समय जिस तरीके से दोनों टीमें खेल रही है। और देखना होगा इस पीछे बॉल कंट्रोल, बंगाल के खिलाड़ी इस समय समानांतर पास किया, इस समय बैक पास के साथ रीबिल्ड करने का प्रयास, अटैक को अच्छी सोच, स्पेस ढूंढने की। जैसे नंबर 6 रिजू बार मौजूद है इस समय, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने की कोशिश बंगाल के लिए। जैसे नंबर 6 रिजू मौजूद, बहुत अहम भूमिका अदा करनी होगी क्योंकि बचे हुए 10 मिनट 8 सेकेंड्स में 2 गोल। और ये है बंगाल का खेमा इस बीच, कोच और ये डगआउट उनका, बेंच यहाँ पे थोड़ी सी निराश, लेकिन अभी बहुत वक्त है, मैच में वापसी हो सकती है। हॉकी जैसे मुकाबले में जहाँ पे 4-2 की बढ़त, यकीनन तौर पे 2 गोल की लीड है, अभी भी 9 मिनट से ज़्यादा का खेल, तो कमबैक हो सकता है इस मैच में। देखना होगा बंगाल की टीम इसी आशा में लगातार अपने अटैक बिल्ड कर रही है। जैसे नंबर 5 बॉल के साथ श्यान मंडल ने साथी खिलाड़ी को दिया, इस बीच सुजल तूरी, बहुत ही शानदार खिलाड़ी स्ट्राइकिंग सर्कल में। देखना होगा इससे पहले ही नियंत्रण किया बॉल पे, मैच के अंपायर का निर्णय जिस तरीके से आता हुआ बॉल पोजीशन जो रहेगी अब छत्तीसगढ़ के पास। एक एरियल बॉल राइट फ्लैंक से कोशिश करेगी छत्तीसगढ़, लगातार अटैक बनाती है, 3 खिलाड़ी घेरे हुए, बहुत अच्छी सोच बंगाल की।
लेकिन ये बहुत क्रुशियल मिनट्स हैं, ज़्यादा समय शेष नहीं है। देश कुमार साहू टीम के कैप्टन छत्तीसगढ़ के लिए राइट फ्लैग से आगे बढ़ने का प्रयास, मिडफील्ड में 23 मीटर की रेखा पुश किया खूबसूरती से, क्या शानदार प्रयास यहाँ पे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, बेहतरीन एक और टॉमाहॉक लगाने की कोशिश कप्तान की, रिवर्स स्टिक से फ्लिक किया था जरूर यहाँ पे, बहुत ही शानदार स्किल का प्रदर्शन करते हुए। और फिलहाल 4-2 की बढ़त छत्तीसगढ़ के पास, 4-2 की जबरदस्त बढ़त यहाँ पे देखना होगा। इस बीच रणनीति क्या रहती है। 3 गोल आदर्श ने किए हैं, अमन के नाम 1 गोल है, वहीं पे अभिषेक शॉ और साथी खिलाड़ी के गोल की बदौलत बंगाल भी इस मैच में पूरी तरीके से, अगर बात करें, चुनौती अच्छी पेश करे। बी डिवीजन का मुकाबला 28 जुलाई की इसकी आगाज हुई थी, 8 अगस्त तक ये कारवां खेल का चलता रहेगा। जबरदस्त हॉकी की झलक यकीनन तौर पे नजर आने वाली है। चौथे क्वार्टर में 8 मिनट 6 सेकंड्स के आसपास का खेल शेष। देखना होगा मिडफील्ड में खेल होता हुआ एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की टीम, पास किया खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को इस समय मौजूद है वहां पे आदर्श राज सिंह, सबसे खतरनाक खिलाड़ी, जर्सी नंबर 2, निगाहें रखिएगा स्ट्राइकिंग सर्कल में, एक और टॉमाहॉक मौजूद है इस समय। मनीष वट्टी, बेहतरीन खिलाड़ी है मनीष, कोशिश उनके द्वारा की गई जरूर यहाँ पे। फिलहाल 4-2 की लीड अभी भी इस मुकाबले में, कमाल के रोमांच के बीच ये मुकाबला इस समय, दिलचस्प हॉकी की झलक कितना होगा इस बीच, रणनीति क्या रहती है। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने की कोशिश, बंगाल की टीम अटैक पे है, डिफेंस बहुत बढ़िया, सॉलिड डिफेंस, फ्लो टैकल, स्टिक को सीधे अगर बात करें, काम को कंपोज होकर के, लेकिन यहाँ काउंटर अटैक पे अगेन ये रणनीति बहुत अहम है। फिलहाल देखना होगा इस बीच, शानदार ये मुकाबला, कमाल की इस समय झलक, इस समय खेल की। 4-2 की लीड इस मैच में छत्तीसगढ़ की ताकत को, स्ट्रेंथ को दर्शा रही है, उनके गेम प्लान, उनके स्ट्रैटेजी, उनके लिंकअप प्ले, उनके बेहतरीन, जब बात करें तालमेल, समन्वय, अद्भुत क्षमता। बंगाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है, बंगाल ने भी बहुत अच्छी खेल दिखाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ नजर आती हुई। मैदान कह रहे समय मिडफील्ड हो, फॉरवर्ड लाइन हो, डिफेंस हो, देखना होगा इस बीच रणनीति क्या रहती है मुकाबले में। अब 6 मिनट 29 सेकंड के आसपास का खेल शेष, ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। इस बीच कोशिश यहाँ पे, प्रयास बहुत बेहतर होता हुआ इस समय, 4-2 की बढ़त इस बात की गवाही पेश करते हुए, शानदार ये मुकाबला इस बीच देखना होगा। अभी आने वाले मुकाबले भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। आज का जो शेड्यूल है, यकीनन तौर पे ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में, जहां पे आपको मणिपुर और हिमाचल प्रदेश अगले मैच में एक्शन में होगी टीम, देखना होगा। इसके बाद भी एक और महत्वपूर्ण मुकाबला, यूपी वर्सेस कमाल की, आने वाले मुकाबले भी इम्पोर्टेंट है। इस समय देख सकते हैं 5 मिनट 38 सेकेंड्स के आसपास का खेल शेष। बंगाल के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं क्या फ्रेश लीग के साथ तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे बचे हुए मिनट्स में, ये भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा करता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की टीम इस समय काउंटर अटैक पे, आदर्श ने ये शॉट लिया खूबसूरती से, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने की कोशिश। 4-2 की लीड इस मैच की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ की टीम लीड में है और जबरदस्त प्रदर्शन इस समय जहाँ पे देखने को मिलता हुआ। वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ, मिडफील्ड में लगातार संघर्ष, छत्तीसगढ़ की टीम इस समय एक बार फिर से अटैक पे, पुश किया, थ्रू पास, लेकिन बीच में इंटरसेप्शन, लाजवाब यहाँ पे शानदार तरीके से एक और प्रयास। इस समय छत्तीसगढ़ लगातार अटैक पे हैं, ज्ञान सारथी हो, चाहे बात करें इस टीम के लिए कप्तान पेश कुमार, आदर्श राज हो, अनिकेत हो, या फिर जिस तरीके से लगातार अच्छा खेल दिखाते हैं इस टीम के सबसे अहम खिलाड़ी आदर्श राज सिंह, अनिकेत खुजूर, निगाहें इनके ऊपर, अमन प्रीतम, और फिलहाल देखना होगा बंगाल की टीम भी कम नहीं है। कप्तान अगर देखें इस समय शुभम पात्रा,
वक्त निकल रहा, प्रेशर बंगाल पे ज़रूर है, यहाँ पे देखना होगा। और इस बचे हुए समय में किस तरीके से बंगाल की टीम अब वापसी कर पाएगी। अटैक पे ज़रूर है, छत्तीसगढ़ के हाफ में खेल होता हुआ राइट फ्लैंक पे देखना होगा इस समय। और क्या यहाँ पे मौका, पेनल्टी कॉर्नर का इशारा है अंपायर का। पीसी यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हुई है, गलती हुई है वहाँ पे टैकल करने के प्रयास में छत्तीसगढ़ के डिफेंस से। बंगाल के पास मौका बचे हुए लम्हों में पेनल्टी कॉर्नर का गोल के रूप में कन्वर्ट करके इस मैच में वापसी करने का। और ये टीम जानी जाती है, वापसी हो सकती है यहाँ पे। बहुत अच्छी टीम है बंगाल भी, रणनीति बनाई जा रही। जर्सी नंबर 8 नज़र आ रहे हैं अभिषेक शॉ जो गोल कर चुके हैं। इंजेक्शन के लिए आई थिंक नज़र आ रहे हैं शिवम रविदास। और बहुत अहम रहेगा रिजू बार और तमाम खिलाड़ी। जर्सी नंबर 7 वहाँ पे विकास बिंद फिलहाल इंजेक्शन के लिए जाते हुए समय इंजेक्ट किया, स्टॉप ड्रैग, अच्छा सेव यहाँ पे गोलकीपर स्ट्रेच किया गोलकीपर ने। शौर्य वर्मा बतौर गोलकीपर की भूमिका में है, आसानी के साथ अपने लेफ्ट फुट को बहुत अच्छा एंटिसिपेट करके और खतरे को चाला इस बीच। अब 3 मिनट 51 सेकंड के आसपास का खेल शेष है। अगेन बंगाल ट्रैक पे देखना होगा इसे। महत्वपूर्ण बॉल को आगे लेकर बढ़ रहे हैं इस बीच विकास बिंद। स्ट्राइकिंग सर्कल पे बहुत अच्छी डिफेंस यहाँ पे। रेहान खान खतरे को चाला, रेहान ने शानदार तरीके से फर्स्ट टच में क्लियर किया इस बीच। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला नजर आता हुआ और शानदार हॉकी की झलक यकीनन तौर पर देखने को मिल रही है। आदर्श हो, गुलशन हो, मनीष हो, जो लगातार छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी भूमिका अदा करते हैं। अपना प्रदर्शन उच्च स्तरीय इस टीम के नज़रिए से और बहुत ही शानदार हॉकी की झलक यकीनन तौर पे नजर आ रही है। निगाह रखिएगा, कमाल की हॉकी यकीनन तौर पे। रोमांच लगातार बढ़ता हुआ इस मुकाबले में। फिलहाल 4-2 की बढ़त, तीसरे क्वार्टर का खेल इस समय जारी है। महत्वपूर्ण यह मुकाबला, धीरे धीरे रोमांच लगातार बढ़ रहा है इस मैच का। कोशिश कर रही दोनों टीमें अपनी श्रेष्ठता दिखाने की। छत्तीसगढ़ जो लीड में है 4-2 से, टाइम को किल कर सकते हैं, थोड़ा गेम के पेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, शॉर्ट पासेस पे रिलाई कर सकते हैं। जर्सी नंबर 5 बॉल के साथ इस समय अविनाश इस टीम के खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी को इस समय स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए जाने की कोशिश। और एक और पेनल्टी कॉर्नर, क्या कहने, गलती करा रहे हैं लगातार डिफेंस लाइन से। ये अटैक्स बिल्ट हो रहे हैं मुश्किलें बढ़ाते हुए और बहुत अच्छी सोच है। एक और पेनल्टी, और अगर यहाँ से पेनल्टी को गोल के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो मुकाबला बंगाल से लगभग हाथों से निकल रहा है। बंगाल के खेमे की मायूसी देख सकते हैं डग आउट में, काफी निराशा चेहरे पे, काफी गंभीर इस बात के संकेत की टीम दबाव में और मैच के हालात भी ऐसे हैं। छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट और लाजवाब प्रदर्शन किया अभी तक, काफी सराहनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय प्रदर्शन इस टीम का। फिलहाल देखना होगा इस पीछे। फिलहाल यहाँ पे तैयारी हो रही है खिलाड़ी पहले। इस समय गोलकीपर के अलावा 4 डिफेंडर होते हैं फर्स्ट प्रेशर के साथ। गोलकीपर पर निगाह है, गोलकीपर की भूमिका में है लक्ष्य। इस बार इंजेक्शन लिए और गोल के रूप में तैयार किया है। शानदार गोल यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की टीम अब मुकाबले में पूरी तरीके से श्रेष्ठता पे नजर आई है। आइए नजर डालते हैं रिप्ले में। जैसे नंबर 9 का हल्का सा वेरिएशन और फिर कमाल का क्लिनिकल फिनिश। क्या बढ़िया तालमेल, कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन के साथ हल्की सी वेरिएशन नजर आई, विविधता से गोल किया है। 5-2 पूरी तरीके से मैच में अपनी कंट्रोल, अपनी पकड़, अपनी शिकंजा मजबूत कर ली है इस वक्त टीम छत्तीसगढ़ ने। कमाल का माहौल इस समय खेल के लिए, दिलचस्पी मुकाबला इस समय नजर आता हुआ। अब वक्त धीरे धीरे निकल रहा है बंगाल के लिए। मुश्किलों का अब डगर आसान होगा नहीं बंगाल के लिए यकीनन तौर पे, लेकिन मैच अब ज़्यादा शेष नहीं है समय चौथे क्वार्टर का। बंगाल की टीम कोशिश ज़रूर यहाँ पे। शिवांश बॉल के साथ मिडफील्ड में खेल, वापस इस समय बॉल कंट्रोल किया खूबसूरती के साथ इस समय।
बेहतरीन अंदाज में ये मुकाबला परिघटित हो रहा, निरंतरता नजर आ रही है आदर्श प्रताप सिंह जैसे खिलाड़ी की। और अब 1 मिनट 13 सेकंड्स के आसपास का खेल से शिवे बंगाल थोड़ी अर्जेंसी दिखा रही, जानते हैं समय कम है। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए, बॉल को क्लियर करने का प्रयास किया इस बीच। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला इस समय नजर आ रहा, वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ इस समय। जर्सी नंबर 7 तेज तलवार खिलाड़ी प्रीतम खुजूर साथी खिलाड़ी को पास किया इस बीच। बंगाल की टीम में से अब मुकाबला दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे दूर उनके हाथों हिस्से से, लेकिन देखना होगा काफी संघर्ष की है इस टीम ने और बहुत बढ़िया हॉकी दिखाया यकीनन तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिलहाल जर्सी नंबर 5 बॉल के साथ इस समय आगे बढ़ने का प्रयास है अंकित खुजूर से साथी खिलाड़ी स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए, मौका यहाँ पे जरूर हो सकता है। और एक और पेनल्टी कॉर्नर, कमाल का एक और पीसी, लगातार पेनल्टी कॉर्नर्स की बात यहाँ पे हो रही है और छत्तीसगढ़ की टीम ने उत्कृष्टता दिखा दी है इस मुकाबले में। क्या इस पीसी के साथ इस मुकाबले में एक और गोल करके खत्म करेंगे, पॉइंट्स टेबल में टॉप पे जाने का मौका है छत्तीसगढ़ के पास। 5-2 की बड़ी बढ़त इस समय, आखिरी क्वार्टर का महज अब 11 सेकेंड्स का खेल आना शेष। मुकाबला पूरी तरीके से अगर देखें इस वक्त रोमांचित करने वाला है, बेहतरीन रोमांच के बीच ये मैच यकीनन तौर पे दिलचस्पी साफ नजर आती हुई। पीसी लेने के लिए इस समय छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पुश किया, पिछला पेनल्टी कॉर्नर से ही गोल किया था वेरिएशन से, क्या एक बार फिर गोल करेंगे? जी हाँ, इस बार डिफ्लेक्शन से लाजवाब गोल किया है इस समय। पिछला वेरिएशन तो इस बार डिफ्लेक्शन, और कमाल की हॉकी, ये टीम रुकने वाली नहीं है। जिस अंदाज में खेल दिखा रहे हैं, अद्भुत अंदाज में, क्या बेहतरीन वेरिएशन और क्या बीट किया हल्की सी डिफ्लेक्शन के साथ। ये मुकाबला अपने नाम किया है हॉकी छत्तीसगढ़ ने, जबरदस्त जीत अर्जित की है, लाजवाब खेले हैं इस समय, जितनी इनकी प्रशंसा करे उतनी कम। इस अंदाज में ये टीम ने प्रदर्शन किया इस मैच में कि बेहतरीन तरीके से, और दिखाया इस टीम ने एक बड़ी जीत 6-2 से ये मुकाबला बंगाल जैसी एक बड़ी टीम को हराया है। पिछला गोल आदर्श राज के स्टिक से आया पेनल्टी कॉर्नर के सहारे, देख सकते हैं कमाल की ये कोशिश है जो हाइलाइट्स में पहला गोल आदर्श ने ही किया था, और कितना नैरो एंगल से, क्या लाजवाब है समय स्प्रेश करके गए। पेनल्टी कॉर्नर का भी ये बंगाल की टीम, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था, अभिषेक शॉ ने शानदार गोल किया था। और ये तेज तलवार प्रहार आदर्श राज, जिनकी स्टिक की ताकत बड़ी कमाल की है, नैरो एंगल से ही लगातार गोल पोस्ट में डालते रहे, शानदार उनके बात करें कन्वर्जन नजर आए, बेहतरीन स्पीड, स्टीक वर्क और स्किल, लाजवाब और निरंतरता नजर आई। जरूर बंगाल की तरफ से 2 गोल देखने को मिले, अभिषेक शॉ और हितेन बेजक के, लेकिन अमन वर्मा, अभिषेक यादव, आदर्श राज, ये खिलाड़ी छाए रहे। और ये पेनल्टी कॉर्नर पे नजर डालते हैं जिस तरीके से उन्होंने ये वेरिएशन के साथ गोल किया था, लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन गोल था ये अमन वर्मा का। और ये गोल एक और अद्भुत था आदर्श राज के स्टिक से। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट्री बॉक्स में विकास कुमार, मेरे साथ हैं मयूर बरुआ। एक और मुकाबला बहुत जल्द आपके बीच शुरू होने जा रहा है। मयूर जी जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में, सलीम आलम जी, पूरी हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ आप सबका बहुत तहे दिल से एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन। थोड़ी सी देर के लिए मैं विराम लेता हूँ, मयूर जी जुड़ने वाले हैं नेक्स्ट मैच के साथ।
लक्ष्य को निर्विवाद, कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। The chief of the match being played between Manipur and HIMACHAL, Mr. Vikram Khan, international hockey player and a hockey India educator. Welcome you, sir. Please keep standing for the national anthem. Thank you. Good morning to everyone and welcome again to the live coverage of the second match of day number 5 of this 15th edition of the Hockey India Sub-Junior Men National Championship 2025. We have already started off in a fascinating manner with Chhattisgarh Hockey winning their previous encounter and keeping the momentum for them alive. 4 matches, 3 wins, and they will be very happy with the progress in this championship. And this match now, it's the boys from the northeast, Manipur, all in black on the back of a loss yesterday versus Hockey Kerala. We'd love to get behind on their winning track because their previous stats in the previous days are very good. 2 wins for them. And they are up against Hockey Himachal Pradesh from the lap of Himalayas from the north, tackling versus the northeast. With the blow of the whistle, the match is well and truly on its way. Playing in white and black are the boys from Himachal. In complete black and white is the boy from Manipur. Behind the mic, I am Mayur Barua, your host commentator. And I'll be joined along with our distinguished commentator, 40 years since doing his commentary, the one and only Mr. Shamim Alam in his great Hindi commentary. And I love the way how he sums up the evening. Also, I've been telling him I absolutely love the way they sum it up. And let's not forget the usefulness of the flow of Mr. Vikas Kumar also, who have finished up in the previous match. But it's all for the first quarter first to finish up, as the sun has now completely almost coming out in this venue, all basking in its all glory. It's will be a very good matchup, isn't it? As I've mentioned before, we already have the Women's National Championship starting off in Kakinada in Andhra Pradesh. As I was mentioning, Manipur was already getting in a jig-jog fashion inside the striking circle, trying to get the first honors on the board. What a huge aerial this is, all above my laptop. And it just goes and scoops up downwards. It's a nice downward
curve as the ball just falls down. It's and from the left. There has been a try, but probably getting well inside the curve of the stick from the right and now from the left. Two good tries coming in from Manipur already, getting them a glimpses of their attacking hockey. They are very desperate to get into the winning ways, as I mentioned. Defeat yesterday has, I'm sure, has made them get into a very different zone. They have seen what the previous encounter has unfolded in a very, very good fashion. And the match, Chhattisgarh versus Bengal, very, very good match. But the teams tried absolutely well. Chhattisgarh in the eventually prevailing. What a good attacking again from the right flank. Now still commotion going on in the middle of the striking circle. The Bulls still on the prowl. Very heavily guarding there. But again, the defenses of Hockey Himachal Pradesh have been questioned very early on from the boys from Manipur. Very good to see. And so it's like a wakey call up for Hockey Himachal Pradesh, for any one of them probably finding, oh, it's early morning match, it's a Friday morning, we're still yet to open our eyes completely. We must have got through the drills, but come the execution part, we really need to just to smoothen up your spirit. Himachal will be scoring from the right to the left of your picture, and Manipur, of course, to the right. Getting inside the striking circle, this might just be dangerous, and it's gone, and it's the goal. Are you surprised? I'm not, because Manipur already was showing glimpses of getting into the jaws ever so quick, and now from the right flank, and gets it drilled. Jersey number 14, like a bullet, absolute bullet, gets it into the goal to open the account in the second match. Manipur 1, Hockey Himachal Pradesh 0. What a good minute play. Manipur complete dominance. The attack was there to see. Hockey Himachal Pradesh are left to scamper. If this is something coming here, then be very mindful. Be very wary. Hockey Himachal from this northeastern counterparts, they are doing absolutely brilliant. Again inside the striking circle. Oh, only probably the stick got somewhere entangled into the booting of the goalkeeper, or else he was again shaping up towards the goal post. Absolutely brilliant. This is from Manipur. This has actually, the loss yesterday versus Kerala has actually spurred in a very different emotions is going for them. But unfortunately for Hockey Himachal, again, 2 losses from them, remember. So they really have the back against the wall. Is Hockey Himachal Pradesh really need to search for an answer? Manipur is not allowing to do so. Inside the striking circle, it's a reverse into the pad of the goalkeeper. Goes out of bounds. Tremendous pressure being applied from Manipur just within less than 6 minutes. But the goalkeeper is not getting any sense of not getting any reply from the left. He is been asked to go right, left, center. The goalkeeper, oh, he's saying, he's probably pleading to the players of Manipur, kindly allow me to take a breather, because they are all over the place. Hockey Himachal Pradesh really need to up their game, because this boy is the black avatar from the north is very proving to be a handful, more than a handful. Just 1 goal, but come the full time, you might see a different picture. Now let's not judge the book by the cover. You never know what is lurking behind. Okay, Himachal Pradesh now for the first time showing some signs of aggression from the left flank. But losing control again. Manipur on the center line, marching very much ahead. There's 1 player just ahead. The 3 of the defenses, they need to break. But probably that stick got somewhere into the footing. That's why the whistle, again it comes up. Did he signal a penalty corner? Penalty corner,
and probably the captain wants to go and check it upstairs. Yep, we are taking the assistance of the TV umpire. The technology will come in picture. Scoreline at 22 seconds past with 8 minutes remaining. It's Manipur 1, Hockey Himachal Pradesh 0. So duties first up, but again, with the way this craziness unfolded here, especially from Manipur, it was very good to see. I'm sure Hockey Himachal Pradesh, that's why they have that one full honors onto them to score. As I mentioned before, on the back of a loss for them, back-to-back losses, that's going to be very hurtful. But for Manipur, out of this is the fourth match they are playing, so two wins, one loss yesterday. They are now absolutely filled up, and not because of the goal. And you can also see the kind of brand of hockey they have produced, and ultimately resulting in a goal. And they will not let it easily by. They are such a wonderful bunch of players coming from the northeast. Manipur, they have huge support, and I've been in the region of Manipur as an employee of one of my previous companies. The badminton infrastructure, the football infrastructure. I've also been in a commentary panel for one of the AIFF football tournament. Manipur boys, right from the junior categories to the senior categories, are really strong, and again proving so beneficial in other sporting discipline here in hockey. So really not surprised as a commentator that that they have been able to produce some scintillating hockey at the moment. He is reversing a decision. It's not the penalty corner, so the decision stays. So the review stays with Hockey Himachal Pradesh. They have won the review. So this was a very good review. All so that stays. It's not a penalty corner. Manipur 1, Hockey Himachal Pradesh 0. So that is something which will make the nerves very calm for Hockey Himachal Pradesh, because Manipur was already leading one. It's a long aerial, finding the gap right between both the players. The ball lands in no man's land. Comes with a stick by for Hockey Himachal Pradesh. Probably touch little slower on their footing. If you see how they are just probably running away with the ball, it might be a touch, a percentage little slower than what Manipur hockey at the moment is displaying. That might just be a very, very different kind of a crucial factor when it comes in, um, when you are channelizing your energy along with your stick, with the ball getting in sync. Nice scoop up, but again finds the stick of his opposition from Manipur. Man to man. This is the first period where I could see Hockey Himachal Pradesh getting more than 10-15 seconds the possession of the ball, with Manipur nowhere in the picture. But again, you could see the strategies being marked with Manipur doing very good homework, I would say, which has been very clear. They did play versus a stronger opposition yesterday. So Kerala to lose it inside the striking circle almost. Two of the defenses breaches eat. The ground is getting broken by the umpire. So they'll be favoring so much. 6.5 minutes remaining by the clock in this first quarter of the second match here of day number 5 of this 15th edition of the Hockey India Sub-Junior Man National Championship 2025, right from this wonderful venue of the Mayor Radhakrishnan Stadium here in the capital city of Chennai in the state of Tamil Nadu. Was getting inside the striking circle there. Now the ball goes way too ahead. Hockey Himachal Pradesh will do a world of good if they come somewhere remotely closer to what that Manipur hockey has done.
And the only problem for them is in just 10 minutes of time which has gone by, Hockey Himachal Pradesh has not been a single time being able to carry themselves inside the striking circle. Versus the comparison of the percentage that Manipur hockey has been doing, this might just be another one. So the cause of huge concern as they go in the second half, until unless if they get somewhere inside the striking circle, or even of course then infuse a goal, then it will be a huge bonus for Hockey Himachal Pradesh. But go somewhere near the striking circle, they're not being able to do so. That will be huge concern. This ball now goes out of bounds, and it's almost 5 minutes remaining. And that's the bench. That's the dugout of Manipur. Probably there is a replacement coming in for one of the players. The coach is still giving a very hard look. You never see the coaches happy, isn't it? Come the final hooter, you want to see them in the knockouts day, in the finals day. You want to feel your fingers on the glistening trophy, and that will happen only on the 8th. Has been strong, very strong, I would say. That's the word inside the striking circle. The ball I couldn't figure out because of the shadows and the blazing sun. I missed the trajectory of where the ball actually went, but definitely not inside the goal post. 3.5 minutes to go by for the first quarter to end. We joined in Hindi commentary with Mr. Shami Malam. Remember, so the fans of Mr. Shami Malam just get geared up. Again, the goalkeeper is much ahead towards the right of him. And that's where the ball got lost. The affluence became a little slow. Whilst Manipur seriously showing a huge mettle today in this match. And how much does a loss does for you? The loss yesterday, and look at the change. Less than 12 hours since the loss, and they have come with a very different picture. And Hockey Himachal Pradesh, unfortunately, facing the brunt of the heat of that loss for Manipur. Entangle. The stick going by under the whistle of the umpire, breaking the bondage. Less than 2 minutes, 1.5 minutes to be precise. It's a scoop from Hockey Himachal Pradesh. It's a very nice scoop, finding the stick of his colleague. Right, in reversed. Manipur doing very well. You can clearly hear the sound of the stick. Speaking of the dominance of Manipur. Again, it goes out. Just a handful of seconds remaining for the blow of the hooter. Just milliseconds, and there we go. The blow of the hooter, signaling. प्रयास किया था मैक्सिंग लेसाम इस टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, और शानदार तरीके से अगर बात करें खेल अभी तक देखने को मिलता हुआ इस समय दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपका जिक्र है 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप बी डिवीज़न का ये मैच, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बैटल, जहाँ तक दोनों टीमों का ताल्लुक है। कुल बी की है दोनों टीमें। मणिपुर 3 में से 3 मुकाबले जीत कर आई है, 9 पॉइंट्स इनके नाम है। वहीं बॉटम में है, सबसे ज़्यादा स्थिति उतनी अच्छी नहीं है HHP की। 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस पुल बी में मणिपुर टॉप है, केरला सेकंड पे, तेलंगाना थर्ड पे है, फोर्थ पे आंध्र प्रदेश और फिफ्थ पे है हॉकी हिमाचल प्रदेश। फिलहाल इस समय 1-0 की बढ़त इस बात की गवाही पेश करते हुए टीम काफ़ी बेहतरीन स्थिति में नज़र आ रही है। मणिपुर ने 7-1 से तेलंगाना को हराया था इसी पुल में, और फिलहाल इस बीच देखना होगा बॉल कंट्रोल खूबसूरती के साथ यहाँ पे कोशिश हॉकी इंडिया के इस बेहतरीन मेज़बानी में लगातार यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की टीम के द्वारा कोशिश की गई। मणिपुर के खिलाड़ी ज़रूर अंपायर से इस समय बात करने पहुँचे हैं। अंपायर है राजीव एस और उनके साथ हैं सनपीर एम। और क्या यहाँ पर अच्छी गौर दी जाएगी, देखना दिलचस्प रहेगा इस समय हिमाचल प्रदेश के पक्ष में। ये बहुत अहम HHP और मणिपुर के बीच ये मुकाबला इस समय घटित होता हुआ।
और फिलहाल इस बीच दूसरे क्वार्टर का खेल जारी। गुली के साथ शुरुआत, हॉकी का जो अपना ट्रेडिशनल रूल है। और देख सकते हैं इस बीच मणिपुर के हाथ में खेल होता हुआ। मणिपुर के खिलाड़ी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। शानदार तरीके से उन्होंने गति इनके पास बड़ी कमाल की है। स्पीडी खिलाड़ी जो नॉर्थ ईस्ट के स्पेशली जिनके पास ये क्षमता है इस समय, इनकी पेस, इनकी ताकत रही है। और लाजवाब तरीके से अभी तक के ये मुकाबला घटित हो रहा है। इस बीच कमाल का माहौल इस समय नजर डालें। इस समय 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल की ये मेजबानी, मैच नंबर 25, 25वां मुकाबला है। इस बीच स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर मणिपुर की टीम बहुत ही शानदार तरीके से इस समय बेहतरीन तरीके से प्रयास किया। लेफ्ट फ्लैंक से स्ट्राइकिंग सर्कल में दाखिल हुए, अच्छी कोशिश, प्रयास होता हुआ लाजवाब। इस समय देख सकते हैं दूसरे क्वार्टर में राइट फ्लैंक से मणिपुर की टीम लगातार दोनों फ्लैंक का अच्छा यूज करके इस समय धीरे धीरे स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर दाखिल होने की कोशिश। विशाल वरिम्बम बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, साथी खिलाड़ी को पास किया खूबसूरती से रोनिंद सिंह। टीम डिफेंस भी काफी बेहतर, वहां पे तारीफ करनी हुई डिफेंस लाइन में सुजल, चाहे कार्तिक यादव, कप्तान लक्ष्य खुद एक डिफेंडर है, मनप्रीत सिंह है हिमाचल के लिए अच्छी भूमिका अदा करते हुए। लेकिन लगातार अटैक बना रही है, एरियल बॉल दिशाहीन, ओहो, लेकिन ट्रैप किया है खूबसूरत। जैसे नंबर 10 मैबम मौजूद है, पूरे नैरो एंगल से रिवर्स हिट के साथ कोशिश की गई उनके द्वारा। बहुत बढ़िया प्रयास, क्या 3D स्किल, क्या स्किलफुल खिलाड़ी हैं ये सब, बहुत बढ़िया है लाजवाब। ये भारत का भविष्य काफी उज्जवल नजर आ रहा है हॉकी में। तो इस बात की झलक आप देख सकते हैं, जो लगातार शानदार हॉकी दिखाती हुई दोनों टीमें। हॉकी इंडिया की भी तारीफ करनी होगी, जो हॉकी इंडिया के सभी पदाधिकारी हैं, चाहे बात करें भोलानाथ सिंह जी सेक्रेटरी जनरल हो, चाहे दिलीप तिर्की जी या मनोरंजन सर, और सभी अगर बात करें एसोसिएशन के पदाधिकारी स्टेट यूनिट के, हॉकी की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस बीच देखना होगा लगातार ये खेल आगे बढ़ता हुआ। इस अभी तक देखें 1-0 की बढ़त है मणिपुर के पास। जर्सी नंबर 2 बॉल के साथ मनप्रीत सिंह, ये नाम जाना पहचाना नाम है, इस नाम के तो भारतीय टीम के कप्तान भी हैं, मनप्रीत, पूर्व कप्तान अगर कहें, मनप्रीत भारतीय टीम की कप्तानी करते हैं। फिलहाल बहुत ही शानदार तरीके से हॉकी देखने को मिल रही है दूसरे क्वार्टर में, और लगातार मणिपुर की टीम ने डोमिनेट किया है बॉल पोजीशन, अच्छे अटैक्स बिल्ड कर रहे हैं दोनों ही फ्लैंक का यूज करके। बढ़िया उनके द्वारा विंगर्स के द्वारा बॉल सप्लाई अच्छी हो रही मिडफील्ड से। मिडफील्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न हॉकी में, यहाँ से बॉल अगर सप्लाई बेहतर हो तो गोल के चांसेस भी बढ़ते हैं। फिलहाल देखना होगा इस बीच बेहतरीन तरीके से अभी तक मुकाबला 1-0 की बढ़त ज़रूर है मणिपुर के पास। दूसरे क्वार्टर का खेल इस समय प्रगति पे, और धीरे धीरे ये मुकाबला अब आगे बढ़ रहा। स्किलफुल हॉकी नजर आती हुई मणिपुर लेफ्ट फ्लैंक से अच्छा बॉल कंट्रोल किया खूबसूरती से अमरजीत सिंह, टीम के अहम खिलाड़ी, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर दाखिल हुए, खूबसूरत प्रयास, टीक वक्त देखने लायक, रिवर्स टीक से कोशिश की उन्होंने, फ्लिक किया था बॉल को स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर, लेकिन ठीक तरीके से नियंत्रण नहीं। डिफेंस का अच्छा कार्य, वहां राजीव मौजूद थे, क्लियर किया स्पीड स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर। खेल में निरंतर इस समय अटैक बिल्ड कर रही है टीम, और एक और पेनल्टी कॉर्नर बना लिया है, पीसी मिल गई है इस समय मणिपुर को, गजब की नजर आती हुई। इस अंदाज में यह मुकाबला आगे बढ़ रहा है, वो देखने लायक, रोमांचित करने वाले पल। देखना होगा, वक्त धीरे धीरे निकल रहा है, रोमांच बढ़ता हुआ इस समय। और यहाँ पे दूसरे क्वार्टर के खेल जारी, निरंतरता नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश काफी समय बाद इस मैच में अगर बात करें, बॉल कंट्रोल किया लेकिन बहुत क्विक आकर के इस समय
इस समय क्विक आकर के डिफेंस लाइन को भेजती नजर आती मणिपुर की टीम में। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत रही है। कमाल की इस समय ये मुकाबला। इस बीच हिमाचल प्रदेश की तरफ से एरियल बॉल यहाँ पे राइट फ्लैंक्स पे बॉल को ट्रैप करने की कोशिश की। इस समय रणनीति क्या रहेगी? बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला घटित होता हुआ। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? ये बहुत ही कमाल की ये कोशिश देखना होगा। राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने का प्रयास इस समय। बहुत ही रोमांचित करने वाले क्षण इस मुकाबले में। जिस अंदाज में ये मैच अभी तक आगे बढ़ रहा है खूबसूरती के साथ। इस मणिपुर एक बार फिर से स्ट्राइकिंग सर्कल में गोलकीपर के बेहद नजदीक गए। शानदार प्रयास इस समय। कमाल की कोशिश स्ट्राइकिंग सर्कल के नजदीक। गोलकीपर की तारीफ करनी होगी लक्ष्य की। लक्ष्य ने जिस तरीके से अपने आप को लेकर आए और खूबसूरत तरीके से इस समय प्रयास इस समय देखने को मिलता हुआ। ये लाजवाब प्रयास उनके द्वारा इस समय स्ट्राइकिंग सर्कल में। अगेन एक मौका इस समय। बहुत ही शानदार सेव। तारीफ करनी होगी जिस तरीके से सेव किया गया यहाँ पे। ये प्रशंसनीय है इस समय। कमाल की कोशिश यहाँ पे। गोलकीपर लक्ष्य लगातार इसे डिफेंस को झेल रहे हैं। जो डिफेंस लगातार मणिपुर की तरफ से यहाँ पे कोशिश की जा रही है डिफेंस लाइन के द्वारा उस प्रयास को झेलने की। बहुत ही बढ़िया रणनीति के तहत अभी तक क्या रणनीति रहेगी आने वाले वक्त में, ये देखना बहुत अहम रहेगा इस समय। शानदार तरीके से ये मुकाबला 3 मिनट 20 सेकंड्स के आसपास का खेल सेकंड क्वार्टर में काफ़ी देर बाद इस समय अब बॉल पे कंट्रोल इस समय नज़र आती हुई यहाँ पे हिमाचल की टीम की। बेहतरीन माहौल इस समय। 3 मिनट के आसपास का खेल शेष। लक्ष्य गोलकीपर की भूमिका में है। कप्तान भी लक्ष्य है। यानी कि एक चीज़ तो गौर करें कि जिस तरीके से हिमाचल के खिलाफ मणिपुर काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है। अपने सभी मुकाबले जीत कर आई है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पे है पूल बी में। तो ये यहाँ से अहम। और अभी तक हिमाचल जो बॉटम पे है इस पॉइंट्स टेबल में, अच्छा फाइट किया है इस मुकाबले में। सिर्फ एक ही गोल देखने को मिला है स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर। मणिपुर लगातार दबाव बना रही। जर्सी नंबर 12 महेश सिंह निंगोबम बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। उनके द्वारा ये कोशिश की गई। फिलहाल एक बार फिर से देख सकते हैं डिफेंसिव अप्रोच के साथ इस आक्रमण को लगातार निस्तेज करने का प्रयास इस समय। मणिपुर की लगातार अटैक बन रहा है लेफ्ट और राइट दोनों फ्लैंक का यूज करके। मुकाबले में पूरी तरीके से अभी तक रोमांच बढ़ता हुआ इस समय। 1-0 की बढ़त इस समय। प्रयास हो रहा है इस समय यहाँ से कोशिश होती हुई। जर्सी नंबर 6 बॉल के साथ वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार शिवांश। बॉल कंट्रोल करने का प्रयास। जर्सी नंबर 14 इस वक्त सिद्धांत कौशल। और यह है बेंच इस वक्त हिमाचल प्रदेश का, जहां कोच मौजूद हैं इनके साहिल। टीम मैनेजर हैं कुणाल शर्मा। थोड़ी सी चिंता की लकीरें। युवा टीम है, कुछ अच्छा करने की आशाओं से आई है। जर्सी नंबर 13 बॉल के साथ इस बीच डेरी सिंह बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्राइकिंग सर्कल में पुश किया। वहां पे डिफेंस में ओवरलोड और यहाँ पे गलती हुई है। बॉल फुट में टकराई, इन्फ्लुएंसमेंट हुआ है और पेनल्टी कॉर्नर मिल गई है इस वक्त मणिपुर को एक और पीसी मिला है। और इस पीसी का देखना होगा किस तरीके से जवाब दे पाती है टीम। ये बेहद महत्वपूर्ण इस मैच के नज़रिए से। कमाल की हॉकी यकीनन तौर पे दोनों टीमें दिखाती हुई। स्पेशली मणिपुर लगातार डोमिनेट किया है खूबसूरत इस टीम ने। और कप्तान ओकराम लेंथोम्बा बहुत ही शानदार कैप्टन। और इंजेक्शन के लिए इंजेक्ट किया। स्टॉप बेहतर स्टॉप नहीं यहाँ पे उतनी शानदार तरीके से। और जर्सी नंबर 9 बॉल के साथ यहाँ पे वापस से मैक्सिंग लेशाम शानदार खिलाड़ी हैं।
मैक्स सिंह पूरी तरीके से एक शानदार प्लेयर के तौर पे पिछले प्रीवियस मैचों में भी काफ़ी गोल किए हैं, और इन फॉर्म अगर बात करें प्लेयर देखना होगा, मैक्स सिंह लेसाम हो चाहे रोनिन सिंह हो, एक बार फिर सर्री पेनल्टी और क्या गोल के रूप में तब्दील कर देंगे, ये देखना बहुत अहम। लगातार कमेंट्री बॉक्स में विकास मेरे साथ, शमीम आलम जी और मयूर बरुआ जी इंग्लिश में, जो आप तक सुबह से लगातार एक्शन पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस बीच तेज तरार हिट लिया लेकिन ऑफ टारगेट, गोलकीपर को नहीं टेस्ट कर सके और खतरा चल गया कुछ बलों के लिए हिमाचल प्रदेश की तरफ से। देखना होगा इस समय दूसरे क्वार्टर में अब आखिरी मिनट का खेल शेष, वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ, मुकाबला बहुत ही दिलचस्पी की तरफ आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। किसी भी तरीके से इस क्वार्टर को बिना गोल किए हिमाचल की टीम चाहेगी यहाँ पे ये क्वार्टर खत्म करें। जर्सी नंबर 3 लक्ष्य कप्तान की भी यही लक्ष्य है नाम के अनुरूप, इस क्वार्टर में गोल कंसीड ना करें और एक प्लानिंग ले, थोड़ी ब्रीदिंग ले और हाफ टाइम के दौरान थोड़ी स्ट्रैटेजी बदले, चेंज करें। अभी काफ़ी डिफेंसिव नज़र आई है टीम, कुछ अटैकिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी अगले क्वार्टर में। इस क्वार्टर को यहाँ गोल रहित ज़रूर ख़त्म करें। फिलहाल देखना होगा इस बीच बहुत ही शानदार कवरेज लगातार आप तक पहुँच रहा है। हॉकी इंडिया के यूट्यूब चैनल हॉकी इंडिया मीडिया टाइप करें और ये एक्शन देखना ना भूलें आप सब। फिलहाल काफ़ी देर बाद हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी समय चैकआउट करने का प्रयास उनके द्वारा, वक्त अब धीरे धीरे निकल रहा है, समय अब इस क्वार्टर का धीरे धीरे बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वार्टर की समाप्ति हुई है और स्कोर लाइन अभी भी मणिपुर 1 हिमाचल 0, यानी मुकाबले में बहुत कुछ अभी बाकी है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कमेंट्री बॉक्स में विकास कुमार मेरे साथ हैं, मयूर बरुआ इंग्लिश कमेंट्री के साथ। मयूर जी जुड़ेंगे जैसे ही तीसरे क्वार्टर की शुरुआत होगी। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही शानदार तरीके से खेल का एक्शन आप तक पहुंच रहा है।
discussion with the coach to how to go in the business in this next two quarters. Behind the mic, I am Mayur Barwa, your host commentator, and I have taken over from Mr. Vikas Kumar. So thank you so much, Vikas. It was a goalless quarter. Then again, the Hindi commentary, it's like a free flowing, like a river flowing, isn't it? Very experienced. I always love the combination of Hindi and English going on. I'm sure for the listeners and also for everyone getting tuned early morning for watching all those hockey action. They will agree to the fact that it's been a very good production also of this championship. I've, this is the 1st of August today, so 7 months have finished of this year. 5 more months to go as we welcome probably the next year. But so many hockey action lined up for the remaining months. As I mentioned before, the Women's Championship have also started at Kakinada in Uttar Pradesh, where our distinguished commentator, Mr. Shami Malam, has been carrying on the shows right there. And Manipur is also doing what they've been doing inside the striking circle. Now, trying to give a pass. But four of the defenders forming a zigzag line, tackling it away. But can you take Manipur for out of contest for a long, long time? And this time they are scoring, and they will be attacking from the left to the right, from the left of your picture, and Hockey HIMACHAL Pradesh from the left to the right. So much for them to play up for Hockey, all of them. This is match number 25. We played at this wonderful historical venue of Mayor Radha Krishnan Stadium here in this capital city of Chennai in the state of Tamil Nadu. It might be hot and humid, but are the things getting hot enough here? I have to check by Manipur. Will definitely try to imply the first horses on courses inside the striking circle, reverses himself. Something like an infringement as the whistle comes in, so much like like an eye of a hawk from the umpire. Scoreline still remains 1-0. No goal scored in the last quarter. The first goal, which came from the stick of Ningombam Gerik Singh, that was a field goal in the first quarter. In the 4th minute, that was how quick were Manipur. But after that, Hockey HIMACHAL Pradesh, despite coming somewhere closely, but again, as I mentioned before, their implications, they're running inside the striking circle has been very less percentage-wise. And bit of a defensive style also. I probably that's where it has not gone for them to go in Queens or opening their account. It might just be hurtful, very hurtful, because Manipur Hockey are definitely putting the best foot forward. 3 out of 3 victories for them, and those have been resounding victories. Score lines of 7-1, 10-1. Yesterday versus Kerala 2-1. That was not a huge margin, but it's going to look dreadful. It will absolutely look dreadful if they trust the goal country to learn from him. And as I mentioned before, and also I've heard my Hindi colleague commentator Vikas Kumar also mentioning about the young bloods, about the young, and one of the young bloods scored a goal here. He has been successful in storming goal number 2 for Manipur. We're talking about influxes of energy, infusing young, and gets straight into the goal. Absolutely lovely. And this has come now in the 37th minute from jersey number 10, Mani Matum Maibam. Another field goal. First one was in the 4th minute from Ningombam Gerik Singh. And now from jersey number 10, Mani Matum Maibam. And for cricket, the greatest of all time, Sachin Ramesh Tendulkar. He wears jersey number 10. He used to wear jersey of cricket. And then Manipur has not been a hotbed in the game of cricket.
When it comes to hockey, they have seriously shown their useful talent. With 7.5 minutes to go by, brilliant. They've already shown of how they are now well and truly going for their fourth consecutive wins. They will be safely standing right at the pile of the points table, right at the pile of the individual pool. Remember, this is Division B, and we'll be having Division A matches today starting off. And those are lip smacking matches which are coming in for you. And Division A first match today, which will be the Northern Indian counterparts. It will be Uttar Pradesh Hockey will be shaping up versus Delhi Hockey. And then we have Hockey Association of Odisha versus Hockey Maharashtra. What a match that would be. Odisha, it's a huge hotbed of hockey. The infrastructure, the facilities, the players. And then Hockey Punjab will be locking horns versus Hockey Karnataka. Two great teams, one from south, one from north. And then finally, the home team, Hockey Tamil Nadu, will be facing Hockey Haryana. So those are the lineups for Division A matches today. 4 great matches coming up. I'm sure there will be many who have been waiting for this day to come up. The sub-junior category, 4 wonderful matches coming your way. So don't miss any of the action. All of them can also be watched on the mobile application of Hockey India. So don't forget to download the app and also use the hashtag #IndiaGame. Get right behind the social media, and you will get so many of the galleries speaking for you. At the moment, these pictures are coming live and exclusive right from this Mayor Radhakrishnan Stadium here in Chennai in Tamil Nadu, as Manipur are storming across very ahead versus Hockey Himachal Pradesh. This is day number 5. And this 15th Hockey India Sub-Junior Man Nationals Championship 2025 Division B. Hockey and Manipur are like absolutely hot in their head, in their mind, and also it's getting transpired in their hockey stick. Hockey Himachal Pradesh, unfortunately, at the moment, I don't see much of the glimpses of their attacking strategy, which again you can see very brief moment that Manipur needs to come back in control. It's a very nice pass. Oh, what a goal! What a goal! What a simulation of a team! That's what Manipur is. 1, 2, 3, and number 4 keeps on waiting. What does he do? Just the deflection of his stick. There you go. What assistance! There you go. Jersey number 2. I feel that's from Manipur. You have to clearly see who's that. But number 3 has come in from, yes, number 2. That's Thozam Sanjit Singh. He was not there initially in the playing 11. He came as a substitute, and he really did the subs category. Just waited for the ball to come. And I'm sure the goalkeeper must be aware that he was lurking around the corner. Do I look at the player? Do I look at the ball? It came in so strong. Absolutely lovely assist for goal number 3. Could have been number 4, as I was trying to explain the previous goal. Inside the striking circle, they are roaring. Absolutely roaring here. Manipur Hockey, man, and truly trying to grab the consecutive number 4 wins here in the third quarter. Still a quarter remaining, but Hockey Himachal Pradesh is still trying to scamper for answers, and the answers are not coming to very tough question paper. This will only bring the best out of Hockey Himachal Pradesh. So 3 for Manipur and 0 for Hockey Himachal Pradesh. 3.5 minutes remain. In fact, less than 3.5 minutes. It's a nice pass inside the striking circle. He's trying to reverse. He's trying to go straight. That was Warimbam Vishal. Captain from Manipur is Lan Thoiba Okram. 3 good goals. First quarter, 4th minute, Ningombam Garrick Singh. And 37 minutes now in this third quarter, Mani Matu Maibam. And then within 4 minutes, another field goal from jersey number 2, Paizam Sanjit Singh. Absolutely wonderful hockey.
And the way they came so close to the striking circle, probably they'd have been hoping for a double of the numbers at the moment. Oh, what a nice control that was. I thought the ball went ahead, but he left it up on the bottom of his stick. I tell you how good match practice, what good drill practice you really need for yourself to be able to showcase those skills. That's why Manipur has been having splendid, have been superlative until now. And they will definitely try and continue this march for trying to infuse more and more goals under their belt here. Hockey Himachal Pradesh are not looking in terms. Gets the position. Hockey Himachal Pradesh after a long time trying to put it with one stick, and that's the difference. You can see they're going, but they couldn't march along probably with the same firepower in the legs that Manipur has been doing. Again, getting a very good control. It's a nice lap up. It's a very nice scoop inside the striking circle. Gets the stick off his opposition. Well, gets it really right out of the striking circle. Man-to-man marking from Manipur. So the ball has been intentionally been made to go along the carpet and out of bounds. Just a minute remaining, touch over meaning remaining, to finish this third quarter of this match number 5. Defensive freezes. Just counting down to 2 seconds now. 1, 2, 3 will be a very relaxed outfit. Can they relax even more? And wide from the corner. It's a lovely pass, almost what happened for goal number 3. The ball goes out of the striking circle. A chance for Hockey Himachal Pradesh to take a breather, because the time it comes inside the striking circle, most of the time they've been able to convert to goals. Signaling coming here. Signaling coming here. Just mitigate the last minutes of second here remaining of the third quarter for Manipur Hockey. Can they get a goal? Manipur Hockey. Can they get a goal? The last few fraction of seconds now remaining here. 4, 3, 2, 1. 0. Very good. 0. Very good. As it's running down the countdown, the hooter comes. As it's running down the countdown, the hooter comes in to signal the. बहुत बहुत थैंक्स मयूर जी एंड वेलकम बैक एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बहुत इंटरेस्टिंग अब रहने वाला है अगला क्वार्टर इस मैच का। मणिपुर ने 3-0 से इस मैच को अपने अभी तक लीड किया है इस टीम ने। फोर्थ क्वार्टर की शुरुआत होने जा रही है और ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वार्टर रहने वाला है, यकीनन तौर पे। चौथा और आखिरी क्वार्टर की शुरुआत हो चुकी है। ऑल ब्लैक में है मणिपुर की टीम में। काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी तक खेल दिखाया है इन्होंने। बेहतरीन गेम प्लान, उसका एग्जीक्यूशन, कमाल का तालमेल इनके बीच, और सबसे अहम बात इस टीम के लिए बहुत अच्छी तैयारी के साथ आई है। ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल में टॉप पे, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आई है। ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल में टॉप पे है पुल बी में, और टॉप पे ही फिनिश करके आ रही। और फोर्थ क्वार्टर में अगर देखें इस समय, तीसरे क्वार्टर में ज़रूर एक गोल देखने को मिला। यकीनन तौर पे निंगोम्बम बहुत शानदार प्लेयर है। दोनों ही फ्लैंक का अच्छा यूज करके फ्लैंक को स्विच किया एरियल बॉल के साथ, लेकिन कंट्रोल उतना बेहतर नहीं, थोड़ा ही दिशाहीन वहाँ पे अगर बात कर रही है। रियाज एक्यूरेट नहीं, थोड़ा एरियल बॉल कंट्रोल नहीं कर पाए। काफ़ी हाई राइज हवा में सिरे पर अजय मौजूद है वहाँ पे। जैसे नंबर 8 अजय की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से, के साथ साथ ऋतिक
और धवनप्रीत सिंह खूबसूरती के साथ मणिपुर बहुत ही शानदार प्रयास कर रहे हैं। जर्सी नंबर 8 जर्सी नंबर 9 गोलकीपर ने बेहतरीन सेव किया है लक्ष्य ने, लेकिन जहां रिबाउंड पे बॉल आई खुद में टकराई और पेनल्टी कॉर्नर पीसी मिलता हुआ इस समय एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पे। और मुकाबले में काफी दिलचस्पी साफ नजर आ रही है। शानदार ये मैच, एक और पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पे मिलता हुआ और ये पीसी दिखना होगा किस तरीके से इसका कन्वर्जन कर पाते हैं। बेहतरीन रोमांच के बीच ये मुकाबला पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए देखना होगा। इंजेक्शन के लिए पहुंचे हैं, जी हाँ इंजेक्ट किया, स्टॉप ड्रैग, शानदार तरीके से ड्रैग, लेकिन खतरा चल गया। फर्स्ट टच में डिफेंस ने वहां पे सेव किया है बहुत खूबसूरती के साथ। कमाल की ये कोशिश, बेहतरीन अंदाज में ये मुकाबला इस समय घटित होता हुआ। जबरदस्त रोमांच के बीच यहाँ पे जरूर बातचीत हो रही है अंपायर से, रणनीति क्या रहती है ये देखना बहुत अहम। शानदार ये मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ। बेहतरीन रोमांच के बीच खेल कुछ पलों के लिए जरूर रुका हुआ है और वीडियो रेफरल के लिए गए हैं। इंतजार करेंगे वीडियो रेफरल के डिसीजन का। जुड़े रहिए हमारे साथ। से लेकिन बॉल कंट्रोल किया इस सब कार्तिक यादव ने। कार्तिक यादव हिमाचल के लिए, हिमाचल के कैप्टन लक्ष्य क्या स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। एक एरियल बॉल इस समय मणिपुर के लिए, मणिपुर जैसे साथ एक एल्बम वगैरह बहुत ही शानदार खिलाड़ी। पेनल्टी कॉर्नर एक और पीसी का इशारा अंपायर का। लगातार पिछले 3-4 मिनट के अंदर अगर देखें इस मुकाबले के फोर्थ क्वार्टर में ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर है, यानी हर मिनट में इसे फोर्थ क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर्स देखने को मिल रही है और ये चिंता की लकीरें हैं हिमाचल प्रदेश हॉकी के लिए। काफी टफ और मुश्किल कंडीशन इनके लिए। 10 नंबर 10 इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं इस वक्त मैबम मिनिमंतम, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और इस समय इस पेनल्टी कॉर्नर को लेने के लिए इंजेक्ट किया, स्टॉप ड्रैग, शानदार ड्रैग, स्टिक से टकरा कर गेंद बाहर चली गई। बहुत बढ़िया ड्रैग किया था शानदार तरीके से इस समय सूरज कुमार मणिपुर के लिए। मणिपुर एक बार फिर से जर्सी नंबर 14 बैक पास किया इस समय गेरिक सिंह निगोम्बम, बहुत शानदार खिलाड़ी, गोल कर चुके हैं गेरिक सिंह। टॉप पे है पॉइंट्स टेबल में पूल बी में मणिपुर। हाँ, बहुत शानदार तरीके से खेल अभी तक दिखाती हुई टीम सर, तीनों ही क्वार्टर में डोमिनेट किया है इस टीम पे। अद्भुत हॉकी देखने को मिल रही है, लाजवाब हॉकी की झलक है इस समय यकीनन तौर पे। और इसी निरंतरता से टीम अगर खेलती रहे फोर्थ क्वार्टर में, अभी तक गोल भले ही नहीं देखने को मिला, बॉल पोजीशन और डोमिनेशन इनकी सबसे बड़ी ताकत रही है और जो डोमिनेट करती नजर आई है टीम वो प्रशंसनीय है। फोर्थ क्वार्टर का खेल जारी है, एक बार फिर से देखना होगा रणनीति क्या रहती है। शानदार ये मुकाबला, पुशिंग बैक पास किया इस बीच, दिलचस्प तरीके से ये मैच इस समय आगे बढ़ता हुआ। बॉल एक बार फिर से काफी देर बाद अगर देखें इस पर बॉल कंट्रोल एक बार फिर से हिमाचल के पास, टॉमाहॉक रिवर्स स्टिक से शानदार प्रयास किया, गोलकीपर को इस समय टेस्ट किया है महेंद्र जीत जो कि गोलकीपर है। मेताई, बहुत ही शानदार मेताई का एक प्रयास किया गया था और इस समय अच्छा सेव, थोड़ा सा नैरो एंगल से, लेकिन टॉमाहॉक के सहारे स्टीक के साथ इस समय ये प्रयास किया गया उनके द्वारा। जबरदस्त हॉकी इस फोर्थ क्वार्टर में। अभी तक गोल भले ही नहीं हुए हैं लेकिन अच्छी स्किल और इस बार से नंबर 6 मणिपुर के लिए अविनाश टीम के बेहतरीन खिलाड़ी,
उनके साथ मौजूद हैं जर्सी नंबर 11 आइफवा, शानदार खिलाड़ी हैं ये भी। लगातार इस समय 23 मीटर रेखा से स्ट्राइकिंग सर्कल डॉटेड लाइन के आसपास निकलने का प्रयास। जर्सी नंबर 12 बॉल के साथ इस समय महेश सिंह। मणिपुर की टीम लगभग बॉल पोजीशन अगर देखें 20% से 80% तक बॉल पोजीशन इनके पास है, पूरे टाइम बॉल को कंट्रोल करते हैं और ये टीम गेम में हॉकी जैसे स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट। खिलाड़ी स्लाइड हुए थोड़ा सा, वहां पे बॉल कंट्रोल उतना बेहतर नहीं डॉटेड लाइन के पास, लेकिन खतरा कुछ पलों के लिए यकीनन तौर पर टलता हुआ। जबरदस्त हॉकी की झलक यहाँ पे नजर आ रही है और मैच नंबर ये 25 25वां मुकाबला आज इस 5वें दिन का हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का ये रोमांच अपने शिखर पे जबरदस्त हॉकी देखने को मिल रही है। उत्कर्ष का खेल जारी इस समय, आने वाला मुकाबला भी बहुत ही दिलचस्प आपको नजर आएगा। देखना होगा इस बीच शानदार हॉकी की झलक, बेहतरीन रोमांच के बीच ये मुकाबला इस वक्त अभी तक घटित होता हुआ। मणिपुर का डोमिनेशन साफ नजर आ रहा है और जिस तरीके से ये टीम डोमिनेट करती नजर आई है वो बहुत ही लाजवाब, कमाल का माहौल इस समय खेल के लिए, दिलचस्पी साफ नजर आती हुई, शानदार हॉकी की झलक यहाँ पे। और अब 7 मिनट से कम का खेल शेष, 3-0 की बढ़त यहाँ पे मणिपुर के पास। देखना दिलचस्प होगा इस समय रणनीति क्या रहती है आने वाले वक्त में। और जिस तरीके से ये मुकाबला अभी तक के घटित हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से इस मुकाबले में निरंतर डोमिनेट किया है। बॉल पोजीशन बहुत की फैक्टर है। गेरी को माइबम है, संजीत सिंह, ये 3 गोल स्कोरर हैं और तीनों ही फील्ड गोल। इसी से पता चलता है कितना कमाल का कॉम्बिनेशन है मणिपुर के पास। मणिपुर की टीम ने एक बार फिर से बैक पास किया। शानदार अगर वेदर इस समय हॉकी के लिए। चेन्नई का मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम बहुत ऐतिहासिक स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय कई मैचों का गवाही करता रहा है ये मैदान, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर के तमाम बड़े आयोजनों का। और फिलहाल देखना होगा इस बीच राइट फ्लैंक से अच्छा पुश, लगातार बॉल कंट्रोल, बेहतरीन ड्रिबलिंग, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए, मौका जर्सी नंबर 10 गोलकीपर को बीट किया, शानदार गोल, क्या बेहतरीन क्लिनिकल फिनिश, कमाल का तालमेल, अद्भुत समन्वय, ये ताकत है मणिपुर की। आइए नजर डालें इस समय जिस तरीके से इस टीम ने जर्सी नंबर 10 बेहतरीन खिलाड़ी हैं मायबम, और उनका ये प्रयास देखिए कितना बढ़िया। हो क्या शानदार, बेहतरीन स्टीक वर्क, तालमेल, असिस्ट और आखिर में कन्वर्जन गोल के रूप में। इस टीम की ताकत रही है। 4-0 की लीड अब यहाँ पे हो चुकी है, जो इस बात के दर्शाते हुए कि टीम कितना ज़बरदस्त फॉर्म में है। 4-0 की बढ़त यहाँ पे मणिपुर के पास, टॉप पे हैं अपने पुल में और टॉप स्तर का भी खेल यहाँ पे दिखाते हुए। फिलहाल पिछला गोल गेरिक सिंह निगम्बम, जो कि सपोर्ट मिला था मिनिमम माइबम का, और गेरिक सिंह का शानदार फिनिश था। वापस से स्ट्राइकिंग सर्कल के नजदीक जर्सी नंबर 3 बॉल के साथ खूबसूरत प्रयास से समय अगेन। कमाल की हॉकी, लाजवाब हॉकी देखने को मिल रही है। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर अगेन गए, लगातार डिफेंस को मुश्किल में डाला है, यहाँ क्लियर किया शिवांश ने, लेकिन फुट में इन्फ्रेंसमेंट हुई है, शरीर से टकराई। और एक और पेनल्टी कॉर्नर, एक और पीसी मिल गया इस समय। देखना होगा इस पीसी के लेने के लिए जाते हुए। 5 मिनट 5 सेकंड्स का खेल आना शेष इस क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर का इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया तरीके से यह मुकाबला अभी तक आगे बढ़ता हुआ। जर्सी नंबर 16 बॉल के साथ है विशाल परिम्बम, इंजेक्शन के लिए विशाल, एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल मेंस का ये 5वां दिन, मैच नंबर 25। इस बार क्या शानदार ड्रैग फ्लिक, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय, क्या लाजवाब यहाँ पे जबरदस्त अंदाज में ड्रैग फ्लिक के साथ गोल किया इस पेनल्टी कॉर्नर। आइए नजर डालते हैं इस एंगल से, खूबसूरत प्रयास, क्या कहने ड्रैग फ्लिक करके। और दूसरे इस एंगल से भी नजर डालें, खूबसूरत प्रयास, गोलकीपर के
स्टीक से टकराई वहां लक्ष्य के पैरों से और सीधे गोल पोस्ट के अंदर। दिलचस्पी साफ नजर आ रही है, दिलचस्पी साफ नजर आ रही है और श्रेष्ठता भी मणिपुर के गेम प्लान को जितनी तारीफ करनी होगी उतनी कम। और शानदार खेल दिखा रही टीम, यकीनन तौर पे अद्वितीय प्रदर्शन अभी तक इनके द्वारा देखने को मिलता हुआ। लाजवाब तरीके से ये रोमांच इस मैच का आखिरी क्वार्टर का अब 4 मिनट 4 सेकंड के आसपास का खेल शेष। और यहाँ पे पास किया बॉल को मिडफील्ड में, जहाँ जर्सी नंबर 17 बॉल के साथ हैं ओक्राम टीम के कैप्टन मणिपुर के। ओक्राम मिडफील्ड, और बात करें ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि ऑल हॉकी का ज़माना है, मिडफील्ड में हो, डिफेंस में हो, फॉरवर्ड लाइन में हो, और तीनों जगह अपनी भूमिका अदा करते हैं। और काबिल तारीफ है जो प्रदर्शन आज से देखने को मिल रहा है लगातार इस टीम के लिए। गेरिक सिंह के द्वारा 2 गोल देखने को मिले हैं अभी तक। इन 5 गोल में से गेरिक सिंह का दबदबा गजब का नज़र आया है। उनके स्किल और उनके स्टीक वर्क, उनके खेल कौशल उच्च स्तरीय, और यही वजह है इस समय अभी तक के मुकाबले में पूरी तरीके से मणिपुर डोमिनेट करती हुई। शानदार हॉकी की ये झलक, बेहतरीन रोमांच के बीच ये मुकाबला, और 5-0 की बढ़त इस बात की गवाही ये है। इस वक्त मणिपुर की टीम के कोच मौजूद हैं वहाँ पर। अगर बात करें रिनांश मेतेई, मैनेजर अगर देखें एहेंता शर्मा, बहुत अच्छे सोच और चेहरे की भाव भंगिमाएं, बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शित कर रही है कि कितने बढ़िया। अगर बात करें इस समय आदर्श आइडियल माहौल इनके लिए यकीनन तौर पे इस अंदाज में ये खेल अभी तक देखने को मिलता हुआ। बेहतरीन रोमांच के बीच ये मुकाबला, और जिस अंदाज में मणिपुर की टीम पूरी तरीके से अपनी श्रेष्ठता दिखाती हुई, वो देखने लायक। कमाल के रोमांच के बीच ये मुकाबला पूरी तरीके से मैच में अपनी दमखम दिखा रही है। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने की कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास इनके द्वारा, और ये प्रयास देखने लायक। खूबसूरती के साथ यहाँ पे जिस तरीके से निरंतरता नज़र आ रही है इनके खेल में, प्रशंसनीय। लगातार एक और पेनल्टी कॉर्नर, पीसी की बौछार इस हाफ में, सौंधी सौंधी खुशबू अब इनको आने लगी है। बेहतरीन इस समय ये मुकाबला अब देखने को मिलता हुआ। कमाल की हॉकी और श्रेष्ठता, वक्त धीरे धीरे निकल रहा है। जीत की देवी दरवाजे पे मानो दस्तक दे रही हो, विजयश्री को वरण करने की ओर अग्रसर। यह मुकाबला पूरी तरीके से अभी नियंत्रण में मणिपुर के। हुटर की आवाज़ कभी भी आ सकती है, और हुटर की आवाज़ भी संकेत। जी हाँ, इस समय मणिपुर ने यह मुकाबला अपने नाम किया है। शानदार तरीके से ये जीत अर्जित करके बेहतरीन जीत स्थापित अर्जित की है। काबिल तारीफ यहाँ पे कमाल के इस समय ये जीत इस समय, और यकीनन तौर पे जीत के हकदार बने हैं ये सभी खिलाड़ी के कम्बिनेशन, तालमेल, इनका समन्वय। बहुत ही ज़बरदस्त हॉकी, उच्च स्तरीय प्रदर्शन दिखाया इस टीम ने, दिखाया है अपनी ताकत। आइए नजर डालते हैं हाइलाइट्स पे किस तरीके से गोल लगातार किए गए। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस समय टीम के लिए सभी खिलाड़ियों, जो मिडफील्ड से बॉल सप्लाई हो रही थी फॉरवर्ड लाइन तक, वो देखने लायक था, और उसी का परिणाम रहा कि इस समय शानदार गोल के बदौलत ये मुकाबला इस समय अपने नाम किया है। खूबसूरत देखिए इसकी, और क्या शानदार ये डिफ्लेक्शन, गजब का तालमेल, डिफ्लेक्शन अद्भुत। और यही इसे मुकाबले की अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि मणिपुर गजब की हॉकी खेली है, अपने नाम इस समय कर लिया है इस मुकाबले को। जुड़े रहिए काउंटर बॉक्स में, विकास कुमार मेरे साथ हैं, मयूर बरुआ जी। नेक्स्ट मैच के जैसे शुरुआत होगी मयूर जी जुड़ेंगे, और शमीम आलम जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। खुशी आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जुड़े रहिए, नेक्स्ट मैच के एक्शन के साथ हम मौजूद हो रहे हैं।
chief guest of the match being played between Uttar Pradesh Hockey and Delhi, Mr. Suresh Babu, Superintendent Engineering, Chennai Port Authority, member of Chennai Port Sports Council. Welcome you, sir. Please keep standing for the national anthem. Good morning, hello, and a warm welcome to everyone who is joining us for the live broadcast again. This is the Division A match, and what a match it is going to be. It is the Northern Indian counterparts. It's Uttar Pradesh hockey versus Delhi hockey. This is going to be some contest, I'm sure. As all the players circle across, the match officials and the national anthem just goes by. You can already feel the vibe across the air. This is Mayur Barwa behind the mic, and to begin the proceedings of the first quarter of this Division A match, coming all the way live and exclusive from this lovely venue here in Chennai in Tamil Nadu, the Mayor Radhakrishnan Stadium. And it'll be different colors sporting, and that's the team Uttar Pradesh in fluorescent green across this huge venue, and wrapped in orange is the team from Delhi. And I'm doing the commentary from Haryana. So I'm sandwiched actually between both the teams in Delhi and Uttar Pradesh. So Haryana is going to play the last match today versus the home team, Hockey Tamil Nadu. That's going to be the last match, as I mentioned, but huge games coming up. The blow of the whistle and the pushback comes in from Delhi. Wonderful to start off. Look at those colors. Underneath the blue, there is touch of orange and fluorescent green. So from the left to right is Uttar Pradesh hockey. They will be attacking. From the right of your screen to the left, it will be Delhi hockey. Will be willing to score. Have great matches lined up for you. Hockey Association of Odisha to take versus Hockey Maharashtra in the next match from here on. Then Hockey Punjab versus Hockey Karnataka. And as I've mentioned, the last match of the day, Hockey Haryana versus Hockey Tamil Nadu, the home team. Expecting probably some crowds now to come in. This is the 15th Hockey India Sub-Junior Man National Championship 2025. I'm sure there are many probably waiting in the wings as viewers or listeners to know what will be in this Division A match, because these are the top of the table, the top of the cherry who are competing here. Fascinating day, I'm sure. Don't be surprised if you see some very close encounters. Already getting some good attacking play from Uttar the corner, almost into the striking circle. But then you can see 5 of the defenses from Delhi hockey. The moment whoever just opens the account, right to us, that's the chances with both the hands, sideline the goal. I think Uttar Pradesh hockey has been much more in attacking form. And much more, the steps have been much more stronger Delhi hockey. And that's the reason why I say don't go about how many goals have been scored. Look at how they have been
trying to possess the ball, or they have been going through with the paces. Goes out of bounds. 7.5 minutes remaining, and it will load heavily the team who gets a reverse on that stick right on the center. From the center forwards, where he gets a diagonal pass along the carpet. It's just a very nice pass inside the striking circle, very near to the goal post. That is Romit Pal from Uttar Pradesh. He knows the chances was there from the left flank, tomahawk. Oh no, goes very upishly through, using the longest part of the handle. That is the captain, Ketan Kushwaha, just in number 11. Ketan, so he was the one who tried it very hard. They have got 1 goal to denim, and I'm sure he'll not let this easily slip by. 6.5 minutes, in fact almost 6 minutes remaining on the clock at the end of the first quarter. Match number 3, first match of Division A here on day number 5 of this 15th Hockey India Sub-Junior Man National Championship 2025. It's been a lovely passage of play, nicely scooped up, 1 bounce into the striking circle. He collides, just in number 3, I believe. Sunil Pal collides with the goalkeeper, almost forming like a huge wall against the ball romping towards him. I don't know how much it would have been implied for him. Uttar Pradesh has been on the charts very quickly, might have just won, but again very strong how they are going in. The honors of play, it's a nice diagonal pass going very strong against towards and beating through, and you can see they've been putting all the skills. There have been aerial passes, there have been scoop, there have been the long strokes, and of course there is the goal also. So all in all, they have been using every tactics up their sleeves in the very first match to shape it up and to bring on the heat very much on Delhi. It's a nice scoop, very much in the air. He will be attacking from the right to the left of your picture. Very intentional to make the ball go out of bounds. Speaking of one area where you must be seeing from different quadrants of goals, raining goals. That's we need, isn't it? Some handful of spectators or other players I can see on that seating area, as I can see that camera probably panning little upwards. We need the crowds, and don't be surprised if you see some very good crowds coming in for the home team Hockey Tamil Nadu when they play the last match. So the whistle comes in on the sidelines, gives a throw down. It's just about uniformly letting the time pass by now. Still over 10 seconds. Can just pass on. They know that the time is just a handful of seconds remaining from here on for the blow of the hooter. And is this a penalty corner? Do you see a penalty corner? Yeah, there you go. Just 1 second remaining, and we have the penalty corner. Just 1 second. Oh, I've said this is going to be some competition between two of the teams. Don't look at the scorecard. We won't give you much of the action that has unfolded here. Uttar Pradesh hockey now again with that second remaining, they would love to thrive with the 2 goals in their name. Of course, of Delhi won't like to do that, going into the shadows, but that will be just 2 minutes. But that is all for taking. Whistle comes in, insertion comes in, the hooter also played. That was just a second. As soon as the insertion came in, before the drag, the hooter also came up.
But there was a chance. It has not been taken by Uttar Pradesh hockey. So at the end of the first, looking to score, going into the 12th minute of this section at the moment. It will be a nicely locked pass down. They can have this for themselves. A huge one. Already building up to be a very nice match between these northern Indian counterparts. This 15th edition of the Hockey India Sub-Junior Man National Championship 2025 from this Mayor Radhakrishnan Stadium here in Chennai in Tamil Nadu. So some oohs and ahs moment. It's a long stride along the carpet from Delhi hockey. Somewhere behind from the striking circle. That's why I couldn't possess it much. We'll only try to benefit each other. But because Uttar Pradesh hockey now again will fancy that, still remained at 1 with the field goal coming in. So are they now going to convert this? We'll have to see. Delhi hockey all in readiness to stop it by along with the goalkeeper. Rigo insertion comes, stops, drags. It's still getting a commotion. Umpires करती हुई यहाँ कप्तान केतन कुशवाहा खेल रहे हैं। दिल्ली की टीम को इस खिलाड़ी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। जर्सी नंबर 11 के ऊपर याद रखेगा इस खिलाड़ी को। और ये तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बॉल लेके आगे बढ़े और बढ़ा दिए साथी खिलाड़ी के लिए। अब डिफ्लेक्शन गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। बहुत संभल के खेलना पड़ेगा दिल्ली की टीम को, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। शिवम यादव, कृष्णा धानु की खतरनाक सधे हुए खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से जो खेल रहे हैं। खतरनाक स्थिति। डिवीजन ए का ये टीम है और इस डिवीजन में मैं बता दूं यहाँ पर टीम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिटिंग का इशारा। दिल्ली की टीम को बहुत सोच समझ के खेलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के विरुद्ध। उत्तर प्रदेश 2 और यहाँ पर दिल्ली 0। दूसरा क्वार्टर 2 और यहाँ पर दिल्ली 0। दूसरा क्वार्टर का खेल। हम परसेंटेज की बात करें पोजीशन ऑफ बॉल को, तो ज़्यादा उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अपने पास बॉल को रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल यहाँ पर मधुरेखा को क्रॉस करते हुए लेफ्ट फ्लैंक से बहुत तेज आक्रमण करते हुए बढ़ा दिया। लेफ्ट विंगर किया गेंद एक बार फिर यहाँ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के बाहर गोल लाइन का। अभी भी टिश्यू के ऊपर अच्छा खासा दबाव। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, इसको क्या गया ऊंची उड़ती हुई गेंद, बॉल लेके निकलते हुए यहाँ पर वो बेहतरीन तरीके से संभाल लिया है दिल्ली के खिलाड़ी ने। 0-3 की स्थिति, दिल्ली 0। इंडिया सब जूनियर, ये गोल, चौथा गोल। इन बहादुर रन बौखड़े को रोकना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को। जो विजयी घोड़ा दौड़ रहा है उत्तर प्रदेश का, इसको रोकने के लिए यहाँ पर दिल्ली को एक रणनीति के तहत खेलना पड़ेगा, प्लानिंग के तहत खेलना पड़ेगा, तभी इस मौका यहाँ पर। गेंद पैसे टकराई, कैरेट हुआ, फ्री हिट मिला दिल्ली का। फ्री हिट बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए मधुरेखा के पास, दिल्ली के खिलाड़ी के पास बॉल क्रॉस करते हुए डॉटेड लाइन के पास पहुंचने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के डॉटेड लाइन के पास फ्री हिट मिलता हुआ धीरे धीरे एडवांस हो रही है दिल्ली की टीम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सरहद में। लेकिन स्थिति 0-5 बहुत ही मजबूत स्थिति में इस वक्त अपने टीम को पहुंचा दिया है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने। एक सुखद स्थिति का एहसास हो रहा है या निश्चित रूप से यहाँ केतन कुशवाहा जो उत्तर प्रदेश के कप्तान है सोचते होंगे और उनके जो कोच हैं देवेंद्र पाल के लिए एक खुशी, एक सुकून का इस वक्त पल है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम 5 गोल से आगे। और यहाँ पर खेल के निर्णायक ने मदद मांगी है वीडियो अंपायर से। तो 0-5 की स्थिति, 1 मिनट 56 सेकंड का समय बचा हुआ है। जैसा हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे थे, मयूर बरुआ, खेल का आखिरी मिनट में मिला था पेनाल्टी कॉर्नर उत्तर प्रदेश को। पहले क्वार्टर का आखिरी मिनट का समय था। तो इस तरह से लगभग
1 मिनट 50 सेकंड का समय बचा हुआ है। यहाँ पर स्थिति उत्तर प्रदेश ने बहुत ही दयनीय करके रख दिया है दिल्ली का। कहा जाता है दिल्ली, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से ताबड़तोड़ हमला किया है, ये पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया गया था खेल के निर्णायक को, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी बॉल लेके आगे बढ़ रहे थे, बहुत ही खतरनाक रूप से रोका गया था। लेकिन पहला गोल भी जो उत्तर प्रदेश की टीम ने किया था, शाहरुख अली ने किया था, जर्सी नंबर 9 ने, वो भी पेनल्टी स्ट्रोक से हुआ था। और यहाँ 5वां गोल के बाद 6ठा गोल होने की स्थिति में है अगर ये पेनल्टी स्ट्रोक होल्ड किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है। निगाहें गोल पोस्ट की भी यहाँ पर 15वीं हॉकी इंडिया से निकला। पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में अर्जित करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकती है, अन्यथा खेल तो हाथ।
mostly getting converted. Also, it is stroke today. First one coming in the form of the penalty stroke. Who would have thought within 6 minutes? Then now, just trying to get a very close insertion inside the striking circle. Oh, the ball misses nearly few of the heads. You have to be not easy. It was not heading to the goalpost. It was heading to the heads of the opposition. Scoreline still says 6-0. Heavily. 4 more matches to be played today in this division. See some nail-biting finishes also. That's what we need coming your way. This time it's Delhi hockey. How many chances they can create for themselves will be the question. Have to keep on grooming themselves up, keep on being attuned to the culture of how they're bringing the match out for themselves. For Delhi hockey, there are several questions might be asked, but you cannot give in under the pressure. Fabulously close. I could tell you all the goals. First came in the form of a penalty stroke, as I mentioned, from in the 5th minute. That was from Shahrukh Ali. And then Romit Khan in the 20th minute, courtesy a field goal. Interesting field goal in the 20th minute. And then 23rd minute, Dhanu Karan, another penalty corner. In the 25th minute, again Romit Pal, a field goal. And the 26th minute, Sunil Pal, a field goal. And guess what? Another penalty stroke. And that was when Mr. Shami Malam was there behind the mice. He knew how close it was. It comes once in a blue moon that a team has 2 penalty strokes. You have penalty corners. Rahan Atharva Pandey, he had 4 penalty corners out of the 8 goals. 4 penalty corners. So for his name, what huge statistics. Sitting right at the top with 10 goals is Ankit from Uttarakhand. Remember, going to Uttarakhand for the national games. So what a lovely moment. What an occasion it was. The 37 national games which happened at Uttarakhand. Hockey being one of the sport. And Uttar Pradesh now trying to get an answer. Penalty corner. No. The boys from the orange, go behind, wear your mask, because it's for you to try and save a goal from happening. Right at the center. Probably it's an infringement coming in from the goalkeeper. But whatever it is, it's regrouping of the Yellow Army Uttar Pradesh hockey, who are 6 goals ahead, and now will try and strive for goal number 7. This is already going from that to us. Last quarter, almost 8 minutes remaining. It's already just going not what Delhi hockey was hoping for, but they knew, of course, they were playing with one of the best team in the championship in this Division A. Blow the whistle, insertion, stops, drags, and the ball gone out of bounds. I thought there was celebration coming. That was Mohammad Atif Raini, and that was the captain, Ketan Kushwaha, with the insertion, romping the curve. But again, we are getting ready for the penalty corner again. It will be a slow move up. It comes, and this time through the stick clinging. It is Harsh Pratap Singh. And again the whistle comes in. He's not satisfied. Umpire. He says, okay, I want to have a relook of how we have done this. Yesterday, I remember, if I remember correctly, it was Rajasthan probably, who had 4 chances and finally converted. Insertion. And a drag. It's a flyby. Second chance from the right. Looks like the captain. Is it a captain or is it Shahrukh? Is it Shahrukh Ali or is it the captain? Have to check from the right.
It's jersey number 9. It's Shahrukh Ali. Yes, finally has a field goal to his name. 2 penalty corners and now a field goal for Shahrukh Ali. Jersey number 9. What a player! Bullet. Absolute bullet. You give him a chance, he hardly stops it. Not for a conversion. He did get a chance. Few minutes striking circle. Don't be surprised if you see one. You turn. Do you see one? Is it a goal coming? Happy faces. Probably it's a goal, or has it gone absolutely behind? Where is it? Where is it? Stops by, aims at the goal post. I don't see the ball. Has it come in? Very behind, and that's why it was a sarcastic smile. The scoreline still remains at 7, but how heavenly was it close for goal number 8? We are trying to get it streaking upstairs. Let's see what transpires. Trying to a goal has come in this quarter to make it. How many times does it does the exercise? How many times does it does the exercise? Again, the umpire says it's a penalty corner. And trying to explain up the things, the captain finally subsides. He says we are ready to wear the mask. Man National Championship. And also a huge thank you to the Sports Authority of India and the Ministry of Youth Affairs and Sports for getting in sync for the smooth success of this championship. This is an amplification and the showcase of the abilities of the sub-junior category. From here on, we romp left, try, and the goal comes in. Do we get excited? Probably has come from the blade of the captain, or is it Shahrukh Ali again? It seems like, yes, jersey number 9, Shahrukh Ali at the business again. Or has it got a deflection from some other player? Has he given the direct throw? Yeah, it has gone through a deflection. Couldn't figure out who. Probably jersey number 3. 2 penalty strokes, 1 field goal for Shahrukh Ali, the man of the moment. He's been absolutely outstanding today. Oh my goodness gracious me. Number 8 comes in. Make the figure go to number 9 for Uttar Pradesh hockey. These are absolutely regulation for Shahrukh Ali. Goal number 4. 2 penalty strokes, 2 field goals for Shahrukh Ali. There you go. He just had to let probably the child eat the cookies in the morning. That's how easy it was for Shahrukh Ali. And absolutely third quarter. Blow the whistle inside the striking circle. Is this the chance? Is this a chance? Umpire says no chances. This chance for penalty chance. Is this a chance? Umpire says no chances. This chance for penalty corner. He immediately says it with all my belief. I know this is a penalty corner. He puts up his sleeves. He is a soft guy. Yeah, I love this umpire. I love this smile. One of the qualities of an umpire in situations like this, or the penalty corner insertion. Can they flip their page from 0 to 1? In front of them is Uttar Pradesh hockey with 9 goals. There we go, inserting the track. Not good enough. On the corner. Really still trying before the blow of the hooter. They want us to get it one. Umpire is again very busy. And it won't be easy, let me tell you, because the sun is now completely out. It's hot, it's humid, and generally in South India you get it, isn't it? Hot and humid, might be from Uttar Pradesh. No, the ball goes out of the striking circle. We're still counting only the seconds now. Double figure seconds remaining here. Can Delhi open their account? They couldn't convert the penalty corner, but they'll try to put Uttar Pradesh at least conceding a goal here. Uttar Pradesh again, lovely pass, nice diagonal pass inside the striking circle. The whistle comes up. Some infringement probably from the legs. Uttar Pradesh
Uttar means answer. As I've said, they're answering probably one of the best. Oh, what is slow? Well done from the goalkeeper. But again, was trying to sweep it very strongly. Just 2-1. And there we go. Blow off the hooter. Only will signify the end of a crazy, crazy third quarter. But again, from 6 goals, it has gone up to 9 goals to none for Uttar Pradesh versus Delhi. A very satisfied looking coach there comes out to say that you have done well. But look at his face. प्रदेश ने दिल्ली की हालत बहुत ही खराब टक्कर होने वाली है महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच फिलहाल यहाँ पर इशारा है खेल के निर्णायक का रंधावा ईश्वर जो कप्तान है बात कर रहे हैं। आज मुकाबले का एक पहला मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच। पास में ही सुंदर इंटरसेप्ट से बॉल के आगे बढ़ते हुए दिल्ली के खिलाड़ी एक बार स्ट्राइक तरफा मुकाबला हो गया है। दिल्ली की खिलाड़ी इस मुकाबले में खड़ी नहीं उतर पाई। दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश की टीम समय के क्रांति तो परिस्थितियों से जूझ रही है इस वक्त यहाँ पर दिल्ली की टीम। वो परिस्थिति नहीं बन पा रही है जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। एक तरफा कहा जाए तो मुकाबला हो गया है। उत्तर प्रदेश की टीम ने पूरी शक्ति को झोंक दिया और रक्षा पंक्ति को यहाँ पर हेठ रख दिया। जहाँ तक It's a penalty corner. We have been witnessing a brilliant attacking game from Manipur. All set. The second battery had taken that, and that powerful hit for jersey number 15 of Kerala. It's now free hit for Kerala. Nice interception by Manipur once again. A slap shot. Trying to interrupt jersey number 15 from Kerala, but overcoming that at the baseline. Once again the possession. Now here ends the first quarter. The domination taken by Manipur with a goal taken a lead over Kerala. What a fantastic game by the
Welcome back. The second quarter starts here, and I'm Swarnalata, your commentator. Along with me, Mr. Shamim Alam continues the second quarter commentary. Heartily welcome, Shamim. So one more pellantry corner for Manipur. देखो अच्छा एक ओके वो क्या कमेंट्री भी कर रही है देखो भाई को It's another opportunity we have seen for Manipur after taking that goal. So very often they are attacking the Kerala. मेरा नहीं आवाज आ रहा Hit taken by Kerala. Sideline hit in for Kerala once again. The ball in possession with them. They have to come back. बड़ा करो सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा 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 हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा फिर गूंज उठा है शंखनाद पारा है लक्ष्य को निर्विवाद कभी रुकेगी नहीं कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का हॉकी इंडिया come on India let's win this फिर गूंज उठा है शंखनाद पारा है लक्ष्य को निर्विवाद
कभी रुकेगी नहीं कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से इस मिट्टी की संतानों का, अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी जन जन के सपनों की भारत के सम्मान की जय जय हो जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद पारा है लक्ष्य को निर्विवाद, कभी रुकेगी नहीं कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on इंडिया। The chief judge of the match played between Odisha and Maharashtra, Mr. Nelson, former ex-councillor of Chennai Corporation and CEO member of Chennai Actor Association, and Mrs. Deepika Murthy, played of World Cup, Asian Games medalist, Asian Cup medalist, Commonwealth and Indian international goalkeeper. Accompanied by Robert Jones. Good morning, hello, and a warm welcome to everyone who is joining us again for this
fourth match of the day here on day number 5 and the second match of this Division A encounter. This is going to be the Northern Indian parts again, all the way from Odisha versus the team from Maharashtra. This is going to be another fascinating battle. Uttar Pradesh hockey have already trashed the capital, Delhi, by 10 goals to 1. Just a goal for them. It came in a very last minute of the last quarter. Behind the mic, I am your host commentator Mayur Barwa, bringing you all the action as I can see here from this day number 5 of this 15th Hockey India Sub-Junior Man National Championship, coming all the way live from this wonderful venue of this Mayor Radhakrishnan Stadium here in the capital city of Chennai from the state of Tamil Nadu. Those are the boys from Odisha on your screen in the white and violet. In the other, that was the corner from Maharashtra. It will be again a very interesting game of play here as we are getting all set and ready, and the whistle comes in also for the play to get started. Left to right, we're getting started. It's a nice pull-up. Odisha immediately pressing the attack button versus Maharashtra. Maharashtra in orange and white, and Odisha in white and violet. Some good gameplay. This Division A already boasting of some huge names. Well, last 10 minutes, but we already have the penalty corner. Let's see what happens from here on. It will be for Maharashtra to get the insertion down here. So can these boys just go up and pull the strings through first for the first goal for them? Insertion has been done, and the drag not proportionate to what it should be. All runs helter skelter. Few of the boys went there trying to remove the mask, but in quick fashion, it's the boys from Odisha into the other corner, into the striking zone. How quickly it mops up. You can see just 1.5 minutes to go by, and it has already started off some convincing manner.
match is going by. No goals as yet in sight. So less than 11 minutes now remaining in this match. Have to just get some good crossover. It's already putting up to be a very nice one. With just countless attacks, which would only just help most of the equation. It'd be good to see if they can also just make some small little adjustments here. With Odisha now getting very stronger, you can see almost evenly finding the main striking area. Pushing some concerns again into the quadrant of hockey Odisha. But some lovely bit of rebound nations also happening. With both the teams yet to open their account. And then it will only be helpful if all of them can come under one umbrella and try and see if they can pick up those finer nitty-gritties that Uttar Pradesh hockey have just displayed versus Delhi hockey. Absolutely had no chance, almost getting a 10-0 victory, only for Delhi to be able to open one account. It's been very, very tough going for them, because Uttar Pradesh absolutely showed brilliance of the way they have been practicing very hard. It's just the sub-junior category, and that will tell you the volumes of bench strength that Uttar Pradesh possesses. And now Odisha also, we all know what the state of Odisha has given to hockey, great infrastructure, and also the captain of the women's national hockey team, Salima Tete, is also from there, and now we can just pull it through. In fact, she's there from Jharkhand. Some great names cropping up in both the categories, with male, female. That's a wonderful state. And it has been such a great work coming in. That's why we have seen everything. The result is there to see. More and more, when the boys will go out on the field to play, they'll get the test of the best. And this is one of those platforms which will help them to display the best of their hockey talent. When you talk about talent pool, we just pull it out from different corners of the country. And we are huge runners, and we're a huge nation loaded with different sporting talents, and hockey being a national sport. We are really in here from some great justice to the talent. At the moment, right at the center is hockey Odisha trying to lap it up, and a huge aerial right behind his colleague was standing right at the edge of the line. It went right above him. Less than 6.5 minutes yet to open their respective accounts. Hockey Odisha and Maharashtra hockey. But I'd say 50-50 at the moment, with the Orange Army of Maharashtra also trying to go and surge the energy forward. Having great guns, with the way they've been influxing their energy, their talents. Hockey Odisha, and that's why this Division A will keep on cropping up some good names. We'll be having Hockey Punjab versus Hockey Karnataka after this match.
And then finally, to top it up, the home team, Hockey Tamil Nadu, will be playing versus Hockey Haryana to sum up the day here. And we had some crazy results. Chhattisgarh Hockey winning 6-2 versus Hockey Bengal. That is Division B today, the first match of day number 5 today. And then Manipur Hockey clean sweep 6-0 versus Hockey Himachal Pradesh to keep their momentum alive. 4 out of 4 wins from Manipur Hockey for the boys in black. If someone are fans of Hollywood, the man in black, the boys in black. Oh, as if the management is staring at me. What about us? Love to open their account. But again, flip through the pages. Hockey Himachal, 3 out of 3 losses for them. And then Uttar Pradesh Hockey 10-1 versus Delhi in this Division A encounter. 3 more matches remaining. We're playing the second of that. Opening up to the 4th match of day number 5. Hockey Odisha inside the striking circle, right from the corner. 3 of the defenders have to breach. And a penalty corner being signaled by the umpire. So Hockey Odisha will have the advantage now. The insertion, drag, getting flicked through. Might just be one of the opportunities they've been waiting for. We don't have to look too further. We take an inspiration from Shahrukh Ali from Uttar Pradesh Hockey. 4 goals for him, 1 field goal, 1 penalty corner and 2 penalty strokes. He started off his penalty strokes, and Uttar Pradesh Hockey starting off the campaign with a penalty stroke. How many times do you see that? But coming back, Hockey Odisha now with penalty corner advantage. Insertion, stops, drags, gets rebounded from the base of the goal post. Coming out of the striking circle, goes back inside the striking circle from the right flank, trying. It's getting little frozen, little leg. Couldn't figure out, but there I can see the ball going out. This will comes in. They survive a scar. Hockey Maharashtra. First quarter, 4 minutes remaining. Who will get into advantage? Odisha still trying to get the ball, sneak past the goalkeeper. Oh, penalty corner again. Busy umpire, Mr. Busy. Asking questions. Not going upstairs, but the music again comes behind it. Whenever that familiar music is being played, you get to know that it's a penalty corner or a penalty stroke. As in a huddle, it is Hockey Odisha again will try to accept what happened in the past. They can now do it again. Can they do it? It will be number 8. It will be Lakra Salman, the captain. Will be inserting it. No. Not ready as yet. You cannot throw up your face marks. Let's wear it again. Let's look through our grills of what's happening here. Again, get it. Whistle comes in. Insertion. Flat. And the drag. And the goal for Hockey Odisha. As straight as you want. You don't need any geometry boxes to see how perfectly in line, how a straight line was the drag coming in, and pulled it up absolutely wonderfully well. It looks like it's Dilip Hemrom with the goal who dragged it. Have to get the official figures, but the score line have opened up for Hockey Odisha 1 and Maharashtra Hockey 0. 3 minutes to go by for the signaling of the hooter. How many penalty corners will keep on coming? The third one now. We just had a goal, but not so satisfying at the moment. Another one against Maharashtra. Oh, this is really climbing up to a very different decibels. We have to really be very, very truthful. They cannot make these chances coming and again against their name. It's looking very dreadful now for Maharashtra. What has happened has happened. They need to focus on this one to stop, or else the pressure will be double going in to the end of the first quarter. Insertion
and a stop and a drag. The ball goes out of bounds. It's a relief of the highest order for sure for the boys in orange, Maharashtra. Less than 3 minutes now. And you can set the footing. The tone was there. As soon as he receives it, he bangs it. That's what it needs, isn't it? Get it done. Maharashtra now skying up a chance. He loops it up in the air. Probably gets rebounded from the glove of the goalkeeper and goes out of bounds. 2.5 minutes. The Uttar. We joined in the commentary box by Mr. Vikas Kumar along with me after this quarter. I'm sure Vikas Kumar has himself collected a huge fan base. You love your voice, isn't it? Vikas Kumar has this natural flair of caring and just pinpointing everything. I'm a fan of Vikas Kumar. I'm sure there are many other listeners also who wants to hear the Hindi commentary. And our Mr. Umpire wants to hear himself saying that it's a penalty corner. First it was for Odisha and now it is for Maharashtra. Can they make it 1-1? 2 minutes remaining. Just 2 minutes. Just think it hard, dwell hard, think harder of who needs to do the insertion, who needs to do the drag. You need to break it versus Odisha. Not only about the goal, but the way they have gone in their business. That is also something they have to slide by. But not impossible. The blow of the whistle comes in. Where is the drag coming in? Inside the striking circle, the ball goes out of bounds. Maharashtra cannot snatch the chance of making it 1-1. The scoreline still remains the same. 1 for Odisha, none for Maharashtra. Has the ball gone actually? It's a little bit lagging, probably gone right into the body of the goalkeeper. 1.5 minutes. The first quarter. It's 11:30. It seemed like we're talking for eternity. That's the soaking in of hockey from this lovely venue of Mayor Radhakrishnan Stadium here in this capital city of Chennai in South India, near the state of Tamil Nadu. It's been a gorgeous weather, you'll say, but be there on the ground, you'll feel the heat. We are doing the online remote commentary. We are blessed to be probably under the fan to go it up. But for some crucial moments when you play up the sport, probably you don't feel the heat. Less than 50 seconds now by the clock. From the left, Odisha trying again. No, cannot. Ball goes out of bounds. The seconds goes triple by. And it will only eventually help it up. And for all the listeners, I might have to continue for the second quarter because your favorite, Vikas Kumar, might just be joining a bit later. So just hope his English commentary suits your nerves because probably you might be used to English Hindi. That's 3 seconds, 2, 1, and here we go. You have just got the hooter sounding up to end the first quarter. I would say still favorably Maharashtra have done really well. They could have done well had they converted that penalty corner. But again, Odisha will be now going under the rim of cool sector as this first quarter has come to an end. I'll be back again with my same voice in the second quarter. Don't go anywhere. It's 90 seconds to go by for the start of the second quarter.
And welcome back again to the second quarter of this fourth match of the day here on day number 5. Behind the mic, I'm Mayur Barua again. Wait a while Vikas Kumar will try and join back in action. The scoreline 1 for Hockey Odisha. Maharashtra yet to open their account. But it's been a fabulous journey, I would say, to be honest. It's been very fascinating. We still have lots to play for in this match. Still the second, but Maharashtra really have to tighten their grips, their nerves in this game, because by the look of it, Hockey Odisha has been going very well. The attack has been venomous. They've got one goal, but had that goal come in at the end of the second quarter, at the end of the first quarter, beg your pardon, while Maharashtra did get the first chance to convert the penalty corner, the story might have been very different. The pressure would have been right back on Odisha. Continuing, Maharashtra just dragging there. You can see the swamp of army from Odisha. Was calling for a foul play, but nothing, no whistles from the umpire. The ball goes through inside the striking circle. An advantage for Odisha. 4 of the defenders, in fact 5 of them from the Orange Army. Do we hear a whistle coming in for penalty corner? Goodness. Oh, again Odisha will come in a huddle because he'll get the penalty corner. Oh, how regularly. You might be thinking, are we watching highlights? But these are not highlights. These are live pictures, because it is coming up so much regularly, almost every 2 minutes. You might just be seeing, are we watching a highlight of the previous quarter? But no, this is live. The second quarter. Less than 3 minutes, and we are standing on the verge of a penalty corner again. Hockey Odisha ready for the insertion. Blow of the whistle comes in again. The stop, and not sweeping too much like a broom. Still chances trying, and this will not fructify for Odisha. Trying to look at the replay. Apologies and for the inconvenience of those pictures getting little stick by, but again we're trying to get the best of the technology provided for you, so it's always good for you to bear with us for the inconveniences. But again, you love the game, isn't it? So you need to stick by. Inside the striking circle again, Hockey Odisha swamping right from the corner. 2 of them for Maharashtra, also trying to get on top of Odisha. The ball goes out of bounds, very near to the center of the court. Here, ball going out of the playing area. Less than 5 minutes has gone by. Look at how the time just goes. Sometimes you're thinking, are you playing in a parallel universe? We have just started and the time is just gone out. Those are all about seconds, isn't it? That's what it is. Users go to the social media, use the hashtag #IndiaKaGame. Get right behind Instagram, Twitter, Facebook. Spread the game, spread the knowledge. Write something about the game of hockey, how you support both the gender, because the Women National Championship is also going on at Kakinada in Andhra Pradesh, where our dear friend and a very knowledgeable Mr. Shami is doing the commentary along with Miss Swarnalatha. She's also a very, very well-known name in the hockey circles. She was a Kho player also, Miss Swarnalatha, and she is doing there. And what a befitting occasion, as we have a female commentator doing the commentary for women there. That match is also going on very well there. But coming back here, we're at the Mayor Radhakrishnan Stadium here in Chennai in Tamil Nadu. This is the Division A match, the clash of the Titans for many, I would say.
because some huge names presenting here in this Division A. Punjab, Karnataka, Maharashtra, Odisha playing at the moment. Uttar Pradesh, Delhi, all ready. What competitive battle at the end. The crashing 10-1 might not be telling you the whole story. And if you compare Uttar Pradesh and with these two teams, I think Uttar Pradesh will clearly still will be the top, not because of the resounding victory, but also because of the way each of them were going so strong. And of course, individual picker will be Shahrukh Ali, 4 goals through penalty strokes, 1 penalty corner, 1 field goal, and 2 goals. The last 2 goals came in within a minute and a penalty corner. Hockey Orissa swamping the umpire with questions, arguing upstairs. They're really not liking it. The Maharashtra have got it, and we are going. The box signal. Now it's for the TV umpire, a man behind the screen, to look at how close as possible to see if he sees something coming in there. 9.5 minutes to go by. We have gone upstairs to find out whether Orissa will have a smile in the end or Maharashtra retains the penalty corner. The scoreline is 1 for Hockey Orissa versus 0 for Maharashtra. This is very interesting. There's no penalty corner. So the review has been upheld there. It will be a stick-on to start by from Maharashtra, even if it is not their penalty corner. Orissa getting very strong again here, going side by side from the corner, running again. Be putting through. Look at how the ball just gets tossed up like a sandwich, like an omelette, I would say. From beneath, it comes swamping left and right. It's crazy affairs, and the sound of the stick also comes in to tell you that the contest has been closed. Where is the goalkeeper? Oh, he is a lucky fellow for sure. Look at how close Maharashtra came in, and this could have been disastrous for Orissa. As Suraj Deepak Shukla from Hockey Maharashtra was very close to get it and to flip the numbers and to flip the page from 0 to 1. Okay, Orissa again gets a penalty corner. Now he'll be tired. Now he'll be tired of routinely seeing the penalty corners coming one after the other. Okay, Orissa were the one who were appealing for the penalty corner which should be coming. We went upstairs, it was not given. They won the review and now they have got a penalty corner for them. Very interesting. Orissa getting the best of all now at the moment, and they get it. Can they make the pressure go to 2 versus Maharashtra? All to see. The whistles comes in, waiting for the insertion when, and closing by. The drag is there. Probably has hit the full body force of the goalkeeper. The helmets comes off from Maharashtra. Much better from the goalkeeper this time. As you look at the replay, sweep it up.
What a slap! What a slap! And then he also takes a chance from the reverse slap into the body of the goalkeeper. So very well done. Goalkeeper from Maharashtra is Dharma. Captain is Vijay Pake Ganesh Kumar. Goalkeeper for Odisha is Barla Jagadi. Lakra Salma is the captain. The team coach is Praful Tirki for Odisha. And from Maharashtra, the coach is Rakesh Kishore Sukhdeve. 6.5 minutes. That's Sukhdeve. That's the coach, Rakesh Kishore Sukhdeve. Just trying to put the finer imprints of whenever you are needed. Oh, one of them has gone up. He'll be joining the army now. Can he make a difference? Have they pinpointed the best to come up, because it is very much needed into the second quarter. The scoreline still remains 1. Nothing much has changed the fortune from the first quarter. And 6 remaining here. Got a chance to come up. For hockey, Odisha. With the best of the chances, they would say. And again, not going easy for Maharashtra. Having hockey Punjab, hockey Karnataka after this one. And then Haryana plays versus the home team, hockey Tamil Nadu. It will be such a good game changer, I believe. We are playing with the host association. The pressure will be very much on Tamil Nadu when you perform probably in front of your own home crowd. I'm sure there will be some dignitaries coming in. We already have dignitaries coming in just before the national anthem is being played, taking off with the players, the hands. So much of motivation comes in to fight for the ultimate glory for the championship in sub-junior category. Watching the 15th Hockey India Sub-Junior Men's National Championship 2025. So majorly thanks to the Sports Authority of India and the Ministry of Youth Affairs and Sports, Odisha, Apollo Hospitals, those medical care. All the players have done very well, and don't know how much care Odisha will do. He has been robbed by Maharashtra. But oh, crazy. He was there like a crocodile, and he was almost being bitten by 6 different species. What a crazy view it was. Huge amount of orange. It's like an orange juice coming across him. But how quick you have to be with a stick. Seriously, your technique is something which gets questioned sometimes when you just go in there. But unfortunately, it was not enough to try and middle from the striking circle into the goal post. It's still a very goalless quarter. Let's see what happens in the next one. You're still trying to be the best of yourself. Is this another one? Oh Lord. Oh Lord, this is another penalty corner. Oh, this is something which hockey Odisha this time seriously they need to just pounce on this opportunity. They've not been able to do before. Can they do it this time? Again, when you know this is probably trying to be what you are not being able to do before. Can they do this time? Blow of the whistle comes in, just waiting for the insertion to happen.
And is it a good drag? Kane gets this, what similar thing has happened, gets into the body, goes out of the striking circle. 3 minutes to go by for the clock here in the second quarter to end the half time. And Orissa from the reverse slap. Thior and Shami trying to be withholding the opposition's timer. It's only the whistle which will just get them out of this regroup collection, or it was simply a very different magnitude just for the Orissa army. 2.5 minutes, goalless at the moment. I'm sure Orissa might just be satisfied. And then Maharashtra, in this quarter, if you probably balance it out, you might just be thinking of what it is going home. That Maharashtra just probably, I would say, around 10-15 percentage much better than what it was in the first quarter. To delay much of the things that Orissa was trying to create a problem for them after that first goal. The Maharashtra have done really well, relatively really well, to not make them come too much to the striking circle, though there has been some good chances very near to the jaws of the goal post. So again, another one into the striking zone here is flipping by, and the Maharashtra did really well for not to go in where it needed to be. Again, it's all about how the goalkeeper has performed from Maharashtra. Dharmai GS is the goalkeeper for Maharashtra. A minute remaining from here on. Just a minute. As we count down the seconds, nothing much comes in from Maharashtra. They've been trying very, very hard, but this is the zone where Orissa is looking out to score to the second half, after the second quarter, and of course the tables will change, and Orissa will be then stroking towards the left end of your picture. Sometimes you feel, do you see a heated argument coming in? Which we had a yellow card, we had a green card, and then the greenery comes in from the back of the pocket, and this is for Orissa's jersey number 13, Eka Ranjan Paul. His name was not there in the initial playing 11. He came in from as a substitute from the bench, and now he has to go back to warm the benches again. So Eka Ranjan Paul from Hockey Association Orissa had to just go back and only see the match from the sidelines for a while, for a brief period. And there you go, the hooter has come up. It's been a goalless quarter, but a quarter which was filled with hope, a quarter which was filled with probably a determination to go up as close to the scoring circle. But this next 10 minutes which will come up, it will provide them some solace as they go into the shadows and just get more energized, get re-strategized. Behind the mic, I'm Mayur Barwa, and we will be back in the third quarter in 10 minutes time. So you don't go anywhere, you stick by with us.
And welcome back to the third quarter. Okay, Orissa 1, Maharashtra none. Behind the mic, I'm Mayur Barua, your host commentator. So, what a good gameplay we had. No goals being scored in the third quarter, in the second quarter. So still goalless. But Hockey Orissa have already given us a good showdown of how they have been approaching in this championship, of how they will look to clear up every probably if there are any remotely any critics to try and silence them. But not far behind is Maharashtra. They've been really trying to come in terms of the kind of brand of hockey that Odisha is showing up. We're watching the 15th Hockey India Sub-Junior Man National Championship 2025, coming all the way from this Mayor Radhakrishnan Stadium here in this wonderful capital city of Chennai in Tamil Nadu. Hot and humid, the conditions. And thankfully, you don't have to play it up the whole day for the players to take a breather. But how much breather can you get when they are so much close to the striking circle? Which, with every thrust of energy, with every thrust and burst of power, you seriously feel like every now and then there might be a goal coming in. But again, patience, building up your skills is the key also in such kind. It's been very hard. Don't be surprised if you see a goal coming in this quarter. I mean, strikingly trying very, very hard. Put the names, the correct ones, of course. When you want to get your name so close, it might be a very
There you go. Hockey Maharashtra have done it. They've got the goal they want. Scampering, falling down. Look at how many assists they've got, and then the vacant corner. Goalkeeper didn't see much of him, but now it will be satisfactory for them now to see that 1-1 coming in the 10th minute of the third quarter. Penalty corner. Maharashtra have just got a goal, but against their name will be a penalty corner. How heavenly this seesaw battle continues between Odisha and Maharashtra. If one gets it, the other also gets it so quickly. But how many penalty corners? I don't know how much the count has come in. But again, this has come in for Odisha. It has been really, really good gameplay. Superb to see. And that's why this match is again fascinating to see this encounter, the third quarter. Starting through with insertion. Oh, then let me start by again. Wants to go upstairs. Wants to go upstairs. But again, the flyby zone. Still trying to get the review done. Umpire asking them to just back off a bit. So then probably you can have the assistance probably from the technology coming in. What he's trying to say, probably from the foot. What exactly want to see. There you go. He's saying he wants to see upstairs. What happens? Let's see what it transpires from above. Both the teams, Hockey, Odisha and Maharashtra, are level at 1-1. The penalty corner stays for Hockey Odisha. Not a very best of the drags that you see. And the goalkeeper falls down. He tries at a chance from the right. Ball goes out of bounds. Well done from the goalkeeper. Two of the players from Maharashtra pets on the back. Superbly done with his accessories tightened on his body. Let me tell you, with the heat, with the humidity, it's not easy to be a goalkeeper. But he has done exceedingly well to stop the ball from claiming more danger. It would have been 2-1. It would have been 2 for Odisha had the ball found the corner of the goal stake. It's a good pass. Odisha again getting through the defenses. Whistle comes in. Timely whistle. They want this more and more. Maharashtra have struggled a lot, and finally, in the initial stages of the third quarter, now gets a goal to make it 1-1. They don't want to hamper any more chances. Maharashtra inside the striking circle, trying to reverse. The left is there, but slowly, like a boxer. Like a boxer, the goalkeeper just sways the ball away. We are again going upstairs. Humongous. Oh, what timing. What is happening here? Craziest of the pictures. Penalty corner, go upstairs. They say no. And yesterday, penalty corner became penalty stroke. Umpire can have a smile. He says, let me give a breather. Let me tell you, let me express what I'm trying to say. And what do you want? He's asking him, what exactly do you want? What is the review all about? Tension in the air. 1-1, and finally he says, okay, I've understood. Let me go upstairs. Let me check what it is. Crazy stuff of affairs. And that's what he'll do, isn't it? There are 2 more matches remaining.
and be really on your seat to see what's lurking around the corner, because this is really going up to a decibels of the highest order. 9.09 minutes remaining in the third quarter. The score is level at 1-1. It says it goes out of bounds, out of the playing area, but he's still trying to get some signal coming in from upstairs. Probably he's not very sure, or is he getting some flickering of the voice? And there he goes, have to be the original position. So it remains 1-1, no penalty corner. It gives a heart scared moment, isn't it? All of them trying so seriously hard. You don't need any of them to baffling anyone. From the corner, Maharashtra hockey. Crazy gameplay we're having. We'll be having hockey Punjab to square up versus hockey Karnataka after this match. So North versus South again. This will be again a very crazy encounter. And then to put the cherry on the top, hockey Odisha almost had the cherry. Oh no, this is actually the area where they will be defending. And to top of the evening, it will be the boys from Tamil Nadu, the home side, to lock horns with from North's hockey Haryana. To sum up a brilliant day of hockey that we have seen till now. Each day producing something very vociferous, something very magnanimous, I would say. That's why it's been such a wonderful thing to see. Now it's a reverse slap over the crossbar. Ample time to negate any signs, to put it on the back of what it is or what it is not to be. It's almost like a surface cleaner, isn't it? Get the refinement going. You'll only see much of the action from the slowest of the quarters. 6.5 minutes to go by here.
You have to just back and say yourself, let's put probably everything to rest. Let's go back to what the original format was. Let's just quench our thirst because this match is now going very differently. And inside the striking circle, we had some huge dignitaries. You can see that photo of Dilip Tirki right behind. What an outstanding personality he has been for Indian hockey. So holds a very crucial position in the Hockey India setup. We also had Mr. Bholanath Singh gracing the occasion. So all of them will only tell you that how serious Hockey India has been in marching along and promoting and making a great enhancement of this wonderful game of hockey in India. Best of the lot. Sometimes it can be crazy, it can be very close. Maharashtra, as close you can come. There you go, frustration in the camp from Maharashtra. When you come so close, I remember saying yesterday also, it's like water everywhere, nor any drop to drink. Well done from Maharashtra. He was shaping up to go very quickly. The best thing you can do, you can just slide your stick through to break the momentum. And the umpire also breaks the momentum. Teams. And, one of those days where you don't just find your footing in the right area. Oh, he squares up like it was a full ball. He was going for a sixer, like a cricket bat in his hand. Was going for the huge slap onto the gloves of the goalkeeper. Goes absolutely above. He is a Terminator. He's the Goliath, the goalkeeper. It is all accessories. The moment you remove it, you'll find cocooned. Is a strong man, the goalkeeper. That's why when playing in such humid conditions like here in Tamil Nadu, you'll have to heap lots of praises because it's a thankless job being a goalkeeper. Seriously, never easy. You get ballooned twice your sizes sometimes. Hockey Odisha from the corner loses control. Maharashtra grips the advantage. He's alone. Three of the defenders going hand in hand. Synchronization is something which you always petite yourself in such games like hockey, football, where the enhancement of the ball speed is what you need to control. The ball position now very much between Maharashtra and Odisha. The comfort zone cannot be found anywhere. Twice now we get it. He's as busy as ever, and he has signaled that Maharashtra, the Orange Army, can keep a penalty corner. He's keeping himself busy with his exercises of his hands. And for Maharashtra, they need to keep busy with the goals. Can they get it with 3 minutes to go by to finish the third quarter? If it's one coming here, then Maharashtra will feel absolutely lucky for them. Because last quarter, no goals. The only goal which came, it was in the first quarter. Then the initial third quarter now yielded a goal from Maharashtra. Insertion time here. Is it fine? Where is the drag going? Almost getting into the goalpost. Oh, repeat of the penalty corner. That's what the umpire says. You have to go back to your zone. And he's not very much satisfied. You have to just close in the factor. See what happens again.
Insertion time. Blow off the whistle. Stick by. Oh, it goes right beneath the player from Maharashtra. Was a little bit lethargic. It's a nice pass, very nice pass along the carpet from the right. The goalkeeper is way ahead. Absolutely thankful for his colleagues, or two of them, with the stick very much high in the air. It gets right on to the base of the stick. Now you can see the more he's removing, you can see that the tiny is almost like a tiny structure getting very much tightly interlocked inside all those accessories. Not easy. Look at those heavy paddings. Look at the gloves. Then you have the stick. There's so much to call for, and that's why it's really not easy. Thankless, absolutely thankless. The job of a goalkeeper. When in football, you just have the gloves. As we look at the replay, have to wear so much of protective gears. Look at that man, just at one point he was shrinking, now he's ballooned himself. So, this is something which really the huge credit goes. It's been superbly going. The bullets, absolutely bullet, but the whistle did come up. So even if it was going inside, it wouldn't have been a goal. By the moment you realize the ball already got rebounded from the base of the goal post and came back. Sometimes you feel like the master lightning. At the speed of light did it go. On the corner, Hockey Urisa. And a stick by. Finally, Urisa can smile. It got assisted from the corner, from the left, then on to the center. And his only job was to throng straight 180-degree. There he go, right between jersey number 13 and the goalie. It goes right behind the back of the net to make it 2 for Hockey Urisa, 1 for Maharashtra. Again, at the fag end of the third quarter, we see a goal. Superbly done from Urisa. We're trying for a long time. Just one penalty corner got converted. And now this is a brilliant field goal. Seriously wonderfully done. Keeping all the pages intact, keeping all the briefing going for him. And as soon as he got a chance, that ball got just like a smelling of the ball between the player and the goalie. He just got his accessories adjusted. Unfortunately, to no avail. That goal has come in. He'll be definitely be very disappointed. I'm sure any goal which comes, it always goes against your name. But when you took yourself some time to readjust and tend to get a goal against you, it is always such a hard fact to digest. Double figures, yes, but those are the seconds that you're counting in the blow of the whistle for the third quarter. Can Maharashtra make it 2? Oh, so much close again. The Orange Army would have easily quenched the thirst for themselves. Can they do it? Less than 15 seconds remaining on the clock, but it's far away towards the zone of where Urisa needs to score inside the striking circle. Reverse into the goalie. Again trying, this time onto the footing of Maharashtra. Trying for the third time. Oh! Almost 180 degrees. The goalkeeper and the player from Odisha falls down. It's a penalty corner. The hooter has come up. Everything happening. Everything. Absolutely. Oh, what a match. What a match this is. Not once, not twice, not thrice. Going for the fourth time. Player falls down. Hooter comes in. But we also have a penalty corner. Oh my word, my word. Oh, not tough days as a commentator. Seriously, not good days as a commentator. You fly by. You want to quench your thirst from your throat. But then again, this is what you love about the commentary days, isn't it?
You get right behind the action. You love the players. You love the matches. You love the sport. This is brilliant. Seriously brilliant. So anyone around this city, anyone around the stadium, why don't you come up at this venue and just enjoy this action, because this is Division A and it is really reproducing a different kind of vibe. And this vibe might just trickle down for the remaining two matches. We're trying to get some early signs from the TV umpire. With Hooter going on, he has signaled the penalty corner. So will it be reversed? Will it stay? That's what we're trying to see. 2 for Hockey Odisha, 1 for Maharashtra. What has the signal come in? The penalty corner staying. Yep, the penalty corner stays. It will be interesting. It will be hugely interesting now. Let's see. Can they save the Blues? It's Orissa with the insertion. When the final time has gone by, the ball goes out of bounds. And will also go into the shadows because the hooter was being played. Remember, as soon as the penalty corner was being signaled, and it's a slap along the surface, but it will remain the same, thankfully, for Maharashtra. So 2 for Orissa, 1 for Maharashtra. We'll be back with the last quarter, and it will be the voice of my colleague in Hindi, Mr. Vikas Kumar. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी। और शानदार हॉकी, क्या बेहतरीन अंदाज में आखिरी के अगर देखें 10 सेकेंड्स में जो पेनल्टी कॉर्नर मिला, कमाल का सेव था गोलकीपर का और लाजवाब हॉकी देखने को मिल रही है यकीनन तौर पे। एक तरफ है उड़ीसा जो कि हॉकी का इन दिनों एक बड़ा नाम है हॉकी में, और उनका सामना महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र भी बहुत अच्छी टीम मानी जाती है और बहुत ही शानदार ये मैच देखने को मिलता हुआ। पहला गोल किया था हॉकी उड़ीसा की तरफ से मनदीप करकेट्टा ने जब पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया था मैच के 12वें मिनट में। उसके बाद महाराष्ट्र के लिए गोल आया था रेहान सफ़ी खान का, पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन था ये, और 43 यानी 43वें मिनट में मनदीप करकेट्टा 2 गोल कर चुके हैं मनदीप। उड़ीसा के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड मानी जाती है उड़ीसा हॉकी में। पिछले 10 साल अगर उठा के देखें तो उड़ीसा ने कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे भी दिए हैं हॉकी, भारतीय हॉकी के लिए चाहे बात करें अमित रोहिदास की, बहुत सारे प्लेयर दिए हैं। खुद हॉकी इंडिया के अगर प्रेसिडेंट देखें दिलीप तिर्की, वो खुद उड़ीसा से आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उड़ीसा हो, झारखंड हो, जिन्होंने हॉकी में बड़े काम किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, मध्य प्रदेश हो। फिलहाल देखना होगा स्पीच
लीजिए अब शुरुआत हो चुकी है इस चौथे और सबसे इंटरेस्टिंग क्वार्टर की। मयूर बहुत अहम बात और बहुत शानदार कमेंट्री आप तक पहुंचा रहे थे और बेहतरीन तरीके से प्रयास यहाँ पे होता हुआ, कोशिशें बढ़िया यहाँ पे महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र की टीम जो कि ऑरेंज कलर के परिधान में है, राइट सेलेक्ट अटैक कर रही है और देख सकते हैं इस बीच उड़ीसा की टीम बॉल कंट्रोल किया खूबसूरती के साथ यहाँ पे प्रयास उनके द्वारा। बहुत ही शानदार ये मुकाबला, 2-1 की बढ़त इस समय। मनदीप करकेटा ने गोल किया था पहला गोल, इसके बाद रेहान सफी खान का गोल आया महाराष्ट्र की तरफ से और फिर वापस मनदीप करकेटा ने गोल करके इस मैच में बढ़त दिला दी है उड़ीसा को। फिलहाल राइट फ्लैंक से कोशिश एक बार फिर से बहुत शानदार तरीके से स्ट्राइकिंग सर्कल में, लेकिन महाराष्ट्र की टीम का डिफेंस बहुत बढ़िया है। क्विक यहाँ पे पासेस बहुत शानदार नजर आ रही है और यकीनन तौर पे उड़ीसा के खिलाफ ये कोशिश एक समय बेहतर होती हुई देखना होगा। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर दाखिल होने की कोशिश, कमाल का ये मुकाबला, दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। यकीनन तौर पे अगर देखें काफ़ी अच्छा ये बैटल नज़र आता हुआ। महाराष्ट्र की टीम की कप्तानी एक तरफ अगर देखें इस वक्त यानीश कुमार के कंधों पे हैं, वहीं पे कप्तान हैं सलमान लाकरा उड़ीसा के। सलमान लाकरा भी बहुत तेज़ तर्रार खिलाड़ी हैं, बेहतरीन हॉकी के लिए जाने जाते हैं। जर्सी नंबर 3 फिलहाल बॉल के साथ इस वक्त मिथलेश करकेटा, साथ ही खिलाड़ी को पास किया, मिडफील्ड में खेल होता हुआ अच्छा बैटल नज़र आ रहा है। मिडफील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य जो मैदान है, यहाँ से बॉल कितनी बेहतर सप्लाई होती है वो ये बहुत अहम रखेगा यकीनन तौर पर। इस मैच की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करेंगे ये मुकाबले में। खास करके देखें इस समय चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग क्वार्टर इस समय। जैसे नंबर 11 बॉल के साथ इस पीछे अपने ही हाफ में खेल होता हुआ राइट फ्लैंक से कोशिश करेंगे इस समय बॉल को आगे बढ़ाने की। प्रयास देखना होगा कितना सार्थक और कितना कारगर नजर आता है। इस बीच शानदार पासिंग, बढ़िया स्किलफुल खेल दिखाते हुए इस वक्त शानदार तरीके से फोर्थ क्वार्टर में एक अच्छा थ्रू पास, बहुत अच्छी रणनीति यकीनन तौर पर, लेकिन बॉल को ट्रैप नहीं कर सके ठीक तरीके से। जो अटैक बिल्ड हो रहा था यहाँ पे वो अटैक कुछ पलों के लिए टलता हुआ। अपनी महाराष्ट्र नेशनल गेम्स भी जो लास्ट टाइम हरिद्वार में हुआ था वहाँ पे जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र सुनील वाल्मीकि कमाल का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र की तरफ से देखने को मिल रहा था। यूपी जैसी टीमों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कर्नाटक जो कि हॉकी में मेन्स हॉकी की एक बड़ी टीम। फिलहाल देखना होगा इस बीच मौका था, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए, बहुत ही शानदार तरीके से लगातार अटैक बनाती हुई टीम। देखते ही बन रहा है आक्रमण इस समय उड़ीसा का, बहुत ही खूबसूरती के साथ। इस बीच प्रयास उनका महाराष्ट्र के खिलाफ, महाराष्ट्र के खिलाड़ी इस समय बॉल के साथ, देखना होगा रणनीति क्या रहती है यहाँ पे। बहुत ही शानदार कोशिश, लेकिन बॉल को इंटरसेप्ट किया खूबसूरती के साथ। जैसे नंबर 9 बॉल पे असित माझी ने साथी खिलाड़ी को दिया। इस बीच अमनदीप डंग खूबसूरती के साथ एक एरियल बॉल कंट्रोल किया खूबसूरती से, अच्छा थ्रू पास, स्ट्राइकिंग सर्कल में मौका, कमाल की क्लास दिखाई है और बेहतरीन गोल भी है। लाजवाब गोल कर दिया उड़ीसा की, ये ताकत रही है। लगातार डिफेंस लाइन पे प्रेशर बनाया था इस टीम ने और क्या शानदार बॉल रोटेशन, बेहतरीन तालमेल उड़ीसा का। महाराष्ट्र की डिफेंस को पूरी तरीके से छत पे छत किया। जोशी नंबर 8 अद्भुत असित मांझी और साथ ही साथ अगर देखें टीम के बेहतरीन खिलाड़ी इस समय सुबोध लाकरा और 3-1 की बढ़त, क्या शानदार तरीके से हॉकी दिखाते हुए बेहतरीन ये प्रयास इनका, लाजवाब ये कोशिश यकीनन तौर पे। जिस अंदाज में ये प्रयास होता हुआ वो प्रशंसनीय, देखना होगा क्या रणनीति रहती है। आगे लम्हे में 10 मिनट 27 सेकेंड्स के आसपास का खेल से ये मुकाबले में पिछला गोल जिस तरीके से उड़ीसा लगातार पोजीशन रखते हुए मनदीप करकेटा जर्सी नंबर 16, निगाह रखिएगा स्टार खिलाड़ी, तीसरा गोल भी उनके ही स्टिक से आया है। साथ मिला था जर्सी नंबर 8 का सपोर्ट असिस्ट मिला था सलमान लाकरा का, टीम की कैप्टन का, लेकिन मनदीप करकेटा जिस खूबसूरती के साथ वहाँ पे उन्होंने प्रयास किया वो देखने लायक।
लाजवाब तरीके का ये रोमांस इस समय दोनों टीमों के बीच ये संघर्ष, ये कश्मकश बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता हुआ। उड़ीसा ब्लू जर्सी में है, राइट से लेफ्ट अटैक कर रही है, लगातार बॉल रोटेशन, कमाल का एक और डिफ्लेक्शन, क्या लाजवाब अद्भुत गोल है ये। लेफ्ट फ्लैंक से खूबसूरत क्रॉस था और डिफ्लेक्शन अद्वितीय। ये है खिलाड़ी जर्सी नंबर 13, मौजूद है बॉल रंजन इक्का पॉल, और आखिरी टच डिफ्लेक्शन, क्या कमाल का ही सिंगल से देखिए, बहुत बढ़िया कवरेज, लाजवाब कवरेज। संजीत राज रुकने वाले नहीं है, संजीत राज जिस अंदाज में इस समय इन्होंने गोल किया, खूबसूरत सपोर्ट मिला डिफेंस लाइन का, और क्या खूबसूरत बेहतरीन गोल। हॉकी इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सीधा लाइव एक्शन देख रहे हैं, एक साथ आपको ये कवरेज पहुंचाया जा रहा है अलग अलग मैदानों से। तो बात करें इस समय खूबसूरत ये कवरेज, फिलहाल हम चेन्नई के इस समय में राधा कृष्ण स्टेडियम से लाइव है, जहाँ पे इस वक्त ये मुकाबला बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये प्रयास बहुत ही शानदार तरीके से गोलकीपर लाइन छोड़कर आगे आए। गोलकीपर की भूमिका में इस वक्त जो बात करें जेउस धर्माई मौजूद है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र प्रेशर में 4-1 की बढ़त। पिछला गोल जिस खूबसूरती से किया संजीत राज लाकरा ने, वो बहुत लाजवाब था। इस सपोर्ट जिस तरीके से कप्तान का मिला इस समय, शानदार तालमेल, अद्भुत परिचय दिया इस समय तालमेल का, समन्वय का, स्किल का। यही हॉकी का नाम है, जो स्किल, स्टीक वर्क और बेहतरीन समन्वय, हॉकी इसी का नाम है। फिलहाल महाराष्ट्र काफ़ी देर बाद बॉल कंट्रोल, राइट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश महाराष्ट्र के खिलाड़ियों, प्रयासों का बहुत बढ़िया होता हुआ देखना होगा इस प्रयास को किस तरीके से, क्या एक बेहतरीन है, यहाँ से एक अटैक बिल्ड कर सकते हैं। चौथे क्वार्टर का खेल जारी, इस बीच लगातार इस समय प्रयास हो रहा है इस मुकाबले में खूबसूरती के साथ इस समय स्ट्राइकिंग सर्कल में दाखिल होने की, डॉटेड लाइन के पास 23 मीटर रेखा के मध्य। लेकिन यहाँ से अगर बात करें क्लियर करने का प्रयास, साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई टीम का मौका, और अब देख सकते हैं 4-1 की ज़बरदस्त बढ़त अर्जित कर ली है। 4-1 की लीड इस बात की साफ गवाही पेश करती हुई उड़ीसा का डोमिनेशन नजर आया है। जर्सी नंबर 16 मनदीप करकट्टा का 3 गोल, क्या खिलाड़ी है ये, और संजीत राज लाकरा के 1 गोल के बदौलत 4-1 की जबरदस्त बढ़त, और लगातार बॉल कंट्रोल आप देखेंगे ज्यादातर उड़ीसा की टीम के पास। एक बार फिर से स्ट्राइकिंग सर्कल में जर्सी नंबर 13, और क्या बेहतरीन गोल, लाजवाब एक और गोल इस समय, क्या कहने, 5वां गोल पूरी तरीके से मैच में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रही है। जर्सी नंबर 6 से टॉमाहॉक रिवर्स्टिक के साथ नाम है इस खिलाड़ी का, विंसेटी तिर्की, गजब का गोल किया विंसेटी तिर्की ने, बहुत ही लाजवाब तरीके से प्रदर्शन समय दिखा रही है टीम। कमाल का ये परफॉर्मेंस हॉकी उड़ीसा हमेशा से पिछले अगर 10 सालों की हॉकी उठा के देखें, गजब का हॉकी राइज हुआ है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कुछ राज्यों ने, छत्तीसगढ़ जो आप देख रहे हैं इस हॉकी इवेंट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आई है। फिलहाल देखिए कमाल का बॉल रोटेशन, महाराष्ट्र के डिफेंस को पूरी तरीके से इस समय परेशानी में डाल दिया है, स्पीड, स्किल और अपने तालमेल के बदौलत एक और स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए। पूरी तरीके से बॉल पोजीशन उड़ीसा के पास, और उड़ीसा के लिए क्या कहने इस मैच में, सलमान लाकरा हो, संदीप लाकरा हो, विंसी तिर्की हो, अमनदीप सुबीर, मनदीप करकट्टा, संजीत लाकरा, बहुत शानदार तरीके से जिन्होंने अभी तक प्रदर्शन किया है, बहुत बढ़िया। चौथे क्वार्टर में ज़्यादा समय शेष नहीं है और मुकाबला इस समय ज़बरदस्त तरीके से इस समय एक और पुश किया खूबसूरती के साथ। यहाँ पे गोलकीपर की तारीफ करनी होगी, लाइन छोड़कर आगे आए और शानदार इस समय उनके द्वारा ये बचाव, बेहतरीन सेव नजर आया है। गजब का ये मुकाबला देखने को मिल रहा है इस समय, कमाल की हॉकी। 4-1 की बढ़त अभी भी हॉकी उड़ीसा के पास। मैच के चौथे क्वार्टर का ये खेल जारी, और चौथे क्वार्टर में अगर देखें 5 मिनट 23 सेकंड के आसपास का खेल शेष।
बहुत ही शानदार ये मुकाबला इस समय देखना होगा क्या रणनीति रहती है। ये मैच को एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोनों टीमें खेल दिखा रही है। राइट फ्लैंक से कोशिश यहाँ पे बढ़िया होती हुई, लेकिन ठीक तरीके से गोल पोस्ट के अंदर नहीं रख पाए। तेज तर्रार एक स्लैप शॉट बहुत ही आक्रामकता से लिया इस समय। 4-1 की बढ़त हॉकी उड़ीसा के पास, एक अच्छी खासी लीड। मनदीप करकेटा का पहला गोल आया एनर्जी कॉर्नर के सहारे, उसके बाद रेहान शफीक खान ने एनर्जी कॉर्नर महाराष्ट्र की तरफ से। और इस बीच देखना होगा स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने की कोशिश इस समय, शूटिंग सर्कल में बहुत ही शानदार माहौल। और इस बीच गोलकीपर का अच्छा सेव अगेन, तारीफ करनी होगी महाराष्ट्र के गोलकीपर ने, जिस तरीके से एंगल ब्लॉक किया, लाइन छोड़कर आए, बहुत अच्छी रणनीति। यहाँ उड़ीसा के गोलकीपर की भी तारीफ होनी चाहिए, बहुत आगे आ गए थे स्ट्राइकिंग सर्कल के बिल्कुल एज पे, मुहाने पे, और स्टीव उनके द्वारा इस समय। कमाल का ये मुकाबला, दिलचस्प ये मेजबानी, शानदार तरीके से ये मैच अभी तक घटित होता हुआ। लगभग 4 खेल आना शेष और बचे हुए 4 मिनट में देखा होगा क्या महाराष्ट्र अब आक्रमण पे है। महाराष्ट्र के लिए रणनीति क्या रहेगी? बैक पास किया, इस ऊंचाई की रेखा के पास इस समय संघर्ष होता हुआ, काफ़ी बढ़िया जद्दोजहद इस मैच में देखने को मिल रहा है यकीनन तौर पे, और काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला अभी तक घटित हो रहा है। 4-1 की बढ़त उड़ीसा के पास, उड़ीसा की टीम जबरदस्त हॉकी खेल रही है। और इस बीच जरूर यहाँ पे बहुत अच्छा प्रयास, एक और क्रॉस स्ट्राइकिंग सर्कल से, लेकिन जो फॉरवर्ड लाइन में खिलाड़ी कमिट किए थे वो इस बार बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। बॉल चली गई इस समय साइड लाइन से बाहर। अभी भी उड़ीसा की टीम का अटैक नजर आता हुआ, लेकिन अब बॉल पोजीशन महाराष्ट्र के पास। ऑरेंज जर्सी में महाराष्ट्र टीम का ट्रेडिशनल कलर है, ज़्यादातर इसी जर्सी में ये टीम खेलती है। फिलहाल देखना होगा इस बीच प्रयास होता हुआ इस समय, पेनल्टी कॉर्नर बहुत शानदार महाराष्ट्र के लिए पीसी बनाया है। और रेहान शफीक खान जिन्होंने पिछला गोल भी किया था, थोड़ी सी आशाएं जगा रहे हैं महाराष्ट्र की। जैसे नंबर 18 गोलकीपर गोल पोस्ट की रक्षा करने के लिए जगदीप बारला, इनके कंधों पे दारोमदार महाराष्ट्र के खिलाड़ी इस वक्त रेहान शफीक खान हैं, सूरज दीपक शुक्ला हैं, कप्तान ने विजय काफे, ध्यानेश कुमार, और ये है बेंच इस वक्त महाराष्ट्र की टीम के कोच राकेश किशोर सुखदेव, और टीम मैनेजर है निखिल जाधव। बुला देगा होगा इस बीच बॉल को इंजेक्ट किया पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंस का बेहतरीन क्लियरेंस। अभी भी जरूर संघर्ष जारी है, खतरा चला नहीं है। इस समय बात करें महाराष्ट्र के समय गोल पोस्ट से, बहुत ही शानदार ये मुकाबला इस समय। धीरे धीरे ये मैच उड़ीसा की टीम अपने नियंत्रण में, अपने शिकंजे में कसती हुई, क्योंकि बढ़त जो है 4-1 की बड़ी बढ़त यहाँ पे नजर आ रही है। शानदार रोमांच के बीच ये मुकाबला इस समय, दिलचस्पी साफ नजर आ रही है। जैसे नंबर 9 बॉल के साथ उड़ीसा के लिए असित मांझी, तेज तरार खिलाड़ी, कप्तान इस समय सलमान लाकड़ा के साथ मौजूद हैं, साहिम मनदीप करकेटा। और इस बीच बॉल को कोशिश की यहाँ पे नियंत्रित करने की, लेकिन आई नहीं ठीक तरीके से, और वापस इस समय पुश किया खूबसूरती के साथ। देखना होगा रणनीति क्या रहती है। खतरा कुछ पलों के लिए चला इस समय, लगातार आक्रमण मिडफील्ड से, बहुत तेज तरार, अच्छी पासिंग स्किल काफ़ी अच्छी नज़र आई है। उड़ीसा की टीम के खिलाड़ियों की तकनीकी कौशल बहुत लाजवाब, और लगातार बॉल पे कंट्रोल रख करके मैच को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में कसते हुए। एक और थ्रू पास स्ट्राइकिंग सर्कल के पास, थोड़ी हेवी टच, क्लियर किया डिफेंस ने महाराष्ट्र के। अच्छा क्लियरेंस महाराष्ट्र के डिफेंस का, देख सकते हैं इस समय 4-1 की बड़ी बढ़त इस समय उड़ीसा के पास। वक्त ज़्यादा शेष नहीं है, 1 मिनट 31 सेकेंड्स के आसपास का खेल शेष। वक्त धीरे धीरे निकल रहा है, और बहुत ही शानदार तरीके से इस समय देखिए बॉल को कंट्रोल किया। एक बार फिर से इस समय बॉल लेकर के दीपक प्रकाश टोपो, बहुत ही शानदार सुंदरता के साथ टोपो, बेहतरीन कोशिश उनके द्वारा, पेनल्टी स्ट्रोक का इशारा, ये चिंता के विषय। पेनल्टी स्ट्रोक अंपायर के द्वारा इशारा किया गया है।
अंपायर हैं रवि गोपीनाथ और उनके साथ हैं देवराज ए। स्कोरिंग जज दिनेश मेलेकर और साथ ही साथ देवनाथ थे टाइमिंग जज। और दूसरी तरफ अगर देखें टेक्निकल ऑफिसर समीर और रिजर्व अंपायर गौरव कुमार सिंह। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ हुआ इस समय। बहुत ही शानदार प्रयास किया था इस समय और पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया गया है। क्या शानदार क्षण। जर्सी नंबर 17 दीपक प्रकाश टोपो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी। स्ट्रोक लेने के लिए पेनल्टी स्ट्रोक देखना होगा। सुनहरा मौका है। शानदार गोल किया, बीट किया गोलकीपर को। बेहतर तरीके से एंटिसिपेट नहीं कर पाए। राइट तरफ उन्होंने देखा और बहुत आसानी के साथ सिर पुश कर दिया लेफ्ट तरफ। ये भी एक बहुत अच्छी रणनीति नजर आती है। क्या बढ़िया शानदार रणनीति के तहत गोल इस समय गोल पोस्ट के अंदर इस समय 5-1 की बढ़त पेनल्टी स्ट्रोक के साथ गोल किया इस समय। जबरदस्त तरीके से ये गोल नजर आया और ये मुकाबला बहुत दिलचस्पी की तरफ। अब आखिरी मिनट का खेल से इस समय बात करें। शानदार ये मैच एक बार फिर से जबरदस्त हॉकी दिखा रही है उड़ीसा महाराष्ट्र के खिलाफ। तालमेल बेहतर समय में और बेहतरीन हॉकी। एक और अच्छा अटैक किया शानदार और सुंदरता के साथ इस समय 5-1 की बढ़त। मुकाबले में ज्यादा वक्त शेष नहीं है और धीरे धीरे ये मैच अपनी समाप्ति की तरफ अग्रसर होता हुआ। बेहतरीन हॉकी की झलक यहाँ पे यकीनन तौर पे एक बड़ी लीड नजर आ रही है। तो शानदार तरीके से इस लीड को लगातार मेंटेन करती हुई नजर आ रही है इस पीछे उड़ीसा की टीम का। क्या गजब का तालमेल है। हल्की सी बॉल पोजीशन गंवाए और खतरा अभी भी। ओ हो क्या बेहतरीन ड्रिबलिंग। वाह अद्भुत खेल रही है टीम, अविश्वसनीय खेल रही है बहुत जल्दी। और एक और पेनल्टी कॉर्नर बना लिया है। एक और पीसी यहाँ पे शानदार तरीके से और 5-1 की बड़ी बढ़त इस वक्त है उड़ीसा के पास। उड़ीसा की टीम पूरी तरीके से अपनी श्रेष्ठता दिखा रही है इस मुकाबले में। बेहतरीन ये मुकाबला इस समय घटित होता हुआ शानदार रोमांच के बीच ये मैच। ये है डॉग आउट उड़ीसा का। काफ़ी विश्वस्त नज़र आ रहे हैं उनके कोच मैनेजर और ज़बरदस्त तरीके से हॉकी दिखाती हुई टीम यकीनन तौर पे बहुत ही शानदार हॉकी की झलक। देखना होगा। कमाल के समय बेहतरीन। अभी मुकाबला इस समय पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए बहुत कुछ निर्भर करेगा किस तरीके से पीसी को गोल के रूप में क्या तब्दील कर पाएंगे। स्टॉप ड्रैग शानदार कोशिश। हुटर की आवाज और ये हुटर की आवाज इस बात के संकेत है कि मुकाबला खत्म हुआ है और 5-1 की जबरदस्त जीत अर्जित की है इस समय। उड़ीसा की टीम ने क्या श्रेष्ठता दिखाई है, लाजवाब खेले हैं और इस जीत में अहम किरदार जिस खिलाड़ी ने अदा की है मनदीप करकेट्टा ने। पिछला ये अटेम्प्ट आइए नजर डालते हैं खूबसूरती के साथ। ये प्रयास बहुत अच्छा ट्रैक फ्लिकर के द्वारा स्किलफुल हॉकी की झलक। लेकिन फर्स्ट रशर और डिफेंस की टीम ने अपने आप को संभाला और निरंतरता से आज लगातार गोल करते नजर आए। बहुत ही शानदार हॉकी इस वक्त दिखाती हुई टीम और मनदीप करकेट्टा आज छाए रहे पूरे मैदान में। गजब की उन्होंने हॉकी खेली और जब भी मौके मिले सभी मौक़ों को भुनाने की अद्भुत क्षमता उनके पास। मनदीप ने पहला गोल किया था 12वें मिनट में, दूसरा गोल महाराष्ट्र की तरफ से आया था और ये पेनल्टी स्ट्रोक था। दीपक प्रकाश टोपो ने बहुत आसानी के साथ इसे तब्दील कर दिया था। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। काउंट्री बॉक्स में हूँ विकास कुमार। आने वाले मैच में जहाँ पे एक और बेहतरीन मुकाबला खेला जाने वाला है, जुड़े रहिए जहाँ मयूर बरुआ जी हमारे साथ जुड़ेंगे इंग्लिश कमेंट्री के साथ। बने रहिए हॉकी इंडिया मीडिया यूट्यूब चैनल।
भैया स्विचिंग हो रहा है ऊपर।
कंफर्म कितना पंजाब 3 ये वाला ये कर्नाटका लेके 0 ये लेके थे ये 0 ये वाला का 3 है
Bengal. Baba.
Bye.
ये अच्छा टीम है। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का। जहाँ पे मुकाबला हॉकी इंडिया का खूबसूरत ये मेजबानी इस समय, कमाल का माहौल इस समय खेल के लिए, शानदार ये खेल की झलक इस समय। लीजिए इस समय बात करें, एक तरफ पंजाब, दूसरी तरफ कर्नाटका। पंजाब ने डोमिनेट किया है खूबसूरती के साथ। पंजाब की टीम में शानदार तरीके से इस समय मैच में 7-0 की बड़ी लीड इस समय फोर्थ कोचों में। क्या लाजवाब अंदाज में इस मुकाबले में प्रदर्शन करती हुई टीम, ज़बरदस्त तरीके से इस मैच में खेल दिखा रही है टीम, और क्या खूबसूरती के साथ यहाँ पे परफॉर्म करती हुई। चौथा और आखिरी क्वार्टर बेहद इंटरेस्टिंग इस समय, कमाल का मुकाबला इस समय। पंजाब वर्सेस ये मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। कमाल की हॉकी की झलक। कमेंट बॉक्स में विकास मेरे साथ है, मयूर बरुआ, मयूर जी जुड़ेंगे अगले मैच से लाइव शो लेकर के। बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला अभी तक घटित होता हुआ। और लीजिए पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए इंजेक्ट किया, स्टॉप, ड्रैग, शानदार ड्रैग, रिफ्लेक्शन के साथ सीधे गोल पोस्ट में। एक और गोल यहाँ पे पंजाब के जाबाज खिलाड़ी गजब की हॉकी खेल रहे हैं। ये वो पंजाब की टीम ने, आपको बताते चले, जिन्होंने सीनियर हॉकी नेशनल जो झांसी में हुआ था पिछला रजोई सीनियर नेशनल, उसकी विजेता टीम रही थी, मध्य प्रदेश को हरा करके वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था पंजाब। कमाल की टीम। पहला गोल 5वें मिनट में मनदीप सिंह ने, गुरसिमरनप्रीत ने 14वें मिनट में दूसरा गोल किया था। इसी के साथ वरिंदर सिंह ने तीसरा गोल, अर्शप्रीत ने बात करें चौथा, राज ने 5वां गोल, आकाशदीप ने 6वां, मनदीप सिंह ने 7वां और जसनप्रीत ने ये गोल करके 8-0 की बढ़त दिला दी है। गजब की क्षमता है पंजाब के पास, अद्भुत स्किल है पंजाब के पास, और लाजवाब हॉकी दिखाती हुई टीम इस वक्त है। 8-0 की बढ़त, कल्पना कीजिए 5वें, 14वें, 17वें, 23वें, 30वें, 36वें, 41वें और 47वें मिनट में गोल दिया। लाजवाब हॉकी की झलक यकीनन तौर पर पंजाब पूरी तरीके से अपनी श्रेष्ठतम फॉर्म में खेल की अद्भुत झलक दिखा रही है टीम, और लाजवाब हॉकी के बदौलत यही नतीजा है कि पंजाब पूरी तरीके से मैच में अपनी श्रेष्ठता। और यहाँ पे अंपायर के द्वारा येलो कार्ड, ये चिंता के विषय, येलो कार्ड यहाँ पे, यानी 5 मिनट का सस्पेंशन, 5 मिनट बाहर रहना होगा। कल्पना कीजिए, इसी से ये मुकाबले में बहुत फ़र्क डालेगा। क्या पंजाब के खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं? यकीनन तौर पे यही प्रतीत होता हुआ। जर्सी नंबर 9 नाम इस खिलाड़ी का, मनदीप सिंह, जो कि गोल कर चुके हैं मनदीप, यानी कि अगले 5 मिनट तक सिर्फ 10 प्लेयर से खेलेगी टीम। अब फिलहाल देखना होगा, काफ़ी देर बाद कर्नाटक के लिए बॉल वहाँ पे, ये थोड़ी चिंता की ज़रूर बात होगी, लेकिन बहुत बड़ी लीड है, ज़्यादा चिंता वाली बात यकीनन तौर पे नहीं होगी। फिलहाल इस समय पंजाब के खिलाड़ी ने ट्रैप किया बॉल को। क्या गति है, पंजाब जाबाज टीम मानी जाती है, पंजाब के कई सितारे दिए हैं, मनप्रीत, हरमनप्रीत, बड़ी टीम है, गुरजंत, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पंजाब को प्रतिनिधित्व किया है। और यहाँ की ये नई पौध, नई टीम, उद्यमान टीम इस समय कप्तान सुखदेव की मेजबान बात करें, कप्तानी में खेलती हुई लाजवाब हॉकी की झलक यकीनन तौर पे शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है टीम, अपनी श्रेष्ठता दिखा रही है।
अच्छी गेम प्लान, खूबसूरत पासिंग, बेहतर स्किल, स्टीक वॉक, कॉम्बिनेशन, लिंक अप प्ले, हर विधा में शानदार हॉकी की झलक दिखाती हुई पंजाब की टीम। जबरदस्त ये मुकाबला, पूरी तरीके से मैच पे अपनी नियंत्रण बनाई हुई लाजवाब खेल रही है टीम यकीनन तौर पे। कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक काफ़ी प्रेशर में। कर्नाटक के वीरेश एस टीम के कैप्टन हैं। कर्नाटक को अब जाकर पेनल्टी कॉर्नर मिला है और निगाह रहेगी गोलकीपर पे, जहां पे जर्सी नंबर 18 रतन सिंह बतौर गोलकीपर मौजूद है इस समय। रतन किस तरीके से गोल पोस्ट की रक्षा कर पाएंगे? कर्नाटक के पास मौका इस समय गोल करने का। इस टीम में देखें प्रतीक डी है, इस टीम में सतीश गौड़ा, VY, धनुष सी, वीरथ सी टीम के कैप्टन। और लीजिए इस समय कर्नाटक अब टीम इस वक्त पेनल्टी कॉर्नर को इंजेक्ट करने के लिए, पीसी लेने के लिए देखना होगा रणनीति क्या रहेगी। इंजेक्ट किया, स्टॉप, लेकिन अंपायर के विसल, अंपायर परीक्षित सिवाच और साथ में हैं TR मोहन सरवनन। इस मैच के अंपायर बात करते हुए उनसे, ये हैं TR मोहन सरवनन। जर्सी नंबर 5 वहाँ गए थे इंजेक्शन के लिए, युवराज सिंह से बात हो रही थी। पंजाब सेव कर रही है, देखना होगा इस बीच। कर्नाटक ने इंजेक्ट किया, खिलाड़ी ने स्टॉप, हल्की सी वेरिएशन, लेकिन पंजाब के खिलाड़ी अलग ही जज्बे के साथ खेल रहे हैं। सबका क्लियर किया है सब, द्वितीय क्षमता रफ्तार देखते ही बन रही है पंजाब के खिलाड़ियों की। स्पीड, इनका गेम प्लान, कॉम्बिनेशन बहुत ही ऊंचे स्तरीय। यही वजह है, देख सकते हैं मुकाबले में इस समय 8-0 की बड़ी बढ़त, 8-0 की लीड। राइट फ्लैंक से एक स्लैप शॉट, गोलकीपर आई लाइन छोड़कर क्लियर किया। इस समय गोलकीपर ने तारीफ करनी होगी, विनय मौजूद है, गोल पोस्ट की रक्षा कर रहे हैं कर्नाटक की। पेश किया लेग को और क्लियर किया इस समय, खतरे को टाला। चौथा क्वार्टर, 8-0 की बढ़त, बहुत बड़ी लीड यहाँ पे पंजाब के पास। बड़ी लीड के खिलाफ देखना होगा रणनीति क्या रहेगी। शानदार अंदाज में ये मुकाबला देखने को मिलता हुआ, खूबसूरत रोमांच के बीच ये मैच। इस बीच क्रॉस आया सुंदरता के साथ, बहुत अच्छा प्रयास था, कोशिश यकीनन तौर पे काफ़ी बेहतर यहाँ पे, लेकिन आसान नहीं होता हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला इस समय घटित हो रहा है, रोमांचित करने वाले पल। और अभी भी देखें इस समय 8-0 की बढ़त, इस बात की झलक पेश करते हुए कर्नाटक की टीम एक बार फिर से इस बार पुश किया खूबसूरती के साथ, यहाँ पे कंट्रोल बॉल को जर्सी नंबर 17 कर पाए। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल कर पाए। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप डिवीज़न A का मुकाबला, मैच नंबर 28, 28वां मुकाबला आज डे 5। डे 5 का अगर देखें उस समय शानदार तरीके से ये मैच ओवरऑल 28th मैच है, डे 5 का ये 5th मैच। रेड जर्सी में पंजाब, ब्लू जर्सी में है कर्नाटक। कर्नाटक की युवा टीम है, पंजाब भी बहुत युवा और उदीयमान टीम। जबकि नेशनल गेम्स में सीनियर लेवल पे पंजाब और कर्नाटक जब भिड़े थे, कर्नाटक ने हराया था हरिद्वार नेशनल गेम्स में। लेकिन यहाँ पे पंजाब का बेहद दबदबा है, बहुत ही शानदार हॉकी दिखाती हुई। फिलहाल इस बीच बॉल को कंट्रोल किया खूबसूरती के साथ, हल्का सा स्कूप राइट फ्लैंक से, बहुत देर बाद धनुष सी के पास बॉल, धनुष ने साथी खिलाड़ी को दिया, लेकिन इस बीच इंटरसेप्शन। लगातार पंजाब के लिए जगजीत सिंह, तेज तरार खिलाड़ी इस टीम के, जगजीत के साथ साथ पूरी टीम गजब की हॉकी खेल रही है। कमाल का गेम प्लान किया है, जबरदस्त हॉकी। और देख सकते हैं रेड जर्सी आपको नजर आई। ज़्यादातर बात करें जो अटैकिंग पावर, स्किल और स्ट्रेंथ है इस टीम की,
सबसे बड़ी ताकत देखना होगा इस समय, रणनीति क्या रहती है। शानदार तरीके से ये मुकाबला इस समय घटित होता हुआ, कमाल के रोमांच के बीच इस समय स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने की कोशिश। बेहतरीन तरीके से ये मैच अभी तक घटित हो रहा है। खूबसूरत इस समय बॉल कंट्रोल किया, शानदार तरीके से स्ट्राइकिंग सर्कल में जाना चाहते थे, लेकिन खूबसूरत स्ट्रीक वर्क और बढ़िया डिफेंस, बहुत सही समय पे आकर के डिफेंस से ये खिलाड़ी ने खतरे को टाला। स्ट्राइकिंग सर्कल में गए, खूबसूरत क्लियर किया इस बीच, देखना होगा। बहुत बढ़िया गोलकीपर की अगेन तारीफ करनी होगी, स्ट्रेच किया राइट लेग को, कमाल के पूर्वानुमान, बेहतरीन तरीके से अगर बात करें इस समय, गजब का अगर देखें इनके पास स्किल है, स्टीक वर्क है और खूबसूरत एंटिसिपेशन गोलकीपर विनय का। एक बार फिर से पंजाब लगातार अटैक पे है। पंजाब के लिए अर्शदीप हो, जगजीत हो, जगराज हो, अनुराग, विनय कुमार, अक्षित, पूरी टीम में गजब की खेल रही है। कप्तान सुखदेव, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, ओहो हो, ये एक और गोल की मानो बारिश कर दी है पंजाब की टीम ने। एक और आसानी के साथ निरंतरता देखिए, आइए नजर डालते हैं जर्सी नंबर 14 के इस अटेम्प्ट पे, और आखिर में जर्सी नंबर 4 का टच अनुराग सिंह, 14 ने इनिशिएट किया आकाशदीप ने, और अनुराग का डिफ्लेक्शन। ये है बेंच पंजाब का, बेहद खुश इनके कोच, काबिले तारीफ है प्रदर्शन करती हुई टीम से। गजब की हॉकी खेली है यकीनन तौर पे। लाजवाब हॉकी की झलक है ये। जिस अंदाज में प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो देखने लायक, उच्च स्तरीय सराहनीय प्रदर्शन इस समय। बहुत खर्चे के खेल जारी इस समय, नजर डालें 9-0 की लीड। ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार, गोल के लिए बातचीत चल रही है। जुड़ रही है हमारे साथ अपने इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस बात करें हरियाणा के बीच मैच खेला जाएगा। वो भी बहुत बड़ी टीमें हैं दोनों ही आमने सामने मेंस हॉकी की, काफ़ी इंटरेस्टिंग वो भी मैच नज़र रहेगा। फिलहाल यहाँ पंजाब का डोमिनेशन है, पूरी तरीके से पंजाब की टीम अपनी श्रेष्ठता दिखाती हुई गजब की हॉकी खेल रही है। पंजाब स्मार्ट और तकनीक और कौशल के साथ साथ तेज तरार रफ्तार वाली हॉकी जो पंजाब की अपनी ताकत है। बहुत ही शानदार तरीके से ये हॉकी निर्णय का इंतजार था, डब्बार से बातचीत होती हुई। अंपायर के निर्णय के इंतजार यकीनन तौर पे देखना होगा। बहुत ही शानदार तरीके से यह मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ, खूबसूरत रोमांच के बीच ये मैच, और यकीनन तौर पे एक बड़ी लीड यहाँ पे 9-0 की एक बड़ी लीड इस बात की गवाही पेश करते हुए। कमाल की ये हॉकी की झलक, यकीनन तौर पे लाजवाब तरीके से रोमांच। और यहाँ पे अगर देखें पंजाब के बेंच के कोच, मैनेजर और उनके पूरी टीम इस समय देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ये
मुकाबले का एक्शन देखते हुए, जी हाँ, इस समय अभी भी 9-0 स्कोर लाइन। पूरी तरीके से इस समय मुकाबले में श्रेष्ठता दिखाई है, जबकि हॉकी इस समय बॉल के पोजीशन के ये नतीजा इस बीच शानदार तरीके से ये मुकाबला इस समय नजर आता हुआ। देखना होगा रणनीति क्या रहेगी। प्रयास यहाँ पे जरूर है, कुछ किया, अच्छी कोशिश यहाँ पे स्ट्राइकिंग सर्कल के नज़दीक पहुँचने का प्रयास। इस बीच राइट फ्लैंक से एक बार फिर से पंजाब मिडफील्ड में खूबसूरत प्रयास पंजाब के खिलाड़ियों के द्वारा। एक बार फिर से लगातार निरंतरता नजर आ रही है इनके खेल में, खूबसूरत हॉकी की झलक। पंजाब के लिए जिस तरीके से कप्तान सुखदेव सिंह बात करें, आकाशदीप, वरिंदर सिंह, गुरजोत सिंह, जसमनप्रीत सिंह, मनदीप जो गोल स्कोर रहे हैं, गजब की हॉकी खेल रहे हैं। पूरे मैदान में डिफेंस को परेशान करके रख दिया अपनी रफ्तार से, अपनी स्किल से। राइट फ्लैंक से स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए, देखना होगा इस समय मौका। डिफेंस जरूर यहाँ मैन टू मैन मार्क करके अच्छा कार्य किया कर्नाटक के डिफेंस ने। काफ़ी देर बाद गुड वर्क पंजाब के डिफेंस का के खिलाफ, पंजाब के अगर बात करें अटैक के खिलाफ कर्नाटक के डिफेंस का, लेकिन स्ट्राइकिंग सर्कल में पुनः गलती हुई और बहुत शानदार तरीके से गए, लेकिन इशारा आता हुआ इस समय गोल नहीं मिलेगा ये। और अभी भी अगर देखें इस समय 9-0 की लीड, 9-0 की बड़ी बढ़त इस समय। पंजाब पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपनी श्रेष्ठता सामर्थ्य दिखाता हुआ, जबकि हॉकी तेज तर्रार स्पीडी हॉकी हमने इस मैच में देखा है। या तो नॉर्थ ईस्ट की टीमें हो तो तेज तर्रार हॉकी देखने को मिलती है, या फिर अगर टीम पंजाब, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, तो ये हॉकी के उड़ीसा हो, झारखंड हो, तो हॉकी की रफ्तार बढ़ जाती है। और पंजाब की इस टीम ने तो इस बात को चरितार्थ करके दिखा दिया है। एक बार फिर से देखना होगा मिडफील्ड में खेल होता हुआ शानदार तरीके से यह मुकाबला। बैक पास किया मिडफील्ड में, अगेन यहाँ पे प्रयास बहुत बढ़िया होता हुआ, शानदार ये हॉकी की झलक एक बार फिर से खूबसूरती के साथ ये रोमांचित करने वाले पल। अब 3 मिनट से कम का खेल शेष, 9-0 की बढ़त यहाँ पे। देखना होगा क्या स्ट्रेटजी रहती है आने वाले लम्हों में, ये तय करेंगे इस मुकाबले की दशा और दिशा। देखना बहुत अहम इस मैच के नज़रिए से। इस बीच फ्लैंक को स्विच किया, लेफ्ट से फ्लैंक सब जाने की कोशिश, राइट फ्लैंक के बाद जैसे नंबर 7 बॉल के साथ इस समय जरूर जगजीत सिंह, लेकिन उतनी ही तारीफ करनी होगी अब कर्नाटक की। इस वक्त बॉल नियंत्रण अपने पास लिया, एक स्कूप करके बॉल को जहाँ से निकालने का प्रयास। बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबले में पूरी तरीके से ये मैच रोमांचित करता हुआ, जिस अंदाज में ये मैच अभी तक घटित हो रहा है। महज 2 मिनट का खेल शेष, मुकाबला पूरी तरीके से पंजाब अपनी श्रेष्ठता दिखाती हुई यहाँ पे। गजब की हॉकी की झलक यहाँ पे स्ट्राइकिंग सर्कल में गए, मौका हो सकता है पंजाब के लिए। डिफेंस बहुत बढ़िया, लो टैकल, नजदीकी नजरें रखी और खतरे को चाला कुछ पलों के लिए वापस देखना होगा। यहाँ पे फ्लैंक को स्विच किया, बॉल को कंट्रोल करते हुए इस बीच बहुत बढ़िया प्रयास स्ट्राइकिंग सर्कल में, लेकिन डिफेंस लगातार मैन टू मैन मार्क करके स्पेस नहीं दे रहा है। अच्छी सोच यहाँ पे पिछले कुछ मिनटों में ज़रूर अच्छा डिफेंस किया है यहाँ पे कर्नाटक की टीम ने। देखना होगा इस बीच पंजाब लगातार आक्रमण कर रहा है, लेकिन बॉल कंट्रोल इस समय जर्सी नंबर 10 मोहन बीपी इस समय टीम के एक अहम खिलाड़ी। MC कलप्पा, VC विविन, और देखना होगा इस समय वीरेश एस जो कि कैप्टन है। आखिरी मिनट का खेल शेष, मौका है कर्नाटक के पास और गोल आया इस समय शानदार तरीके से। यहाँ पे लगातार बहुत ही खूबसूरती के साथ ये प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। पंजाब की टीम पलक झपकते क्विक अटैक करती है और पंजाब के नाम ये गोल, क्या बढ़िया तरीके से स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए, गोलकीपर के शरीर से टकराई, आखिरी डिफ्लेक्शन। इस समय टच देखें 10-0, एक बड़े अंतर से इस समय जीत की तरफ अग्रसर होती हुई टीम। बहुत ही बड़ी लीड यहाँ पे नजर आती हुई यकीनन तौर पे। और अब सिर्फ मुकाबले में
ज़्यादा वक्त शेष नहीं है, समय धीरे धीरे निकलता हुआ इस समय 10-0 की लीड इस बात की गवाही पेश कर रही है कि मुकाबला पूरी तरीके से अगर देखें, पंजाब ने डोमिनेट किया इस मैच को शानदार तरीके से। अगर देखें इस समय हुचर की आवाज़ इस बात के संकेत, पंजाब की टीम ने यह मुकाबला अपने नाम किया है बहुत बड़े अंतर से, 10-0 से 10-0 से इस मैच को अपने नाम करके मुकाबले की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है उन्होंने। गजब की प्रदर्शन किया। पहला गोल मनदीप सिंह ने 5वें मिनट में, दूसरा गोल गुरसिमरनप्रीत ने 14वें मिनट में, तीसरा गोल वरिंदर सिंह ने 17वें मिनट में, चौथा गोल अर्शदीप सिंह ने 23वें मिनट में, युवराज सिंह ने 30वें मिनट में गोल किया, आकाशदीप ने 36वें में, मनदीप सिंह ने गोल किया 41वें मिनट में, जशनप्रीत सिंह का 47वें मिनट में गोल आया, अनुराग सिंह का फील्ड गोल 55वें मिनट में और आखिरी गोल मैच के आखिरी मिनट में पाल विजय कुमार के द्वारा। लेकिन लगातार डोमिनेट करती रही पंजाब की टीम। मैच के हर स्तर पे हाईलाइट्स में देख सकते हैं बहुत आसानी से लगातार कोशिशें उनके द्वारा और गोल की पोस्ट के अंदर जिस तरीके से उन्होंने आक्रमण करके अपनी टीम को जीत दिलाई, अद्भुत नजर आई। ये वो था ट्रैक फ्लिक खूबसूरत। अर्शदीप सिंह हो, युवराज हो, आकाशदीप हो, मनदीप हो, जशनप्रीत सिंह हो, पूरी टीम गुरसिमरनप्रीत हो, गजब की हॉकी खेली है। हर एंगल से देखें बहुत ही गजब की हॉकी और पूरी तरीके से कर्नाटक जैसी मजबूत टीम को धराशायी कर दिया इस टीम ने। माल का प्रदर्शन यकीनन तौर पे। और देखिए आखिरी टच क्या कहने, ये मुकाबला जीत पंजाब के जाबाज शेरों ने। लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में विकास कुमार और साथ मयूर बरुआ जी। अगला मैच भी आपका इंतजार करेगा। एक और बड़ा मुकाबला होम टीम तमिलनाडु वर्सेस मैच रहेगा, बात करें हरियाणा के बीच से। मयूर जी जुड़ेंगे पहले क्वार्टर के साथ, तो हम वापस आप तक ये लेक्चर पहुंचाएंगे। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए।
फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की। जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से। रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on India, let's win this. फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की। जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से। रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि में तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद।
कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on India, let's win this. फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की। जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से। रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on India, let's win this. फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं ये हौसला नौजवानों का। हॉकी हॉकी
सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि में तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on India, let's win this. फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी, हॉकी, जन जन के सपनों की, भारत के सम्मान की। जय जय हो, जय जय हो, जय हो हिंदुस्तान की। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि में तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on India, let's win this. फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। ये वादा है इस मिट्टी से, इस मिट्टी की संतानों का। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हो
सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे ही इतिहास रचाया जाएगा, 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 जाएगा। हॉकी की रणभूमि पे तिरंगा ही लहराएगा। फिर गूंज उठा है शंखनाद, पारा है लक्ष्य को निर्विवाद। कभी रुकेगी नहीं, कभी बुझेगी नहीं अपनी विजय की जलती मशाल। अब कुछ भी हो कम होगा नहीं, ये हौसला नौजवानों का। हॉकी इंडिया, come on India, let's win this. Please keep standing for the national anthem. Good afternoon, hello, and a very warm welcome to everyone who is joining us for the live broadcast of the last match of day number 5. What an interesting day we have, and it is the home team, Hockey Tamil Nadu, who will be locking horns versus Hockey Haryana, right from North India to the bottom south here at this prestigious venue here in Chennai, in Tamil Nadu, of the 50th edition of the Hockey India Men's National Championship 2025. Behind the mic, I am Mayur Barwa, your host commentator for the first quarter, and along with me, it will be joined by Vikas Kumar for the second. It's been a very, very great day of productive hockey, I believe. And right from the moment it has started out some great numbers. But mostly it has been very much of a single-handedness, I would say, for much of the teams. Haven't had too much of a closely fought contest like yesterday. But again, this Division A match, which has started off with this last match on play, has been absolutely outstanding with Northern Indian counterparts, starting with Uttar Pradesh and Haryana, and then the last match, what a dressing versus Karnataka, Punjab 10-0. What a great match that was. You heard
our Hindi commentator Vikas, getting all those drafted into you. So it has just started this match, the first quarter. Haryana versus Tamil Nadu, and you can hear some shouts coming in from the sparse crowd that we have at this venue. And if they qualify for the final or the knockout semi-final, final, it will be, I'm sure, it will only increase in numbers at this venue. At this Mayor Radha Krishnan Stadium here in the capital city of Chennai, in the state of Tamil Nadu. Wonderful venue for a lovely setup. Huge thank you to the host association, Tamil Nadu, the Sports Authority of India, Ministry of Youth Affairs and Sports, Apollo Hospital, our medical partner, and other concerned authorities who have joined hands for the smooth functioning of and the smooth progress of this 15th Hockey India Sub-Junior Man National Championship 2025. We will be culminating on the 8th of August. And, the yellow jersey is the team from Haryana, and the dark blue, white, tinge of white on the back is the home team, the Hockey Tamil Nadu. In one team which, if they know on their home territory, they play well, it will be an absolute boost for them to come up in this junior category. We also had the dignitaries coming in, and also, of course, our kind sponsors. You could see in your picture at that time during the handshakes. So as I mentioned before, Apollo Hospital and other concerned. Mr. Rajiv Sharma from Jammu Kashmir. We had Mr. Farhan from Delhi and Mr. Anand from Chennai. So thank you so much for your gracious presence and for your wonderful support for the smooth functioning of this 15th Hockey India Men's National Championship, Sub-Junior Men's National Championship 2025. And it always looks so good, isn't it, when you get support from everywhere for the sport to thrive and for the sport to catch new talent, to funnel up new pool across Division C, Division V, Division A. This is what we are going up inside the striking circle. The man, or do I say the boys in yellow, decrease your penalty corner. Is seen so much of them today. And yes, the boys right from north, and I am seated in Haryana from where I'm doing the remote commentary. I'm right at the city here in Gurgaon in Haryana, and so I cannot be biased. I have to be neutral. And anyways, 14 just gets it going, and he'll be having the first honors to put up with his stick. It's Srijan Yadav to do the insertion for the first penalty corner of this match. Here he comes, stops the drag, flattened very hard, but not much power as he probably would have hoped for. But can you see, he was just trying to angle it through, but at the last moment with a deflection to Dulhan Dipesh right from the left. So the scoreline still says 0-0, nothing happening from that penalty corner. Just put your mind back to what Shahrukh Ali did today versus Uttar Pradesh versus Delhi. Huge scoreline to start off today. Huge names which have also cropped up. Because in those names was Uttar Pradesh Hockey versus Delhi 10-1. And then Hockey Association of Odisha winning 5-1 versus Hockey Maharashtra. And then the last match, Hockey Punjab, an absolute thrashing 10-0 versus Hockey Karnataka. I'm seriously, I was surprised. And I seriously thought Maharashtra and Karnataka will at least get some goals. Maharashtra just one goal and Karnataka nothing to show off. It was absolute surprise for me.
But nothing to take away from the bed of players that they have mushroomed over the years for the Indian contingent, and that's Mr. Dilip Tirki and that photo of him of prestigious dignitaries who just graced the occasion on the opening day, along with our office bearers, right from the top management of hockey, including Mr. Bholanath Singh. And the single digits are now the clock. Probably Tamil Nadu might just be feeling the pressure of playing in home conditions. If you see Haryana, it has been who has been great guns, been putting so much into the accelerator position. If you put, and that's on the right hand side on your column, that's where Haryana is going to score. So from left to right, from right to left will attack is the home team Tamil Nadu on the corner. And to tell you, for hockey unit of Tamil Nadu, that's very important. The unit of Tamil Nadu. The goalkeeper is Darwin Leo P, and the captain for today's match is T. Gautam. And the coach for hockey unit of Tamil Nadu is Gunashekar Malayalan. The team manager is Shanmugam V. And for hockey Haryana, the goalkeeper is Nandal Romil, and the captain is Ankur Roar. The team coach is Pradeep Singh Moore. The team manager is Naresh Chaudhary. So that's the composition for hockey Haryana. The umpires for today's match: umpire Abhishek Prashant Tirki and Wadiwala Mohammad Zaid. Right on the center, Jackson at the moment. Going past 7 minutes, almost half of the quarter of the first quarter gone, done and dusted. And it will give you a very generous feeling of how Haryana has gone on their business versus the home team Tamil Nadu. Just getting a good counter-attack, trying to reverse the order there. And I can feel very clearly that's number 7. That is Sanjay from hockey unit of Tamil Nadu. And do that reverse lap. And so if I have to say from the morning, so this is match number 6. 6 matches. Let's start it off with Division B match today. Chhattisgarh Hockey winning 6-2 versus Hockey Bengal. Then Manipur Hockey 6-0 versus Hockey Himachal Pradesh. 4 out of 4 wins for Manipur Hockey in their Division B. And hat-trick of losses, unfortunately, for Hockey Himachal Pradesh. And we're giving you the results for Division A. And to be honest, as I mentioned, I would have hoped for some more goals. I didn't expect the huge thrashing, but again, it's been a very good day. If you compare to both the days from day 4 to day 5, you'll see more close games. In fact, 2 draws. In fact, 3 draws yesterday. Started off with Rajasthan and then Le Puducherry in 10, Uttarakhand and Bihar. What a match that was. And then Mizoram versus Tripura 15-0. And then Hockey HIMACHAL Pradesh losing 0-4 versus Chhattisgarh Hockey. Hockey Gujarat winning 5-3 versus Goans Hockey. Hockey Kerala losing 1-2 versus Manipur. And then Hockey Andhra Pradesh winning 2-1 versus Telangana Hockey. That's all yesterday. But there's very mixed emotions kind of a day yesterday. But today it has been mostly one-sided. That's the reason why I was telling up the score line from yesterday to just refresh your memories. But today it has been very, very much one-sided, be it the 2 matches of Group B or Group A. Let's see what happens in this match, Haryana versus Tamil Nadu. You can easily see as one substitute comes in for hockey unit of Tamil Nadu. It's getting into insertion zone, but that's the area where Haryana will be. Oh, that comes the second penalty corner, and this will be for the boys in yellow. Haryana, first time unlucky. Are they lucky for the second time? Get into a huddle, just getting more seriously. And the home team, anyways, with the pressure playing in their home territory, now gets the pressure very much double when you
And that's the dugout and the coach, the management from Hockey Tamil Nadu. That's Gunashekar Malayalan on final, who has taken the insertion for the penalty corner. The second one, the flick has been done, trying to reverse onto the stick, and thankfully for the goalkeeper, the ball didn't go straight, or else would have moved over him and onto the goal post. What a complete reversal from jersey number 9 across to 10. So Rorankur, captain, who received the insertion, and it was left for Gurman Singh to get it. I think that the strategy was right, not to force it too quickly, but again, only for the reboundation to happen. The ball didn't go inside the goal post. Less than 5 minutes now remaining here in the first quarter. 10 minutes have gone by. We have seen some good hockey, but possession 70%, 70-75% possession. I would say more to the sticks of Hockey Haryana. Not that I'm sitting in the territory, I'll be bombarded with questions, but because, of course, what you can see is more for the yellow army to have got much of the stick. Not even that you can see they have not been able to go into the zone of the striking circle for Haryana. That's how tight they have been, not allowing the hockey unit of Tamil Nadu to come even remotely close. You can see huge gaps between every one of them, just playing it up. I think probably the defensive target at the moment with strategies, long passes coming on, and now inside the striking circle for Haryana. Some commotions happening. It almost seems like a fish market sometimes. He's trying to scamper for the ball right from the center line. That's Gurman Singh, beg your pardon, not Gurnam, Gurman, M-A-N. There's one fishing through on the offside. But again, you can see the player than the stick, he was almost making him conscious with his hand, almost like playing hide and seek. It's a very nice aerial. What a nice aerial. This is almost inside the striking circle, despite just an advantage. Sticking through, trying to reverse. It's not a very strong defense of hockey unit of Tamil Nadu, but still, unfortunately, Hockey Haryana still trying to find out an answer. Exactly 3 minutes remaining now from here on. But I feel Haryana should have at least had a goal by now on. If I have to say very proportionally correct of how the way they have started, it's a long scoop. Unfortunately, finding the stick of the opposition. 2.5 minutes from here on. Time has quickly finished off, getting evaporated here. But if you just go back of how they have started and how ultimately probably Haryana will be finishing, they might just be a little disappointed, to be honest. Long pass. In finding the stick of Tamil Nadu. I think in the last 3-4 minutes it's been little slow, as another substitution comes in for hockey unit of Tamil Nadu. You can see right from the corner there. What a beautiful eagle-eye view of the camera work. This is a huge shout out to our production crew also for getting these beautiful pictures. We started off on the 28th of July. We're finishing on the 8th of August. Our commentary panel includes our senior most pro, Mr. Shami Malan, myself, Mayur Barwa. We have Vikas Kumar and Arbaz Khan. And, have been said, Arbaz Khan is going to join us tomorrow. He's not there. And I hope there has been a beautiful start to the tournament of the Women's National Championship at Kakinada in Andhra Pradesh. Just saw the beautiful images coming in from there, and there has been some good crowd coming in at Kakinada. So I just hope that that motivation of carrying the crowd pool are also being here at Chennai, at this Mayor Radhakrishnan Stadium. Less than a minute now remaining. 0-0 from the corner. We're trying ample of things
to be footed correctly, left and right. Oh, this is brilliant dribble! What a dribble! Look at that, showing his skills. Ah, that's just making the mind confused. Oh, should he go behind? He have to go behind because forwards it will be out of bounds. But absolutely wonderful dribble that was to see. And show the best of the techniques in the sub junior category. This will really be helpful as you move up the ladder. Just 15 seconds. Huge aerial into the striking circle. Can it be a goal? Oh, how close it was! Could have been the first stop before the hooter came up. Just at the fag end, it could have been one for Haryana. And the hooter has finally come up to signal the end of the first quarter. Tamil Nadu could have been reeling behind the goal, headed, come and sneaked inside. So that's the result, 0-0, yet to open their account. This is Mayur Barwa. I'll be signing off until I'll be joining in the third quarter. But for the second quarter, it will be the wonderful running commentary. You love that voice. It's the voice of one and only Vikas Kumar for the second quarter. थैंक यू सो मच मयूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही शानदार मेज़बानी और दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं आमने सामने। हॉकी हरियाणा, हॉकी अगर बात करें तमिलनाडु के बीच ये मुकाबला, दिलचस्प मेज़बानी इस समय। पहला क्वार्टर गोललेस रहा है, लेकिन दूसरा क्वार्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हरियाणा जो कि येलो जर्सी पे नज़र आ रही है, येलो ब्लैक में। तमिलनाडु इस वक्त देख सकते हैं वाइट और ब्लू कलर की जर्सी में, ये तमिलनाडु की टीम। शानदार ये मुकाबला दूसरे क्वार्टर की शुरुआत होती हुई। हरियाणा येलो जर्सी में लगातार अटैक कर रही है। कप्तान है इस समय अंकुर रोड, और इस टीम की अगर बात करें, सृजन यादव, निखिल राणा, तुषार, सौरभ, वीर कुमार, आदित्य, साथ ही साथ प्रिंस, ऋतिक, साहिल, बड़ी कमाल की टीम। तमिलनाडु भी कम नहीं है, तमिलनाडु बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, होम टीम है, जो कि टी गौतम ने की कप्तानी में टीम खेल रही है। संजय ने इस टीम में, प्रसन्ना पी, साथ ही साथ मोहित सूर्या, और इस बीच हरियाणा के लिए बॉल लेकर के जैसे नंबर 13 बॉल के साथ इस समय निखिल राणा कोशिश यहाँ पे होती हुई अटैक बिल्ड करने की, लगातार खूबसूरती के साथ ही रोमांचित करने वाला पल। हरियाणा की टीम इस समय अटैक पे है, स्ट्राइकिंग सर्कल के नज़दीक जाने की कोशिश। डिफेंस का ओवरलोड है, डिफेंस बहुत बढ़िया वहाँ पे, जैसे नंबर 12 निशेष एम मौजूद हैं, जिन्होंने इस समय खतरे को टाला, लेकिन स्ट्राइकिंग सर्कल की तरफ भी खतरा मंडरा रहा है इस समय। बॉल पोजीशन अभी भी हरियाणा के पास। हरियाणा ने काफ़ी खिलाड़ी कमिट किए हैं फॉरवर्ड लाइन में, जो लगातार नजर आ रहे इस टीम के लिए। खुद कप्तान को मिडफील्ड से यहाँ पर राइट फ्लैंक से जाने की कोशिश, जैसे नंबर 11 बॉल के साथ इस समय सौरभ गोयत, बहुत ही शानदार खिलाड़ी ये भी लेना होगा। पिछला मैच पंजाब ने वन साइडेड जीत अर्जित की, लेकिन हरियाणा पंजाब हॉकी में बड़े नाम हैं, यकीन तौर पर कोशिश करेंगे यहाँ पर अपनी जीत अर्जित करना, क्योंकि दोनों टीमों के लिए पहला मुकाबला है। तमिलनाडु भी होम टीम है, बहुत अच्छी टीम है अभी तक। हरियाणा के आक्रमण को बहुत अच्छे से इन्होंने सामना किया है। राइट फ्लैंक से पास खूबसूरती के साथ, जैसे नंबर 13 बॉल के साथ इस समय निखिल राणा, फॉरवर्ड लाइन के तेज तर्रार खिलाड़ी निखिल राणा फ्लैंक को स्विच किया, लेफ्ट फ्लैंक से अब जाने की कोशिश।
मैच के अंपायर की बात करें जहाँ पे मोहम्मद जैद और अंपायर अभिषेक प्रशांत तिर्की दोनों अंपायर साथ ही साथ अगर देखें स्कोरिंग जज पॉल एल्विन और विक्रम डी जो कि टाइमिंग जज की भूमिका में रिजर्व अंपायर है उमेश दिनेश हैं टेक्निकल ऑफिसर। ये ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी टीम है। फिलहाल तमिलनाडु के लिए बहुत अच्छा प्रयास इस समय शानदार तरीके से जैसे नंबर 10 और 12 मौजूद थे निरंजन और साथ ही साथ अगर बात करें नीतीश एम कोशिश उनके द्वारा की गई समय प्रयास बहुत बढ़िया उनके द्वारा लेकिन ठीक तरीके से एक नियोजित आक्रमण नहीं शानदार तरीके से ये मुकाबला अभी तक घटित होता हुआ इससे दूसरे कोचों में कमाल के रोमांच इस समय कलाकार जिस तरीके से ग्रुप रहित रहा मयूर जैसा बता रहे थे दोनों टीमें काफ़ी अटैक कर रही है और काफ़ी बढ़िया हॉकी डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंस है दोनों टीमों की। हरियाणा के लिए जैसे नंबर 10 नजर आ रहे हैं इस समय गुरमान सिंह बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी ये भी उनके कंधों पे अब दारोमदार रहेगी इस समय क्या रणनीति रखते हैं आने वाले वक्त में ये देखना बहुत अहम इस समय राइट फ्लैंक से जाने की कोशिश ये मुकाबले का अगर देखें इस समय दूसरा क्वार्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बैटल इस समय दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला इस समय और खास करके देखिए तमिलनाडु जर्सी नंबर 17 होम क्राउड के बीच खेल रही टीम कोशिश उनको बॉल नियंत्रण दिया अपने साथी खिलाड़ी को दिया हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास तुषार के द्वारा हरियाणा के हाफ में बॉल अच्छा रोटेशन इस बीच फ्लैंक का यूज करके हरियाणा की टीम कोशिश कर रही है इस मुकाबले में गोल करने की प्रयास उनके द्वारा जर्सी नंबर 13 बॉल के साथ हरियाणा के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं इस समय निखिल राणा जो लगातार आपको मिडफील्ड में और फॉरवर्ड लाइन में नजर आ देंगे निखिल राणा लगातार अपनी टीम की उम्मीदों को बढ़ाते हुए स्ट्राइकिंग सर्कल के नज़दीक पहुंचने की कोशिश बेहतरीन ये माहौल इस समय खेल के लिए शानदार तरीके से ये मुकाबला अभी तक परिघटित होता हुआ दिलचस्प रोमांच के बीच ये मैच अभी तक देखना होगा अंपायर दोनों ही इस समय मैच के मोहम्मद जैद खान और उनके साथ मौजूद हैं इस समय अंपायर अभिषेक प्रसाद तिर्की पीछे तमिलनाडु भी लगातार कोशिश कर रही है टीम अटैक बिल्ड करने की राइट फ्लैंक से शानदार डॉटेड लाइन स्ट्राइकिंग सर्कल के पास होम टीम है पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है तमिलनाडु को पीसी मिल गई है और पीसी का कितना फायदा उठा पाएगी टीम इस पेनल्टी कॉर्नर का ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा तमिलनाडु के खिलाड़ी एकजुट होते नजर आ रहे हैं इस वक्त गौतम के खूबसूरत अगर बात करें नेतृत्व में लक्ष्य पंक्ति पे निगाहें रहेगी हरियाणा के गोलकीपर पे किस तरीके का सेव करते हैं इंजेक्शन के लिए पहुंचेगी टीम इस पेनल्टी कॉर्नर को लेने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस वक्त शानदार तरीके से ये मुकाबला अभी तक देखने को मिलता हुआ जबरदस्त रोमांच के बीच इस बीच कोशिश यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से रीपेनल्टी का इशारा अंपायर का रीपेनल्टी का इशारा इस वक्त जर्सी नंबर 16 गए थे बात करने के लिए कप्तान गौतम और बहुत ही शानदार तरीके से इस समय प्रयास किया गया था हरियाणा के गोल पोस्ट पे खतरा मंडरा रहा इस समय होने का काबिल तारीफ यहाँ पे ये मुकाबला इस बीच होता हुआ दिलचस्प रोमांच के बीच ये मैच 15वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आज ये 5वां दिन और हम बहुत धन्यवाद देते हैं अपने सभी स्पॉन्सर्स का उड़ीसा इंडिया बेस्ट ये टैगलाइन है स्पोर्ट्स के लिए हॉकी के लिए बहुत ही सराहनीय भूमिका कार्य फिलहाल इस बीच देखना होगा रणनीति क्या रहती है लगातार इस समय प्रयास होते हुए और हरियाणा के डिफेंस लाइन में देखिए गोलकीपर के अलावा जिस तरीके से 4 डिफेंडर फर्स्ट रशर्स के साथ नजर आते हैं इसमें प्रिंस है ऋतिक है आदित्य और गोलकीपर इस समय सहजदीप सिंह इंजेक्शन वेरिएशन के साथ कुछ किया शॉट लेने की कोशिश लेकिन खतरा इस समय कुछ पलों के लिए टल गया
बहुत बढ़िया तरीके से इस समय तमिलनाडु की टीम ने डिफेंस किया वहाँ पे, प्ले को टाला इस समय। शानदार ये मुकाबला इस समय, अंपायर काफ़ी फैनी नजरें रखते हुए दोनों ही, और ये थोड़ी सी चिंता का विषय रहेगी यकीनन तौर पे तमिलनाडु के लिए भी, क्योंकि जिस अंदाज में भी टीम थोड़ा प्रेशर फील कर रही है हरियाणा जैसे स्ट्रॉन्ग साइड के खिलाफ, लेकिन तमिलनाडु वो टीम है। सीनियर नेशनल में अगर बात करें, कार्तिक सेल्वन जैसे प्लेयर दिया है जो इंडिया के लिए खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कार्तिक सेल्वन हो, उन्हें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ जो हुई थी जिसमें भारत चैंपियन बना था, वहाँ पे खेले थे और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था उन्होंने। यकीनन तौर पे काफ़ी संभावनाएं हैं तमिलनाडु के पास। इस बीच देखना होगा क्या रणनीति रहेगी अभी तक मुकाबले में। 0-0 स्कोर लाइन इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में विकास, मेरे साथ मयूर बरुआ, साथ में अगर बात करें हमारा पूरा कमेंट्री पैनल, शमीम आलम जी सीनियर कमेंट्रेटर, अरबाज, पूरी टीम इस समय, सारी हमारे प्रोडक्शन टीम, सभी पदाधिकारी। इस बीच देखना होगा हॉकी इंडिया के ऑफिसर से हरियाणा को ऑफिशियली बात करें, बॉल कंट्रोल लेते हुए कुछ किया खूबसूरती के साथ, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने की कोशिश। हरियाणा के खिलाड़ी तेज तर्रार हॉकी के लिए जानी जाती है ये टीम, और जिस अंदाज में अभी तक ये हॉकी दिखा रही है, बैक पास किया साथ ही खिलाड़ी को, रणनीति क्या रहेगी ये देखना बहुत अहम। मिडफील्ड में खेल होता हुआ कमाल की हॉकी आज लगातार सुबह से ही आप एक्शन देख रहे हैं। सुबह 6 बजे से हम आप तक सीधा प्रसारण लगातार पहुंचा रहे हैं हॉकी इंडिया मीडिया चैनल पे। जिस तरीके से ये मुकाबला अभी तक परिघटित हो रहा है, रोमांचित करने वाला क्षण, हर एक मैच के साथ दिलचस्पी और बढ़ती जा रही है। दोनों स्ट्रॉन्ग डिफेंस से जुड़ी हुई टीमें हैं, काफ़ी कमाल की डिफेंस लाइन है दोनों टीमों की। प्रदर्शन यकीनन तौर पर अगर देखें नीचे स्तरीय दोनों टीमों का, फिलहाल हरियाणा एक फिर से देखना होगा हरियाणा की कोशिश, आक्रमण लगातार बनाते हुए, बहुत ही शानदार प्रयास उनके द्वारा। हरियाणा के लिए जो आज अहम भूमिका अगर देखें, उनको रॉर कप्तानी की भूमिका में है आदित्य हैं, वीर कुमार, ऋतिक, प्रिंस, साहिल, सृजन यादव और निखिल राणा, जो कि लगातार मिडफील्ड में अच्छा कार्य कर रहे हैं। निखिल राणा, टी गौतम, बहुत बढ़िया खिलाड़ी इस समय, और तमिलनाडु के लिए लगातार इस समय अच्छे मूव्स बनाते आर्यनजीत, निरंजन, विश्वेन जैसे खिलाड़ियों पे। ये है बेंच इस वक्त देख सकते हैं हरियाणा का, जहां कोच इनके मौजूद है। हरियाणा के कोच प्रदीप सिंह मोर बहुत शानदार कोच है, बहुत अनुभवी कोच है, अपने समय के शानदार प्लेयर भी रहे हैं प्रदीप सिंह मोर, देख सकते हैं मौजूद हैं। उनके साथ मैनेजर टीम के नरेश चौधरी, और ये है इस समय दोनों तमिलनाडु की भी कोच की भी तारीफ करनी होगी, संगमुगम भी और मलयालन गुणाशेखर मलयालन, और बात करें संगमुगम भी, बहुत ही शानदार ये भी बात करें तमिलनाडु के कोच और मैनेजर, क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे। अच्छा फाइट कर रही थी, बहुत ही बढ़िया हॉकी देखने को मिल रही है कि तौर पर शानदार तरीके से। गोल स्कोर अभी भी होना बाकी, अगर देखें 0-0 स्कोर लाइन, जबरदस्त हॉकी की झलक यकीनन तौर पे, रोमांचित करने वाला पल। वक्त धीरे धीरे निकल रहा है, मिडफील्ड में खेल होता हुआ इस समय। गेम प्लान बहुत ही शानदार दोनों टीमों का, स्पेशली अगर देखें हरियाणा जो आक्रामक और तीव्रता के साथ हॉकी खेलने के लिए जानी जाती है, ये इनकी स्ट्रेंथ रही है हरियाणा की। तेज तर्रार हॉकी इनकी पहचान है। हरियाणा ने हॉकी के क्षेत्र में बड़े नाम दिए हैं, और तमिलनाडु भी लगातार लेगेसी कमाल कर रही है दोनों ही स्टेट की टीमों की बात करें। और यहाँ सब जूनियर 15th नेशनल के इस शानदार मेजबानी में लाइव एक्शन आप देख रहे हैं, बेहतरीन ये कारवां खेल का हॉकी इंडिया के इससे खूबसूरत इशारा इस समय, और देख सकते हैं जिस अंदाज में अभी तक ये मुकाबला घटित होता हुआ दूसरे क्वार्टर की धीरे धीरे समाप्ति की तरफ।
थोड़ा सा पेस डाउन किया है दोनों ही टीमों ने। तो रफ्तार हमने हरियाणा का शुरुआती लम्हों में देखा था, थोड़ा सा गेम को स्लो डाउन किया, शॉर्ट पासेस, एक अलग स्ट्रैटेजी बॉल पे, अपना ज़्यादातर बॉल कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश, और अच्छी सोच भी है, जल्दबाजी ना करें, ज़्यादातर बॉल अपने नियंत्रण में रखें, यही कार्य करते हुए। और इसी प्रयास में समय जैसे नंबर 12 हरियाणा के लिए तुषार मौजूद है, तुषार ने समानांतर पास किया, साथी खिलाड़ी जैसे नंबर 2 इस वक्त साहिल के लिए स्लैप शॉट के साथ स्ट्राइकिंग सर्कल में दाखिल हुए, तेज तबार हिट ली, बहुत जल्दबाजी कर दी अंकुर रोड ने, कप्तान स्वयं अंकुर रोड की ये कोशिश उतनी कारगर नहीं, बहुत जल्दबाजी की, आइए नजर डालते हैं रिप्ले में। आसान नहीं होगा यहाँ से गोलकीपर को बीट कर पाना, और गोल माउथ के नजदीक जाना था। इस बार थ्रू पास बहुत शानदार हरियाणा के लिए, क्लोज से वह स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए, बहुत ही सुंदरता के साथ ये प्रयास किया गया, बहुत ही लाजवाब यकीनन तौर पे। और मुकाबले में हरियाणा की टीम किस तरीके से देखिए स्ट्राइकिंग सर्कल पे दाखिल होकर के पेनल्टी कॉर्नर बना लिया है बीसी, खूबसूरती के साथ ये पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पे अर्जित किया इस टीम ने। जबरदस्त हॉकी की झलक यकीनन तौर पे, कमाल का माहौल इस समय, तो जिस अंदाज में देख सकते हैं एक चूतका समन्वय तालमेल, ये वो बेंच इस वक्त नजर आता हुआ। तमिलनाडु का थोड़ा सा निराश होंगे तमिलनाडु के खिलाड़ी तुषार सौरभ गोयत, इन पे निगाह है। रची कॉर्नर लेने के लिए समय हरियाणा, ये है हरियाणा के कोच और मैनेजर प्रदीप सिंह मोड और नरेश चौधरी। फिलहाल इंजेक्ट किया ड्रैग, लेकिन फर्स्ट प्रेशर, बहुत ही शानदार रन किया उन्होंने, खतरे को डाला कुछ पलों के लिए, बेहतरीन तरीके से उनका प्रयास। फर्स्ट प्रेशर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, भारतीय टीम के लिए अमित रोहिदास किया करते हैं, जिससे अंदाज में शानदार फर्स्ट रश की भूमिका अदा की, खूबसूरती के साथ इस समय तेज तरार आई हुई बॉल को कैसे आप नियंत्रित कर पाते हैं, ये भी एक बहुत खूबसूरत स्किल मानी जाती है। शानदार तरीके से हॉकी बार फिर से हरियाणा काउंटर अटैक, लगातार अटैक पे खूबसूरती के साथ इस बार कर दिया कमाल, गोल आया है, पहला गोल हरियाणा के लिए। हरियाणा की टीम जिस अंदाज में खेल रही है, इन्हें रोकना बहुत मुश्किल, देख सकते हैं कमाल के अच्छे लिंकअप प्ले, खूबसूरत यहाँ पे पासिंग, और आखिर में फिनिश अद्भुत था ये खिलाड़ी का। दोषी नंबर 9 खुद कप्तान अंकित अंकुर रोर शानदार कप्तानी कर रहे हैं, और ये बेंच हरियाणा का काफ़ी संतुष्ट है इस तरीके के अद्भुत प्रदर्शन की वजह से। गोल आया है 1-0 की बढ़त पे हरियाणा, अंकुर रोर कप्तान से नातान चल पड़े हैं, बढ़िया रणनीति फॉरवर्ड लाइन से लेकर मिडफील्ड डिफेंस, जहाँ भी उनकी आवश्यकता होती है उसे अनुरूप अपने आप को लेकर आते हैं और टीम के लिए बेहतर कार्य करते हुए। फिलहाल नजर डाले 1-0 की बढ़त हरियाणा के पास, शानदार तरीके से यह मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ। दोनों ही अंपायर हैं, जहां जैद मोहम्मद खान और दूसरी तरफ है अभिषेक प्रशांत की अंपायरिंग की भूमिका में। हॉकी इंडिया के इस तमाम ऑफिसर्स भी अपनी अहम भूमिका। समानांतर पास इस समय साहिल बॉल के साथ हरियाणा के, येलो और ब्लैक जर्सी में है हरियाणा, बैक पास किया तेज मिश्र रेखा के पास, देखना होगा इस समय रणनीति क्या रहेगी। इस समय मिडफील्ड में खेल होता हुआ धीरे धीरे वक्त निकल रहा है, प्रयास यहाँ पे जरूर इस समय तेज तरार हिट लगाने की। तमिलनाडु की टीम भी अच्छी टीम मानी जाती है, डिफेंस इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ खिलाड़ी कमिट करने होंगे, फॉरवर्ड लाइन में गोल के चांसेस क्रिएट करने होंगे, मुझसे बेहतर बनानी होंगे, बहुत महत्वपूर्ण इसे नज़रिए से। फिलहाल बॉल कंट्रोल एक वापस से सुंदरता के साथ बॉल पे समय नियंत्रण नजर आता हुआ। गजब का ये रोमांच के बीच ये मुकाबला, इस बीच देख सकते हैं दूसरे क्वार्टर के अब आखिरी मिनट के कुछ सेकंड्स का खेल से हरियाणा की टीम कोशिश करती हुई इस बार बॉल को ट्रैप नहीं कर पाए, साइड लाइन से बाहर। अब मौका होगा तमिलनाडु के पास बॉल को नियंत्रित करके समय आगे ले जाने की। हरिकृष्ण बॉल के साथ, लेकिन बहुत जल्दी बॉल पोजीशन गंवाया, ये थोड़ी चिंता के विषय। दो खिलाड़ी आपस में टकराते नजर आए वहाँ पे, बॉल पोजीशन हरियाणा के पास, देखना होगा।
लेफ्ट फ्लैंक से कोशिश यहाँ पे रोकने का प्रयास, स्पीड बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए प्रॉपर, बॉल चले गए बेस लाइन से बाहर। शानदार तरीके से यह मुकाबला घटित होता हुआ है। हरियाणा के जर्सी नंबर 6 में नजर आ रहे हैं आदित्य कुमार, उम्मीदों की किरण जगाने का प्रयास। हरियाणा 1-0 की बढ़त पे। कप्तान अंकुर रोर का ये गोल बहुत लाजवाब नजर आया था, अंकुर रोर का गोल, और इसी वजह से अगर देखें जबरदस्त प्रदर्शन उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ इस बीच। हुटर की आवाज पहले आ चुकी थी, इसलिए गोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन बहुत जबरदस्त भूमिका अदा की हरियाणा की टीम ने। शानदार खेल दिखाए हैं, अद्भुत गेम का प्लान किया है और इसका एग्जीक्यूशन बेहतरीन। अगर बात करें लिंक का प्ले, अच्छी तालमेल, समन्वय देखने को मिला, शानदार। कप्तान ने स्प्रिंट से लीड किया अंकुर रोर ने। फिलहाल 2 क्वार्टर की समाप्ति के बाद स्कोर 1-0 की बढ़त पे है हरियाणा। कमेंट्री बॉक्स में विकास जुड़े रहिए हमारे साथ हॉकी इंडिया यूट्यूब चैनल पे, हमारे इंग्लिश कमेंटेटर। वैसे ही तीसरे क्वार्टर की शुरुआत होगी, मयूर बरुआ जी होंगे आपके साथ। मयूर इलेक्शन वापस लौटेंगे।
A very good evening to everyone again for the last quarter of this match. It's Haryana versus the home team Tamil Nadu. One for Haryana, none for Tamil Nadu at the moment. Giving ample pressure in this match. It's going to be a very stupendous one, to be honest. Delays in what we would have definitely hoped for some more goals coming in, but Haryana finally opening the account here. And I don't know how many of you must be surprised of seeing not many goals coming in the first two quarters, but finally one did come in the second one from the captain Rorankur. It also came in the 28th minute, the third quarter. Behind the mic, I am your host commentator Mayur Barwa, and thank you so much Vikas for getting all the action there in the second half. After this, it will be the last one. Oh, the umpire just had his hand inside a pocket. It must have been absolutely a dreadful one. But he's seen something else. I don't want to mention the name of the color. It might have been a yellow, it might have been a green. There have been so many of them infringing. That 5-minute proves so much crucial, isn't it? No one wants to do that. And straight up, some aggression being shown, some attacking hockey. This will be proving very much consequential. They have to go the distance. And we have this wonderful venue that you are playing this 15th edition of the Hockey India Sub-Junior Men's National Championship 2025 in this Mayor Radhakrishnan Stadium here in the capital city of Chennai in the state of Tamil Nadu. Lovely venue, crisscrossing the buildings, the nature, and also the railway track. I remember yesterday evening I mistook the honk, if I have to say, of the train to be the blow of the hoota of this venue. It's just few minutes remaining. It's a nice scoop, nice aerial. And the whistle, some foul play. That Tamil Nadu will look to press their guns even more what they've done in the first two quarters. First quarter was absolutely 0-0. But I believe in that quarter, Haryana definitely was on the charge, should have been at least a goal. This time the side changes for the third and the fourth quarter. From the right to the left is where Haryana will be attacking. And from the left to the right will be the home team, the hockey unit of Tamil Nadu. And they're playing the captaincy, you have to say, for hockey unit of Tamil Nadu. The Gautam is the captain today. And Darwin Leopi is the goalkeeper from the right, almost trying to slap it, sweep it, but couldn't get it. Almost falling, got little imbalance while trying to put the ram shot. And for Hockey Haryana, the captain is Rorankur, already had a goal. And the only goal to have been scored in this match in the 28th minute in the second quarter. And the goalkeeper is Nandal Romil. Number 16 in the half time when sometimes gets really tough for the home team, especially when you have a sparse crowd building, giving very much on the backing at the striking circle. 1 pound. Oh, he is just closing his eyes and looking upstairs. Oh, what a good pass this was for him. And probably got blindfolded because of the goalkeeper trying to stop the ball from going inside. And that's where probably his equation of his body balance with the stick got somewhere, didn't go in a line. But it was a very nice pass from Srijan Yadav, jersey number 14. I don't know the number who finally ended up trying to go inside. But nice try. This is Hockey Haryana again trying to sweep. It's a nice slap from the right flank. Good just stick of
the home team. The ball goes out of bounds. Very speedy approach. This is from Hockey Haryana. Less than 5 minutes, but you can see they know how important this is. With just one, they might just sometimes get frustrated and don't know what the coach must have been saying there. Also, the number of playing years you have behind, they must have also got up from those sub-junior days onto the junior and to the senior category. So those days just gets reflected with your words. Now inside again the striking circle. There's trying to cry for a foul play. Reverse order from the stick. But still there. They're still circling across. Haryana is still there trying to put up the ball. Did he signal a penalty stroke? He's all smile, getting swept by the hockey unit of Tamil Nadu. But I feel from a distance, I saw that he signaled a penalty stroke. That will be huge. Generally, you don't see those penalty strokes not yielding a result. Going upstairs, there you go. The rectangle shaped signal from the umpire to use the assistance of the TV umpire. Hockey India of Tamil Nadu wants to go straight up. There's so much of energy getting compounded at one point. He had a smile. He has to bring all his experience under one plate. I have to explain, but you need to do that. They're one goal behind the home team. And now they want to go upstairs. They did. Let's see what transpires. With 9 minutes and 28 seconds to go in this third quarter, it's 1 for Haryana and 0 for the home team, Tamil Nadu. Trying to get some full picture from upstairs using the walkie-talkie. Still wants to go upstairs to have a word with Haryana. And so that's a very good news, because that penalty stroke has been withdrawn.
It's a terrific review from the hockey unit of Tamil Nadu. They survive a hard scare, a massive hard scare to be honest. Or else would have been 2-0. But again, with no goals to show versus one from the opposition, they still haven't taken the danger completely out of the equation. The home team, Tamil Nadu, have to play really out of the skins. Not at the moment, but it's the third quarter. Time is of terrific and highest importance into the striking zone. And this is where Haryana has been very, very strong. I think the power somewhere also got lost during the second quarter. Though they have got one from the blade of the captain, Ror Ankur, in the 20th minute. But still, again, I think somewhere they have also laid a little loose of the hook to allow hockey unit of Tamil Nadu to come back a little stronger despite no goals to score or to show off. It's a very nice diagonal pass, but again, it will go out of bounds, coming from a long way from behind the center line. And there was a huge gap. If you see both the quarters there, I think almost nearly man-to-man marking. Someone to just block it off. Both the sticks, sometimes you use the blockage of your hand also. It's a simple looking pass, but on the right, this is not where Haryana will be scoring. They'll be scoring more on the left. If someone gets enthusiastic saying, why don't you score? Because they're not scoring on the left, they're scoring on the left. They're not scoring on the right, but on the left. A huge vacant area that's unterritoried sometimes. It's almost like saying that the trespassers will be prosecuted. But you have to just find out who's the trespasser, who's the prosecutor. And both of them are not there at all because the land is so much vacuum at the moment. And if I talk about the land, I think somewhere near the goalkeeper, inside the striking line now, gets the clanking of the stick. Oh, he wants to go for a review. He's absolutely confident. Very confident. It's not the captain, it's Sachin from Hockey Haryana. The players just falling by. He's got some injury on the hand. He's actually falling. His face fallen down, but he's got the stick very hardly probably pressed onto his hand. And to get the medical team, and as per the rule, and that's probably as per the rule, is what he's saying. You cannot just run down. There will be probably the official medical assistance coming in. Probably that's what has been called from the umpire. He's still lying there. I don't know whether the call has been for any stretcher or something. Very good. That's from the team itself that he has come up. A bit of a halt of play because of the injury. Haryana 1, Uttar hockey unit of Tamil Nadu still says 0.
and want to check it up. When finished, yes, he'll have to have the assistance of the walkie-talkie. First the injury, and then now he wants to check it up to use the technology. Not much of a game control. Does the umpire say that probably we have your eyes on you? Umpires for today's match, Abhishek Prasad Tirki. Along with him is Mohammad Zayed Wadiwala. The reserve umpire is Umesh Bihine. And the scoring judge is Albin Paul Avi. Tactical officer is Dinesh Malekar. So we're just trying to understand what will be coming in from upstairs. And the 6 minutes and 50 seconds remaining for the end of the third quarter. Just be hoping as probably supporters of Haryana if probably they could have got some more. Or do they have a chance of getting more here? Let's see what transpires from above. But hockey unit of Tamil Nadu yet to open the scoreline at 1-0 at the moment. It's almost like pulling out a cherry out of your pocket. All smiles, and suddenly he pulls out, almost like a magic card, it pulls out a yellow card. And that was because of that, I don't know whether intentional or unintentional, that tussle did happen. Now with that one, he'll have to spend some bit of time outside. 6.5 minutes going on remaining here. It is a third quarter. He's putting at the bottom of the foot, behind the center line now. Haryana still going very strong. It's with just one goal to show. Will not let it easily. Number 9 is bisecting off all the defenders from the left hand, and is giving a very nice pass right almost to the center of the central line. But probably was little too quick to judge. He did very well to go so much ahead of the defenders from Tamil Nadu. The pass was also really good. But the assist from where it should have been was not akin. So it remains the same. That was Raw Ranku, the captain, was marching along with the ball.
from the left flank. Inside the striking circle again. It's Ankur again, the captain. With left and right, it's a good pass. No, that is Puneet, I believe. Was not there. Yep, that's Puneet. He was not there originally in the playing 11. He's a substitute who came in. He was trying to prong it almost diagonally from where the jaws of the goalpost was inside the striking circle after he got the pass from his captain Ankur. One and only goal of the match was being scored by him. It was in the second quarter, the first one being 0-0. Something different. Hockey of Tamil Nadu have to think out of their skins and now have to completely zone themselves onto the game, because after this only just a quarter remaining, which will be 15 minutes, and just a 2 minutes to think by the time they reach everyone to gulp energy and to think what already the coach says it's just 1.5 minutes which remains. So not much of a gameplay remaining for them to quench it. That's what they'll have to just say. So umpire is just asking them to just control their emotions, keep it low down. And it sometimes also leads to the time wasting. We are still inside the sub-junior category. Tempers might flare. We really need to control. Haryana again trying to put it back on track from very far from the right corner. 3.5 minutes remaining. The passes would have to work very much in favorably of hockey unit of Tamil Nadu. That's probably not been having worked keenly for them, if I have to say it with all honesty. Because if majorly it was hockey, if Haryana hockey have really spun the beans by going very forwards with very strongly, Tamil Nadu have sadly have ruined certain advantages which have come to their name. 2 minutes and 50 seconds. It's a nice aerial scoop up, nice control right between the legs, right from the corner. On the left is where they'll be attacking Haryana. Remember, from the delivery to right corner. It's again where they're doing. Oh, good to see a very good sparse crowd coming in from different genders of all age categories. That's what you need, isn't it? As I mentioned before, the Women National Championship had a very good crowd today. To see there at Kakinada in Andhra Pradesh. Oh, that smile! That smile! I seriously thought he was searching for some cards inside his pockets. Well, all in all, the match officials have also done very good in this championship. Day number 5. We still have 7 more days to go after this, excluding 1 or 2 days where there'll be no play. Then we have the knockouts. Then we will have the final. So some way to go in this championship, but not much to go in the match itself. And it's in fact very much in the third quarter, with 1.5 minutes remaining. That's Gurman Singh for Haryana. That pass inside the striking circle, wanting to give a pass. It's a good aerial long shot from the center. Was wanting to slap and loop, but can he get it? It's a cry for a foul play. Umpire hasn't acknowledged it as yet. Him to almost go towards back, but again Haryana has been trying diligently hard. To be honest, was almost getting that shape up for that goal. It's a huge aerial.
Oh, this penalty corner. While he was busy scooping the ball up, while we were trying to count, now 34 seconds are remaining. The previous, I think that was Uttar Pradesh versus Delhi match. Just a second remaining, and the penalty corner was being called for. Now 34 seconds remaining in the third quarter, and it's for Haryana to make the pressure go double. Who's getting it off the stick? Who's sweeping it for the injection? Rampur already has a goal. The striking needs to be clean. The drag was not good enough from the boot of his own colleague. It wobbles up in the air. And the seconds are just moving across very quickly. They also know it. I'm sure they've seen it on the big LED screen. It's a line. It is not tight as the ball goes really from the right and across the goal post. The scoreline will remain the same at 1-0. Seconds just moves out. And Hooter also will come up to stamp the timing to say that the third quarter has finished. 1 for Haryana, 0 for Hockey Unit of Tamil Nadu. Much better resemblance. That's the dugout of Hockey Unit of Tamil Nadu. I'm sure they'll be little satisfied with this with this quarter going by, but it's been a goalless quarter again, remember, but most of the things happen. But what will happen in the last quarter and the last quarter of the day, which will all be from the wonderful voice of my colleague in Hindi, Mr. Vikas Kumar. थैंक यू सो मच मयूर। बहुत ही शानदार कमेंट्री आप तक इंग्लिश में पहुंचा रहे हैं मयूर, और मैं आपके साथ विकास, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पूरी हमारी प्रोडक्शन टीम हॉकी इंडिया के यूट्यूब चैनल पे जो आप तक ये कवरेज पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा ने एक गोल किया और वो गोल कप्तान के द्वारा गोल नजर आया था, और अब चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग क्वार्टर की शुरुआत हो रही है। तमिलनाडु ने भी बहुत अच्छा खेल दिखाया है, यकीनन तौर पर काफ़ी बढ़िया संघर्ष कर रही है टीम, यकीनन तौर पे काफ़ी अच्छा प्लान करके आई है। और देख सकते हैं यहाँ पे स्कूप और कंट्रोल करने का प्रयास तमिलनाडु के खिलाड़ी इस समय मुकेश्वरन पी मौजूद हैं। टी गौतम टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और यहाँ हरियाणा के लिए बहुत सुनहरा मौका। 5 मीटर डॉटेड लाइन, स्ट्राइकिंग सर्कल में दाखिल हुए, बॉल को इंटरसेप्ट किया, मांग कर रहे हैं इस वक्त, जी हाँ, फुट में टकराई और पेनल्टी कॉर्नर का इशारा आ चुका है अंपायर का। जैद मोहम्मद और अभिषेक प्रशांत तिर्की दोनों ही अंपायर, और साथ में स्कोरिंग जज एबी पॉल एल्विन और विक्रम डी टाइमिंग जज हैं। टेक्निकल ऑफिसर मिलेकर दिनेश और उमेश है रिजर्व अंपायर। ये है गोलकीपर के साथ साथ डिफेंडर पोजीशन नंबर 8 जहाँ पे उथुंथन इसके मौजूद हैं। गोलकीपर पे निगाहें रहेगी लियो पी ब्राविन, और यहाँ पे हरियाणा के लिए इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं सृजन यादव। सृजन यादव शानदार खिलाड़ी है, अच्छी कॉर्नर लेने के लिए इंजेक्ट किया, स्टॉप क्रैक, शानदार तरीके से समय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जर्सी नंबर 17 यहाँ पे, और री पेनल्टी का इशारा उनके फुट में टकराई यहाँ पे। जर्सी नंबर 17 जहाँ पे जी साइन से थू मौजूद थे,
तमिलनाडु के लिए जी साई से थ्रू बहुत अच्छी कोशिश उनकी, रणनीति बन रही है वापस। सृजन यादव पिछली बार इंजेक्शन के लिए गए थे, अब अंकुर रोर खुद कप्तान गए हैं इंजेक्शन के लिए। अंकुर रोर देखना होगा इस समय इस पेनल्टी कॉर्नर को लेने के लिए क्या रणनीति रहती है अंकुर रोर की, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण इस समय। शानदार यह मुकाबला खेल कुछ पलों के लिए रुका हुआ, रेफरल की मांग की जा रही है, अंपायर बात कर रहे हैं इस वक्त। देखना होगा क्या डिसीजन आता है, ये बहुत अहम इंतजार इस निर्णय का। बेहतरीन तरीके से ये मुकाबला इस समय घटित होता हुआ अभी तक। डिसीजन का इंतजार, अंपायर वीडियो रेफरल के माध्यम से बात कर रहे हैं थर्ड अंपायर से, वहां पे क्या निर्णय आता है हम सब प्रतीक्षारत हैं। जी आखिरकार इशारा आया है पेनल्टी कॉर्नर का इस समय। बीसी जो ऑन फील्ड अंपायर ने दिया था बरकरार रहेगा हरियाणा के पक्ष में। हरियाणा काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है हॉकी में, तमिलनाडु भी कम नहीं है, तमिलनाडु भी बहुत अच्छी टीम है। देखना होगा इंजेक्शन के लिए गए हैं अंकित रॉर, यहाँ पे कोशिश इस समय डिफ्लेक्शन की कोशिश, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने का प्रयास। इस बीच बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला पूल ए का डिवीजन ए का मैच है, मैं चाहूँगा डिवीजन ए में स्ट्रॉन्ग टीमें नजर आती हैं जिसमें तमिलनाडु और हॉकी हरियाणा आमने सामने है। बहुत ही शानदार तरीके से ये डिवीजन ए के मुकाबले में दोनों टीमें आमने सामने, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जिस अंदाज में ये मुकाबला अभी तक घटित हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अलग अलग डिवीज़न में टीमों को डिवाइड किया गया है और शानदार तरीके से ये एक बहुत अच्छी सोच है हॉकी को तराशने की। देख सकते हैं जहाँ पे पूल ए में उत्तर प्रदेश, हॉकी मध्य प्रदेश और दिल्ली है। पूल बी में अगर देखते दादर नगर हवेली और साथ ही साथ अगर देखें हरियाणा, तमिलनाडु। पूल सी में नजर डालें हॉकी पंजाब, हॉकी झारखंड और हॉकी कर्नाटका। पूल डी में हॉकी एसोसिएशन उड़ीसा, हॉकी चंडीगढ़ और हॉकी महाराष्ट्र है। और फिलहाल इस बीच फोर्थ क्वार्टर के खेल जारी, लगातार येलो जर्सी में, येलो ब्लैक में हरियाणा, कोशिश उनके द्वारा होती हुई इस समय लगातार आक्रमण बनाए हुए हैं। स्लैप शॉट बहुत दूर से, रोमांचित जरूर करेगा लेकिन गोल नहीं मिल पाएगा क्योंकि गोल के लिए बुनियादी रूल जो है स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर से बात करें अनिवार्य है। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर से हिट करना, डिफ्लेक्ट करना या पुश करना, किसी भी तरीके से गोल पोस्ट के अंदर डालना। फिलहाल नजर डालें से फोर्थ क्वार्टर में शानदार तरीके से अभी तक मुकाबला हॉकी तमिलनाडु 1-0 की बढ़त पे, हॉकी हरियाणा तमिलनाडु की बढ़त पे हरियाणा इस समय लीड में है। और हरियाणा के लिए जिस तरीके से इस समय खिलाड़ी इस समय जैसे नंबर 9 टीम के कैप्टन अंकुर रोर बहुत ही शानदार है, अभी तक खिलाड़ी है, बेहतरीन प्रदर्शन किया अंकुर रोर ने। और इस बार जर्सी नंबर 9 अंकुर रोर, डिफ्लेक्शन की कोशिश, बहुत शानदार मौका, जर्सी नंबर 6 मौजूद था आदित्य कुमार, इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता था।
अंकुर और आदित्य के बीच बहुत बढ़िया तालमेल, अच्छा पुश किया था क्विक आकर के। देखिए यहाँ पे शानदार उनको बॉल दी थी, रिफ्लेक्शन की आश में, उम्मीद में, लेकिन ठीक तरीके से इसे बात करें अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। डिफ्लेक्शन उतनी बेहतर नहीं। और अभी भी देखने समय 1-0 की बढ़त नजर आ रही है कि हरियाणा के पास। शानदार ये मुकाबला इस समय जो गोल किया था अंकुर गौर ने, कैप्टन ने, राइट फ्लैंक से लगातार इस समय अच्छे मूव्स बना रही है। टैकिंग अप्रोच हरियाणा का स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर। देखना होगा इस समय रणनीति क्या रहती है। दिलचस्प ये मुकाबला खूबसूरती के साथ रोमांचित करता हुआ ये मैच, कमाल की हॉकी की झलक। जिस अंदाज में ये मुकाबला इस समय घटित हो रहा है देखने लायक। बेहतरीन रोमांच के बीच ये मैच देखना होगा एक बार फिर से। हरियाणा के लिए जर्सी नंबर 12 बॉल को लेकर आगे बढ़ना, तुषार तेज तरार खिलाड़ी बीच में इंजेक्ट करने की कोशिश, बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे बॉल को क्लियर किया डिफेंस लाइन ने। गजब का डिफेंस नजर आता हुआ, कमाल का डिफेंस लाइन इस वक्त काबिल तारीफ, बेहतरी साफ नजर आ रही है। अद्भुत हॉकी की झलक है यहाँ पे। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने की कोशिश, अच्छी कॉर्नर, फुट में टकराई, अंपायर का इशारा इस समय। लगातार हरियाणा का दबदबा नजर आ रहा है जिस अंदाज में गेम प्लान करके आई है टीम। जर्सी नंबर 15 आक्रामक हॉकी खेल रहे हैं मोनू, साथ ही साथ सृजन यादव, निखिल राणा, तुषार, सौरभ गोयल, गुरमान सिंह, कप्तान अंकुर रॉर, साथ ही साथ सचिन, पुनीत, आदित्य कुमार, ऋतिक, साहिल जैसे खिलाड़ियों के ऊपर दारोमदार। वहीं पे तमिलनाडु थोड़ी सी प्रेशर में है डिफेंस पे। अब कोशिश है मोहित, सूर्या, एस, और ये है इस वक्त बेंच हरियाणा का। देखना होगा इंजेक्ट किया यहाँ पे, कोशिश उनके द्वारा होती हुई इंजेक्शन के बाद वहाँ पे गोल करने का, लेकिन इतनी बेहतर तरीके से इसे गोल के रूप में तब्दील नहीं कर पाए, मौके को गंवाया। जर्सी नंबर 2 साहिल मौजूद वहाँ पे। मुकाबला इस समय घटित हो रहा धीरे धीरे शानदार अंदाज में। 1-0 की बढ़त यहाँ पे। रोमांचित करने वाला पल इस बीच से देखने को मिलता हुआ। जर्सी नंबर 9 बॉल के साथ यहाँ पे कोशिश उनके द्वारा स्ट्रेट इस समय पास किया खूबसूरती से। तमिलनाडु के लिए अच्छा कोशिश, आर रंजीत के साथ मौजूद, लेकिन ये बॉल को एरियल बॉल के साथ एक बार फिर से अटैक बिल्ड करने की कोशिश। जर्सी नंबर 13 अविनाश पी, तमिलनाडु की बहुत अच्छी टीम, काउंटर अटैक पे अविनाश पी खूबसूरती के साथ 5 मीटर डॉटेड लाइन स्ट्राइकिंग सर्कल के काफी क्लोज इंटर किया स्ट्राइकिंग सर्कल में बॉक्स के अंदर, लेकिन क्लियर किया डिफेंस ने। बहुत ही शानदार फ्लो टैकल, बहुत ही क्लीन फर्स्ट टच में क्लियर किया है इस समय। लेकिन तमिलनाडु क्विक पासेज, बाला सुंदर शानदार खिलाड़ी हैं बाला सुंदर, बहुत अच्छी कोशिश राइट फ्लैंक से उनके द्वारा, एक्सीलेंट वर्क बाला सुंदर एज वेल एज हरि कृष्णा। पीछे इंटर किया एक बार फिर से स्ट्राइकिंग सर्कल में, हरियाणा की डिफेंस वहां पे खूबसूरती के साथ बॉल को क्लियर करते हुए शानदार अंदाज में ये मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। खूबसूरत रोमांच के बीच ये मैच, कमाल की हॉकी, और जिस अंदाज में ये मुकाबला इस समय घटित होता हुआ। आखिरी क्वार्टर है, चौथा क्वार्टर, इंटरेस्टिंग ये बैटल। सिर्फ 1-0 की बढ़त है, ज्यादा बड़ी लीड नहीं है। तमिलनाडु में कभी भी कम बैक कर सकती है टीम, वापसी हो सकती है तमिलनाडु की। मिडफील्ड में खेल होता हुआ बैक पास किया हरियाणा के खिलाड़ी, बॉल कंट्रोल उनके पास। जर्सी नंबर 2 हरियाणा के लिए साहिल, एरियल बॉल को कंट्रोल किया जर्सी नंबर 12 ने, मौजूद है वहां पर तुषार, एक खिलाड़ी कमिट किया, उन्हें स्पेस नहीं। एरियल बॉल के साथ सीधे स्ट्राइकिंग सर्कल में, बहुत ही बढ़िया प्रयास एरियल बॉल के साथ, खूबसूरत कोशिश, एक और गोल। क्या कहने हरियाणा के, दर्शनीय बेहतरीन सुंदरता के साथ ये गोल किया है। क्या शानदार तरीके से बॉल को देखिए 3 खिलाड़ियों को झुरमुट से निकाला, क्या बेहतरीन इस समय क्लिनिकल फिनिश, क्या स्टीक वर्क है। 3 खिलाड़ियों के बीच से निकाला जर्सी नंबर 8 ने, सचिन ने,
क्या बेहतरीन ये गोल, अद्भुत गोल किया है यकीनन तौर पे। लाजवाब गोल के साथ इस मुकाबले में अब ये मुकाबले को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है। 2-0 की बढ़त इस बीच हरियाणा के पास। हरियाणा थोड़ी सी डोमिनेट करती हुई पूरी तरीके से इस मुकाबले में। और पिछला जो गोल था, अगेन कप्तान अंकुर रोर, कप्तान सीना तान खड़े हैं सामने से और शानदार खेल दिखाते हुए फ्रंट से लीड कर रहे हैं नेतृत्व। अंकुर रोर अपनी टीम के लिए जर्सी नंबर 12 की तारीफ कर रही होगी तुषार, बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक उनका प्रदर्शन देखने को मिलता है। राइट फ्लैंक से हरियाणा वापस अटैक पे। चौथे और आखिरी क्वार्टर में 6 मिनट 20 सेकंड के आसपास का खेल शेष। मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प ये मेजबानी इस समय नजर आती हुई। शानदार हॉकी की झलक यकीनन तौर पे और कमाल का रोमांच इस समय देखने को मिलता हुआ। इस बीच स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जाने का प्रयास हुआ इस समय। बेहतरीन तरीके से यह मुकाबला 2-0 की बढ़त पे यह मैच अभी भी हरियाणा की टीम। एरियल बॉल यहाँ पे प्रशिक्षण के द्वारा क्या रणनीति रहेगी ये देखना बहुत अहम। शानदार तरीके से यह मुकाबला अभी तक के घटित होता हुआ। 5 मिनट 40 सेकंड्स के आसपास का खेल शेष। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बैटल। हरियाणा मैच को पूरी तरीके से कंट्रोल करती हुई शॉर्ट पासेस के साथ कोशिश अपने पास बॉल पोजीशन रखने की। टीम इवेंट्स में हॉकी जैसे खेल में बॉल पोजीशन बहुत मायने रखता है। बीच देखना होगा, बहुत ही शानदार उसका परिणाम मिला। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गए, कमाल का फिनिश, सेंटर किया खूबसूरती से, डिफ्लेक्शन और पुश के साथ गजब का गोल किया है, बहुत लाजवाब। अंकुर रोर, ये खिलाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल है रोर को। और एक और गोल इनके नाम, असिस्ट मिला बहुत सुंदर आदित्य कुमार का। अंकुर निगाह रखिएगा इस खिलाड़ी पे, की प्लेयर है, शानदार प्लेयर, बेहतरीन खेल दिखाते हुए यकीनन तौर पे और अपनी टीम को लीड दिला चुके हैं अभी तक के 3-0 की। 2 गोल बैक टू बैक इसी क्वार्टर में अंकुर रोर के द्वारा। और मैच में पूरी तरीके से कंट्रोल इस वक्त हरियाणा का है और लगातार अच्छी पासिंग, तेज तलवार हॉकी। अभी हमने पंजाब की टीम को देखा 3-0 से नाम किया मुकाबले को। यहाँ हरियाणा की बहुत अच्छी कोशिश, एक बार पुनः गोल पोस्ट के अंदर, लेकिन गोल अलाउ नहीं किया गया। क्या शानदार हॉकी की झलक इस समय देखने को मिलती हुई। बहुत ही शानदार तरीके से इस समय खेल रोमांचित करता हुआ यकीनन तौर पे। आखिरी अब 4 मिनट 10 सेकंड्स के आसपास का खेल शेष। बॉल की हॉकी की झलक धीरे धीरे ये मुकाबले में पूरी तरीके से। और ये हरियाणा के खिलाड़ी इस वक्त बेंच में नजर आ रहे हैं। 2 मिनट का अगर बात करेंगे और फिलहाल इस बीच देखना होगा एरियल बॉल को कंट्रोल करने का प्रयास। लगातार हरियाणा अटैकिंग हॉकी जोन की पहचान रही है। इस तरह हॉकी, अच्छी पासिंग, बेहतर ड्रिबलिंग, शानदार लिंक का प्ले देख सकते हैं। जानते हैं टीम लीड में है तो बॉल ज़्यादातर अपने पास रखते हुए शॉर्ट पासेस के साथ देख सकते हैं। समय पास किया, इस बार विश्वास होता हुआ मौका है तमिलनाडु के पास एक अच्छा अटैक वेट करने का। सुनहरा चांस इस समय, क्या रणनीति रहेगी ये देखना बहुत अहम इस समय। शानदार ये मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ, खूबसूरत रोमांच के बीच ये मैच। 3-0 की लीड और तीनों ही गोल खुद कप्तान ने किए हैं। अंकुर रोर ने गजब की कप्तानी और बेहतरीन प्रदर्शन उनका, लाजवाब परफॉर्मेंस उनके द्वारा नजर आता हुआ। उच्च स्तरीय प्रदर्शन यकीनन तौर पे इस खिलाड़ी के द्वारा और बहुत ही दर्शनीय अभी तक के कार्य किया है। समय 3-0 की बढ़त तमिलनाडु के खिलाफ हरियाणा की। जबरदस्ती से 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 डिवीजन ए का मुकाबला देख सकते हैं। कोच हिदायत देते हुए जो कि बात करें प्रदीप सिंह मोर एक तरफ कोच हरियाणा के, वहीं टीम मैनेजर नरेश चौधरी मौजूद है।
हरियाणा के लिए। वहीं दूसरी तरफ कुना शेखर कोच हैं, कोई अगर बात करें तमिलनाडु के, और संगमगम भी नानसर हैं। और अच्छी टीम है तमिलनाडु भी, हरियाणा काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है यकीनी तौर पे। और आज परफॉर्मेंस पे इनका उच्च स्तरीय, देखिए कितना बढ़िया लिंकअप प्ले, अच्छी पासिंग, खूबसूरत स्किल। जैसे नंबर 6 लगातार क्विक आदित्य कुमार, बहुत जल्दी बॉल को रिलीज किया, कोई भी खिलाड़ी उस वक्त मौजूद नहीं जो बॉल को कंट्रोल कर सके। और खतरा इस समय जरूर यहाँ पे चलता हुआ, शानदार भी मेजबानी इस समय नजर आ रही है। 3-0 की बढ़त, 2 मिनट से कम का खेल शेष। हरियाणा अभी भी अटैक पे, डॉटेड लाइन स्ट्राइकिंग सर्कल के पास, बहुत बढ़िया टैकल डिफेंस लाइन की तमिलनाडु की, एक्सीलेंट डिफेंसिव ड्यूटी अदा करते हुए बढ़िया तरीके से। हॉकी इंडिया के सभी पदाधिकारी भी बधाई के पात्र हैं जो हॉकी इंडिया के इस शानदार इवेंट में, सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह जी, साथ ही साथ अगर बात करें दिलीप तिर्की सर, शिखर जो मनोहरन सर और पूरे एसोसिएशन के पदाधिकारी जो लगातार हॉकी के लिए अच्छा, उसकी बेहतरी के लिए, हॉकी के विकास के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। और देख सकते हैं इस बीच, और हमारी प्रोडक्शन टीम जो लगातार आप तक ये एक्शन पहुंचाते हुए फिलहाल स्ट्राइकिंग सर्कल के नज़दीक पहुंचने का प्रयास इस बीच, यहाँ पे बॉल को कंट्रोल किया नंबर 9 क्विक आकर के, यहाँ प्रयास आर रंजीत इस टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, कोशिश उनके द्वारा होती हुई। हरियाणा राइट फ्लैंक से आखिरी मिनट में हरियाणा की टीम लगभग बात करें इस समय जीत की दहलीज पर है, स्वादी खुशबू आ रही है जीत की। 5 मीटर डॉटेड लाइन स्ट्राइकिंग सर्कल के पास लगातार डिफेंस का ओवरलोड, बैक पास किया, इसी कारण अच्छी सोच अब दूसरे फ्लैंक से जाने की कोशिश हो सकती है, लेफ्ट फ्लैंक से अच्छी सोच देखिए आप, वही होता हुआ जर्सी नंबर 7 पुनीत साथी खिलाड़ी को पास किया खूबसूरती के साथ। यहाँ पे रणनीति इस समय देख सकते हैं, थोड़ा टाइम को भी किल कर सकते हैं क्योंकि लीड में है टीम पूरी तरीके से। और बहुत ही महत्वपूर्ण अगर देखें इस समय इस मुकाबले में, वक्त धीरे धीरे निकल रहा है, आखिरी कुछ सेकेंड, स्लैप शॉट तेज सर्रार, लेकिन स्ट्राइकिंग सर्कल से अंदर से नहीं। आखिरी 6 सेकेंड, 5, धीरे धीरे वक्त निकल रहा है। तमिलनाडु का ये पहला मुकाबला है, हरियाणा भी अपना फर्स्ट मैच खेल रहे हैं। उत्तर की आवाज इस बात के संकेत है, यह मुकाबला अपने नाम किया है। इस बीच हरियाणा ने, कप्तान का अद्भुत प्रदर्शन है, कप्तान अंकुर रोर, खेमा इनका बहुत संतुष्ट देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी निराशा तमिलनाडु के गोलकीपर की, लेकिन निराश नहीं होना है, अभी पहला मैच है, अभी आने वाले मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक हार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छी टीम है तमिलनाडु भी, गुड टीम, आगे आने वाले मैचों में अच्छा प्लान करेगी। और यह मुकाबला अपने नाम किया है, शानदार तरीके से जीत अर्जित किया। ये नजर डालते हैं रिप्ले पे, शुरुआत से ही लगातार अटैकिंग हॉकी खेली इस टीम ने, गजब का परफॉर्मेंस। और अंकुर रोर का क्या बेहतरीन गोल माउथ क्लोज आकर के फिनिश देखने लायक। अगेन अंकुर रोर बहुत ही जबरदस्त खेलते रहे, जहां आप निगाहें रखिएगा गोल पोस्ट के आसपास अंकुर रोर नजर आएंगे, उनकी खतरनाक खेल की शैली और जबरदस्त खेल दिखाया उन्होंने। जीतने में अहम किरदार अदा की कप्तान ने, क्या अद्भुत गोल था फिनिशिंग का देखने लायक। ये मुकाबला हरियाणा की टीम ने अपने नाम किया है 3-0 से। कमेंट्री बॉक्स में विकास कुमार, मेरे साथ ही इंग्लिश के बेहतरीन कमेंटेटर मयूर बरुआ, हमारे सीनियर कमेंटेटर शमीम आलम जी, अरबाज खान, पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। कल हम वापस जुड़ेंगे सुबह 6 बजे से। लाइव एक्शन लेकर जुड़ना ना भूलें हॉकी इंडिया मीडिया चैनल पे। और बहुत थैंक्स आप सभी का, बहुत बहुत आभार। सीना चौड़ा किया है तूने अपनी मेहनत कौशल से, रण विजयी होना है तुमको निश्चय और मनोबल से। युगों युगों तक आगे